So let me ask all of you, how many of you are here BNI members? You can just raise your hand. Okay, so we have many hands coming up. So जब यहाँ पे BNI members इकट्ठा हुए हैं, friends, do we know what is BNI clap? Yes, no? आवाज नहीं आ रही है दोस्तों. Still I cannot hear the voice. Amazing. So I guess बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो members जुड़े हैं वो new members जुड़े हैं. Let me officially start the day. My name is Dhara Shah. I'm the Senior Director Consultant with BNI Greater Surat, and I warmly welcome all of you to Surat Biz Fest 2020 with a huge round of applause. So friends, जब हम BNI की बात करते हैं तो BNI की क्लैप्स इतनी छोटी सी क्लैप्स नहीं होती है. BNI की क्लैप्स हम 3 राउंड में करते हैं. आप में से कितने लोग ये 3 राउंड को जानते हैं, पहचानते हैं? कुछ हैंड्स आ रहे हैं, कुछ हैंड्स नहीं आ रहे. सो हमारे बहुत सारे न्यू मेंबर्स एंड जो गेस्ट हमें ज्वाइन किए. लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस व्हाट इज BNI क्लैप, एंड उसी से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे. सो फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ आपको नंबर 1 दिखाऊंगी, हम क्लैप करना शुरू करते हैं बिकॉज कहते हैं कि क्लैप से की हुई शुरुआत दिन की बहुत अच्छी जाती है. सो विल स्टार्ट विथ नॉर्मल क्लैप्स. जब मैं आपको नंबर 2 शोकेस करूंगी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी एनर्जी और आपकी क्लैप आपकी नेबर्स से फास्ट होनी चाहिए. आपके नेबर्स से आपकी तालियों की आवाज थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए. क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है दोस्तों. यस और नो? एंड नंबर 3, लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू, आप में से कितने लोग वंस अपॉन अ टाइम यू वर अ किड इन योर लाइफ? कौन कौन बच्चे थे? पक्का? कुछ हाथ नहीं आ रहे, शायद हम बड़े हो गए डायरेक्ट. यस. सो फ्रेंड्स, एट नंबर 3 लेट अस ब्रिंग दैट किड बैक इनटू अस. हम वो बचपन की यादों को ताजा करते हैं, वो बचपना हम मिलाते हैं. एंड लेट्स scream to the loudest extent and welcome all of us. So are we ready to do that? So let us begin. Number 1, तालियों की आवाज आनी चाहिए, आ नहीं रही है, अभी भी कम आ रही है. Yes, the people outside the hall should be able to listen. Number 2, faster and louder than your neighbor. आजू बाजू में देखिए. जिग्नेश भाई, आपकी क्लैप बिना कोई से ज्यादा फास्ट होनी चाहिए. Yes. And let's go for number 3. Woo! Amazing, great. Thank you so much. So let me invite now our host for the amazing 2 days, Mr. Neerav and Mr. Palak, to hand over and continue the session. Over to you, Neerav and Palak. Good morning, BNI. Welcome all. It is so good to see a house full of people on a Saturday at 11 o'clock. हम BNI members को तो आदत ही होती है early morning meetings के लिए आने के लिए. But since we have a lot of visitors also here, I would cordially thank each and every one of you to be present. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता.
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे managed to get this opportunity, this big opportunity to host the event? पलक, सिंपल है। आप क्या करते हैं? पैसे उगाते हैं। मैं क्या करता हूं? सब कुछ ऑटोमेटिक करता हूं। तो हमारी टीम ने सोचा होगा इन दोनों को रखेंगे तो पैसा और बिजनेस 20 फेस में अपने आप आता जाएगा। कुछ ज्यादा ही डीप थॉट था नीरव। बीएनआई में सब कुछ डीप ही होता है पलक। So now moving on to the next agenda. As per tradition, lamp lightening is always considered as the best blessing by the God. आत्मदीप भवः मतलब be your own light. एक छोटी सी ज्योत भी हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना वो समझा जाती है। Let me now invite all the dignitaries to please come on the stage and start with the light lamping. I'll request ED Sir Gaurav Singhvi, Dr. Nidhi Singhvi, Chairman of the event, Mr. Atul Gupta, and also we have a guest speaker here, Mr. Jeetu Savlani. Could you please join us on stage? BNI Surat Biz Fest is happening after a long gap of 2 years due to COVID, as we all know. And Biz Fest हमेशा से members का favorite cross chapter and cross region event रहा है। क्यों? क्योंकि BNI सूरत ने हमेशा से conclave में कुछ नया, कुछ अलग किया है। And Biz Fest 2022 is also no longer an exception. Success stories, collaborations, lifelong learning, and unlimited networking, and many more. Hence, I invite our Executive Director, CA Gaurav Singhvi, to formally welcome and share his thoughts about BizFest 2022. Thank you, I Gaurav request sir. everyone with a round of applause. Thank you. Oh, thank you. So, good morning everyone. So, आप लोगों को लगा होगा कि क्यों लाइट लैंप नहीं हुआ. So, friends, अपने चीफ गेस्ट जो हैं हर्ष संघवी साहब, वो जस्ट आने वाले हैं. 11 o'clock वहाँ पहुँचेंगे. तो वी थॉट कि इट विल बी गुड दैट ये लाइट लैंप जो है वो हर्ष संघवी जी के थ्रू ही हो. तो दैट इज अवर थॉट. You know, I'm so delighted, so happy to welcome all of you in this 5th edition of BNI सूरत कॉन्क्लेव, जिसका हमने नाम अभी सूरत बिज फेस्ट कर दिया है. बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि ये शहर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये आने वाले समय के अंदर 2030 के अंदर भारत की व्यावसायिक राजधानी हो जाएगी. बार बार इस बात को मैं विभिन्न स्तरों पे कहता हूं और हर जगह पे इस बात को रखता हूं कि यदि आप जाके देखेंगे 100 किलोमीटर सूरत के अहमदाबाद की तरफ और 100 किलोमीटर बॉम्बे की तरफ, तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा क्लस्टर होगा जहां पे 200-250 किलोमीटर में इस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. इस लेवल का चाहे दहेज की हम बात कर लें, चाहे हम हजीरा की बात कर लें, या हम वापी दमन सिलवासा की बात कर लें, या सरेगांव की बात कर लें, या इधर भरूच अंकलेश्वर की बात कर लें, या सूरत खुद की बात कर लें जहां पे कि टेक्सटाइल या तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो अनबिलीवेबल है. अनबिलीवेबल पॉसिबिलिटीज हैं. और फ्रेंड्स, हमने इस पूरी चीज को पिछले 2 सालों में देखा है. 2020 में दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई. लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस बार एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे लोगों का व्यापार देखता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ में काम करता हूं, तो इस साल सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, रेवेन्यू बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ. सूरत के बेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स के साथ में मैं डील करता हूं, बेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ में मैं काम करता हूं. मुझे नहीं लगा, मेरे को यदि मैंने 100 लोगों से बात की होगी तो 100 आउट ऑफ 100 पीपल सेड ये हमारी जिंदगी का 21-22 सबसे बेहतरीन साल गया है. ये है पावर ऑफ सूरत की.
ये है मुझे नहीं मालूम दूसरे शहरों का, मुझे आइडिया नहीं है दूसरे शहरों में क्या हुआ, लेकिन सूरत की बात करूं तो सूरत में जिस लेवल का कमबैक आया है, हर बार जिस तरह से रिजिलियंस हम शो करते हैं, जिस तरह से मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक के बाद में जो सबसे बड़ी वर्चू या सबसे बड़ी चीज निकल के आई है वो आई है आपकी रेजिलियंस एबिलिटी। क्या है आपकी रेजिलियंस एबिलिटी? और मुझे लगता है सूरती से ज्यादा, एक सूरत के एंटरप्रेन्योर से ज्यादा, आपसे ज्यादा इसकी रेजिलियंस किसी के पास में नहीं हो सकती फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है आने वाला समय 2030 हम हिंदुस्तान की व्यावसायिक राजधानी के रूप में, कमर्शियल कैपिटल के रूप में, फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में सूरत को देखेंगे, क्योंकि समय चेंज हो गया है। अब सब कुछ डिजिटल होता है, मार्केट जैसा कुछ नहीं होता है, आप कहीं भी बैठिए, कहीं से भी कहीं का काम होता है। सो दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द टाइम। और पिछले 5 सालों में बीएनआई सूरत ने क्या किया? सूरत अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख बिजनेस सिटी था। यदि मैं कहूं पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से सूरत का दबदबा, चाहे टेक्सटाइल की बात कर लें, चाहे डायमंड की बात कर लें, सबसे ज्यादा रहा है। और अब तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं, केमिकल इंडस्ट्री की हम बात करें या और भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो सूरत में वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो कि मैं लगता है मुझे कि 5 सालों में बीएनआई के कारण हुआ है, वो है सूरत एक प्रोफेशनल सिटी हो गया। सूरत एक प्रोफेशनल सिटी हो गया। द क्रेडिट गोज टू बीएनआई, द क्रेडिट गोज टू बीएनआई, क्रेडिट गोज टू ईच वन ऑफ यू। पहले का व्यापार करने का तरीका, हम उतना ही बढ़िया व्यापार पहले भी कर रहे थे। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं शहर को। हमने अभी एक आभार बुक बनाई, आप सब लोग देखेंगे उसको, तो आप, हमने शहर के सारे बड़े गणमान्य लोगों को ये धन्यवाद कहा है कि इस शहर को आपने जिस तरह से बनाया है, क्योंकि आपके होने के कारण यह शहर है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो एसएमसी कमिश्नर हो, चाहे वो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हो, चाहे वो सब्जी भाई ढोलकिया हो, चाहे वो गोविंद भाई ढोलकिया हो, चाहे वो शहर के और भी बड़े नामचीन लोग हों, उन सबके होने से यह शहर है। तो हमने आभार व्यक्त किया है अपनी तरफ से, क्योंकि 5 लाख लोगों को बीएनआई सूरत इंपैक्ट करता है। हम लोग 1800 मेंबर हैं, और यदि मान के चलूं कि आपके हर आदमी के पास में भी 50 लोगों का भी स्टाफ है, यू कैन अंडरस्टैंड। 5 डिपेंडेबल पीपल दे हैव, 5 लाख पीपल को, सूरत के करीबन ऑलमोस्ट 50-55 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों को डायरेक्टली बीएनआई सूरत इंपैक्ट करता है। तो यदि हम उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको ये सामर्थ्य दिया किसने, ये सामर्थ्य दिया किसने? इस शहर के लोगों ने। तो हमने उसके लिए वो बुक बनवाई है फ्रेंड्स। और पिछले 5 सालों के अंदर यदि आप जाके देखेंगे अपने आसपास, मेरे साथ में बहुत सारे मित्र हैं, जिग्नेश यहां पे है, अतुल भाई हैं, मीनाक्षी जी हैं, पिंकेश हैं, और सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे हमारे साथ में मित्र हैं, क्षितिज भाई हैं, बहुत सारे हमारे साथ मित्र हैं। यदि वो 4 साल या 5 साल में अपने जाके लाइफ में देखेंगे, मैं ये प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड्स, दे विल फाइंड दैट देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बीएनआई, देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बीएनआई। आई डोंट नो, किसी की जिंदगी में हो सकता है 100% का कंट्रीब्यूशन हो, किसी की जिंदगी में 10% का कंट्रीब्यूशन हो, बट देयर इज अ कंट्रीब्यूशन। If you will go in 3 to 4 years back, you will always find that there is a contribution in the life of in the life of the businessman. So I think that is outstanding. One more thing I wanted to share, friends, ये इवेंट क्यों कर रहे हैं हम, क्यों बीएनआई कॉन्क्लेव करते हैं? बीएनआई 113 शहरों के अंदर है हिंदुस्तान के, और वहां पे नहीं होता है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता, और हमारे बाद में प्रेरणा लेके बहुत सारे लोगों ने चालू किया। क्यों करते हैं हम ये? मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई उत्सव नहीं हो सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए क्या सेलिब्रेशन का तरीका, मतलब हम अपने समाज के साथ में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए क्या तरीका सेलिब्रेट करने का, क्या तरीका अपने आप को ये कहने का कि वी आर वन कम्युनिटी, 1800 पीपल, 1800 फोर्स, ये कहने का क्या तरीका? ये कॉन्क्लेव तरीका, ये एक फिज फेस्ट तरीका। इसीलिए हमने इसका नाम भी डेडिकेट कर दिया सूरत बिज फेस्ट। आने वाले समय के अंदर ये सूरत का सिग्नेचर इवेंट होने वाला है, और सूरत की पूरी कम्युनिटी का, नॉट ओनली फॉर द बीएनआई मेंबर्स, बट सूरत की सारी कम्युनिटी का सिग्नेचर इवेंट होने वाला है, जहां पे कि आने वाला आदमी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए वेट करेगा। कल जो हमारा इवेंट होने वाला है स्टार्टअप का, कभी किसी ने सोचा नहीं कि शार्क टैंक इवेंट भी सूरत में होगा। फ्रेंड्स, आज तक जो स्पीकर आए हैं, मैं यदि उनके नाम आपके साथ में पढ़ूं तो आप जानेंगे कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स हमने आज तक बुलाए हैं। डॉक्टर उज्जवल पटनी, जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमारे साथ में आए हैं और हमारे को उन्होंने अपनी बात से उद्बोधित किया है। भावेश भाटिया, जो कि आपने देखा होगा कि देयर इज ए पर्सन हु कम्स फ्रॉम द सनराइज कैंडल, उन्होंने क्या जबरदस्त अपनी शेयरिंग की थी, एवरीबडी वाज मिसमराइज्ड बाय हिज शेयरिंग। मिस्टर ओपी चौधरी, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं रायपुर के अंदर, रायपुर के कलेक्टर हैं, उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया रायपुर का, क्योंकि बस्तर और वो पूरा इलाका इस तरह से अनकंफर्टेबल होता है, बिल्कुल नक्सली उस प्रभाव के कारण। वहां पे मिस्टर ओपी चौधरी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। फ्रेंचाइज इंडिया के ओनर हैं गौरव मारिया जी, वो यहां पे थे।
सोनू शर्मा जी, जो कि डायनामिक ग्रुप के, आजकल तो सोनू शर्मा जी का वीडियो हर दूसरा आदमी देखता है, तो सोनू शर्मा जी हमारे साथ में थे और उनका एक वीडियो जो सबसे ज्यादा प्रमोट हुआ है वो BNI सूरत का वीडियो है। जो उनका सबसे ज्यादा आप देखेंगे YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो उनका वीडियो है वो हमारे स्टेज पे यहां पे बोला हुआ वीडियो है। इस लेवल का इंपैक्ट है फ्रेंड्स। राधिका मुखर्जी, शी इज अ फाउंडर ऑफ ए हैपेडेमिक, वो यहां पे आई हैं। डॉक्टर परिमल मर्चेंट, जो कि SP जैन ग्लोबल स्कूल के डीन हैं और डायरेक्टर हैं, वो यहां पे आए हैं। विजय शाह, जो कि दुबई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं BNI के और कॉर्पोरेट कनेक्शन के पूरे GCC रीजन के नेशनल डायरेक्टर हैं, वो यहां पे आए हैं। मिस्टर BS नागेश, यदि आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हो तो ट्रांस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि वो फाउंडर हैं। हर्ष भाई संघवी आज भी वो आएंगे, उन्होंने हर बार हमको ब्लेस किया है। CR पाटिल साहब सटनली उन्होंने हर बार हमारे को ब्लेस किया है। आज उनको डांग जाना पड़ा इसलिए वो नहीं है हमारे साथ में, नहीं तो जरूर हमारे साथ में होते। तो फ्रेंड्स, ये सारे लोग आए, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार का जो सेशन है वो भी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे। जिस तरह के 5 अगले 2 दिन जिस तरह के स्पीकर्स को आप सुनने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं और वो अलग अलग प्रतिभाओं के साथ में आ रहे हैं। हमने इस बात को सोचा कि किस तरह से डाइवर्सिटी क्रिएट की जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम केवल रोज यही सीखें कि माल कैसे बेचा जाएगा, क्योंकि वो तो हमें मालूम है, शायद हम बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, लेकिन और हमारी लाइफ के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फोटोग्राफी, जीतू जी हमारे साथ में हैं यहाँ पे। आज वो आपको ये बताने वाले हैं कि हाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर परफॉर्म्स एंड व्हाट आर दोज न्यूएंसेस। क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इनसे समझने वाले हैं आज। देयर इज गोइंग टू बी मिस्टर मनोज लेखी जी को हमने पहले भी सुना है। फ्रेंड्स, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को, बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना। हम सब लोग रोज भागते रहते हैं, बिजनेस की हापा दापी रोज चल रही है, लेकिन क्या हम अलाइनमेंट कर रहे हैं? द कंप्लीट लाइफ इज ओनली व्हेन योर बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी इज इंटरकनेक्टेड। दोनों चीजें इंटरजंक्शन के ऊपर है। तो वहां पे मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा काम मनोज लेखी जी करते हैं। कल शाम को हम उनको 1.5 घंटे तक सुनने वाले हैं। उनसे हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को और आप अपने स्पिरिचुअलिटी को अलाइन कर सकते हो। सागर अमलानी जी, सब लोगों को मालूम है कि आज की तारीख में लिंक्डइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं लिंक्डइन के। ही इज गोइंग टू बी टॉकिंग टू अस, ही विल बी शेयरिंग हिज जर्नी विद अस। मिस्टर मेहता, मैंने आप लोगों को कल भी जिस चैप्टर्स में मैं गया था, ब्रिगेडियर मेहता अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज आर्मी करती है, हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड क्या करती है कि जो वो इतनी डिसिप्लिन, इतनी पावरफुल आर्मी है और कभी भी हमारे यहां पे कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट हुआ। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा पड़ोसी देश इस चीज से गुजर रहा है कि शायद 5वीं बार वहां पे सेना कब्जा कर लेगी और इमरान खान जी हट जाएंगे। तो उस तरह के एनवायरमेंट में हिंदुस्तान में कभी हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या करती है सेना, क्या ऐसे छोटे छोटे नुएंसेस है, क्या डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके बारे में बात करेंगे। अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह के लोगों के साथ में जो लोग यहां पे आने वाले हैं वो है संजय मेहता जी। आप यदि गूगल करेंगे तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट 5 एंजल इन्वेस्टर्स में संजय मेहता का नाम आता है, 100x VC का नाम आता है। कल वो यहां पे होने वाले हैं, कल वो अपनी मास्टर क्लास लेने वाले हैं। उसके बाद में मेरा उनके साथ में फायरसाइड चैट है। उसके बाद में हम उनके साथ में शार्क टैंक करने वाले हैं, जिसमें हमारे कई सारे मित्र अंकुर जैन, जिग्नेश माधवानी, गौरव जुनेजा और भी कई मित्र वहां पे बैठने वाले हैं। और वो ये द्रव्य ढोलकिया, सब्जी भाई ढोलकिया के सन, वो सब वहां बैठने वाले हैं और वो रियल मनी वहां पे कल इन्वेस्ट करने वाले हैं इन स्टार्टअप्स के अंदर। इस लेवल का हमने होमवर्क किया। मैं डॉक्टर अग्रवाल को नहीं भूल सकता हूं, डब्बा वाला, जो कि आज शाम को आने वाले हैं। वो हमारे को हिंदुस्तान में बहुत सारे, आप लोगों के बहुत सारे रिलेटिव बॉम्बे रहते होंगे, आपको मालूम है कि कम से कम 1 लाख से 2 लाख टिफिन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक भी टिफिन ऐसा नहीं होता, लंच बॉक्स ऐसा नहीं होता है कि वो गलत आदमी को पहुंच जाए। क्या प्रोसेशन है वो, क्या वो माइक्रो डिटेलिंग है जो अपने बिजनेस में करते हैं। हम क्या सीख सकते हैं उनसे, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। सो दिस इज देयर फ्रेंड्स। एक ही चीज कहूंगा, अगले 2 दिन खूब सारे फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। प्लीज अश्योर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। BNI इज ऑल अबाउट मीटिंग पीपल, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। सो एक ही चीज कहूंगा, connect, collaborate and celebrate. The 2 days mantra for this event is connect, collaborate and celebrate. All the 3 things let's do for next 2 days, today and tomorrow, and make this event a grand event. Thank you. Thanks a lot, friends. Wow, a speech full of energy. Thank you, Gaurav ji, for sharing your thoughts on how BizFest is going to change the way we do business. And yes,
we are sure there are going to be many more success stories after this BizFest. So Nirav, BizFest 2022 अभी कहाँ हो रहा है? सूरत में. Surat, yes. Surat, the fastest growing city of India. The city which is known for its bridges, textile, diamond and what not. सूरत, जहां मर्सिडीज वाला भी लोचा खमन की लाइन में लगे. Where you get to listen to the struggle of stories of a chai wala at 2 a.m. जहां अनजान आदमी को भी अपना माना जाता है. जहां टेक्सटाइल या डायमंड की भीड़ में भी आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है. जहां हर आदमी अपनी मौज में रहता है. Where there are literally more bridges than traffic signals. जहां फ्लड में भी लोग भजिया खाने जाते हैं. So वैसे ही सूरत को BNI के इकोसिस्टम ने कैसे चेंज किया है, I would request our executive director Nidhi Singhvi to take on further. But before that, I'd like to take 2 minutes to introduce her further. Still, she needs no introduction, but I would still like to take that opportunity. Dr. Nidhi Singhvi. She has done her doctorate in management. She's an avid reader and assistant professor in the university for 15 years. Coming from a family of engineers, she was a gold medalist in chemistry honors and did her MBA in HR, but has never thought of doing business. Although she used to look after the HR activities of the financial supermarket, which is a very leading advisory firm here in Surat, she's also an editor of FinMart Today, a business magazine. She was very passionate to explore something new, and hence she started a new journey, a journey from a professor to an entrepreneur in the year 2016. She is now the executive director of the world's fastest growing region, that is BNI Surat. Yes, friends, we are the world's fastest growing region in BNI, which has grown to 1,650 members in the last only 5 years of span. She is also a very eminent speaker at various national and international forums. Dr. Nidhi Singhvi is also recognized as a lady who balances her work and professional life very well. She is married to Dr. CA Gaurav Singhvi and is blessed with 2 very lovely sons. Please give it up for Dr. Nidhi Singhvi. Thank you so much, Palak, for this wonderful introduction. Good morning, BNI. And a warm welcome to all our dignitaries and the visitors who are present early in this morning. Friends, I am going to share something very, which I feel proud of, a journey of BNI over these 5 years. BNI, as we all know, it's Business Network International. It's a business platform, a networking platform, a platform where people meet like-minded people. It's an organization, a community which is growing every single day, a community where people come and do business and grow their business, a community full of opportunities, a community with a vision larger than life. So let's witness the journey of BNI Surat over these 5 years, how BNI is instrumental in changing the ecosystem of BNI, of Surat city. This could have been possible. Can you please check? Just check with the slides, yeah. So it's not just business which has come in our mind. Certainly when we started our journey 5 years back, BNI, as we all know, is a networking platform. So definitely business was the first aspect. But over these years, we have seen it has grown larger than life. And let's see what business, and apart from business, what beyond, what are the expectations as an entrepreneur, and what are the expectations as a city from BNI. This is possible by creating a vision. क्या विजन लेकर हम चले 5 साल पहले, विजन जो कि उस वक्त शायद इम्पॉसिबल लगता होगा सुनने में, बट आज नहीं लगता आफ्टर दीज 5 years. The vision of BNI Surat is to change the business ecosystem of Surat city. Yes, Dhara? Or you can handle from there also, it's absolutely fine, yeah.
So our vision is to change the business ecosystem of Surat city and to be a financial capital of India by the end of 2030. सुनने में बड़ा विजन लगता है, right friends? Yes? To become a financial capital of India. This is not a small thing. But ये विजन लेकर हम चले 5 साल पहले जब BNI सूरत में स्टार्ट हुआ. एंड कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? आज लगता है कि पॉसिबल हो सकता है बिकॉज आवर मिशन इज टू बी अ कम्युनिटी ऑफ 2,500 स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हु आर इम्पैक्टिंग 5 लाख लाइव्स एनुअली बाय द एंड ऑफ 2023. हर एक बिजनेस पर्सन, एज गौरव जी जस्ट शेयर, बिकॉज इफ वी आर, if we have a people, a community, a person, or, if we are having a sales staff or an employees or a partner of 50 people and they are in turn supporting 5 another people. So indirectly or directly, 2,500 members are going to impact 5 lakhs lives annually. So this is, I guess, a larger vision, a vision larger than life. कैसे शुरुआत हुई 5 साल पहले BNI की सूरत में? We just started with a small group of people with just 48 members. 48 members के साथ ये कम्युनिटी शुरू हुई जो आज लगभग 1700 बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पर पहुंच चुकी है. 1700 members, friends. It's a family of 1700 strong business entrepreneurs because we believe we are right now also impacting more than 3 lakh lives. ये जर्नी जब शुरू हुई तो फ्रेंड्स एक विजन साथ में था बिकॉज अकेले कैसे संभव होता, अकेले नहीं संभव हो पाता था. वी नीडेड हैंड्स. और ये हैंड्स कहां से आए? ओके, बिकॉज इफ द कम्युनिटी इज ग्रोइंग फास्टर एज यू हैव सीन, just wanted to share the journey over these 5 years. The journey from 48 members in 2016, it reaches to 772 members in 2017. And in just 1 year, we were the world's fastest growing region. Friends, world's fastest growing region because in just 1 year, we were a community of more than 750 plus members. In 2018, it went to 1,112 members. 2019, we were 14,064 members. And 2020, we were 1,559 members. As you have seen, every year we have grown. और जैसा हम सब जानते हैं, business में growth होनी चाहिए. That's why we call it as an organization. That's why we call it as a community. And still we are growing every single day. Right now, we are having more than 1,700 business entrepreneurs, referral partners with us who are every single day who are just seeing कि कैसे हम एक दूसरे का business grow करें, कैसे हम एक दूसरे की lives को और ज़्यादा impact करें. Right, so this community which has grown to 1,700 members, it just started with 48 members 5 years before. So right now we have 23 chapters, 1,700 plus members. 4.51 referrals were passed in last 5 years, 4.51 million referrals and 4,660 crores of closed business. फ्रेंड्स, कैसे होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सीलेंस पर कैसे पहुंचती है? बिकॉज वी बिलीव इन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन. दैट्स वन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ BNI. हर चीज को अगर हम रिपीटेडली कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस के साथ करते हैं, इट टर्न्स इनटू एन एक्सीलेंस and that becomes an habit. It's not an action anymore. So we are what we repeatedly do, the same thing with such precision जो हमने day 1 से शुरुआत करी, just traditions की still we are following. And one of the tradition is right now you are witnessing BNI Business Conclave. We started in the year 2017, okay, till 2020, and today itself this is the 6th time we are hosting a Business Biz Fest. Can you please help him? It's not working, that's why. Yeah. So BNI Business Conclave, a signature event of BNI. We believe, as mentioned, connections, collaborations and celebration. So in 2017, it happened
And you can see how many attendees were there. There were 1,500 plus attendees in 2018, 2,700, 2019, 4,000 attendees, 2020, 7,000 attendees. Apart from that, jo chote chote actions I'm telling, it's not just कि we meet every time. Certainly, business city starting से it's a conventional business city, but mindset shift करने में समय लगा, friends, because early morning meetings was not an easy task for each one of us. Okay, and that too for business. But then members started realizing that if you want to do great business, you have to meet early in the mornings, and that small task lead into a big actions. And apart from the business conclaves, one-to-one meetings, we found that if we want to build relationships, if we want to build a strong relationships, families ko bhi equally saath mein aana chahiye, and that happened due to various such initiatives like BLI Olympics, because building deeper relationships through sporting events eventually transforms into an enormous business opportunities. We realized that, and because of that, we are now close to 5,000 plus crores business in just 5 years of BNI Greater Surat. As mentioned, tradition plus innovation, apart from doing the things regularly which we do in every single meeting, new initiatives which BNI Greater Surat has brought, BNI Win, because it's not about equality between male and females, it's about creating opportunities for the female entrepreneurs. And one such platform, one such initiative is BNI Win. Kya hai Win? Win hai Women in Business and Networking. हमने पाया कि females are very great, multitaskers, they are great networkers. But somehow, if agar us networking में एक mentoring element भी add कर दिया जाए, they can do wonders in their businesses. And this WIN platform, the vision is to foster women entrepreneurs' growth, to make them winning entrepreneurial leaders who can impact the dynamic business world. And that's how right now, we have over greater than 15% of women entrepreneurs in BNI Greater Surat out of the total 1,700 plus members. Another such initiative is BNI Tech Sim. Okay, because कई सारा व्यापार सूरत के बाहर होता है, इंडिया के बाहर होता है, and Surat being a textile city, lot of textile is being imported outside India as well. So this is a platform to create local and international business opportunities through focused networking and business matching activities. And this is also growing wonderfully because members, Surat ke members, yahan se kabhi outside in India, like kabhi China mein meeting karte hain, kabhi USA ke koi country, city se meeting kar rahe hote hain. And during this pandemic, during these online meetings in 2.5 years, now each and every member understands the importance of online networking. और इस ऑनलाइन नेटवर्किंग को एक्सप्लोर करके मेंबर्स, कई सारे मेंबर्स ने अपना बिजनेस स्केलेबल बनाया है और यहाँ से सूरत के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज इन दीज लास्ट 2 इयर्स जो मेंबर्स ने निकाली है टू नेटवर्क विथ आउटसाइड सिटी बिजनेस पर्सन, that's immense, that's commendable. And that's the kind of opportunity even the TechSim members are having. They are doing a lot of business, they are dealing a lot of collaborations outside Surat. So we believe that it's not बहुत बड़े-बड़े actions लेने से change नहीं आता है. We can have just, if a lot of hands are with us, the change can happen. And in the form of lot of hands, जैसा कि, because single-handedly हम शायद इतना नहीं कर पाते. This is possible because of our strong DNA team. What is DNA? D is for our director, consultants and ambassadors team. Because the biggest way to impact any organization is to focus on leadership development. ये platform है business entrepreneurs का, but the most important is how many leaders we are able to create within this community. And we are very proud to have our director consultants and ambassadors within this room. We have more than 594 Crorepati givers. Can we have a huge round of applause? And if anyone from the Crorepati club is here, if you are in the club of Crorepati, can you please stand?
Yes, can we have a huge, huge round of applause for all the Crorepati givers? Keep standing. We have more than 70 plus directors and ambassadors. I request all the directors and ambassadors to please stand. We have more than 170 Gold Club members. Gold Club members are the members, those who have trusted the platform and has brought their friends, their colleagues also in BNI, because they have believed that if we want to impact anyone's life, this is the right platform. So a huge, huge gratitude to our Gold Club members. We have 9 senior director consultants. Yes, to all the senior director consultants, if you are in the room, you may stand. And we have 2 assistant area directors. Yes. Yes, Mrs. Meenakshi Bhatnagar and Mr. Ashwak Kalkatawala. Thank you so much to all of you, because you are being instrumental in impacting 3 lakh lives currently, and our vision is to impact 5 lakh lives going forward. Positive attitude and recognition, another core values of BNI. As I mentioned, कि single-handedly कोई भी organization शायद उतना powerful impact नहीं create कर सकता. This is possible because of our strong DNA team, of our strong givers, जो कि इस room में मौजूद हैं. And because of that, BNI Greater Surat has backed lot of awards. बहुत सारे awards and recognitions आए हैं. We are the world's fastest region. We were the world's #1 region in 2017-18 and 2019-20. Okay? Even the world's largest chapter. There are 2 chapters currently, BNI Alchemist and BNI Elite, also from Surat. We have 3 chapters, more than 150 plus, and we have the world's highest average chapter size of 76.2. That all because of each and every single member. That contribution हर 1700 members को जाता है, because आज हम जहां पर खड़े हैं because of our members. So these are few of the achievements जो 5 years की journey depict करता है, which is possible only because of the 1700 members and our strong DNA and the Givers Club. Lifelong learning, हम believe करते हैं कि जो भी we already do business, entrepreneurs हम सब हैं, पर time to time updation is very important. और ये updation, that's trainings and knowledge series is one of the core pillars जहां पर हम सीखते हैं कि कहां और किस समय किस नई skills की requirement है, even if you are doing any business. Recognition, not just at the world level, we continuously recognize our members for their efforts, for their givers. Not only that, BNI सबके लिए, because relationship is one thing which we strongly believe to build over these 5 years. So we recognize even the kids, okay, the children of our BNI members, because हम सबको मालूम है कि children हमारी भविष्य की धरोहर है. So these are such events which we keep doing for the members, for children, because at the end of the day, it's not about what you have or even what you have accomplished. It's about who you have lifted. And for the betterment of the society, it's about what you have given back. So it's not just about the business. Ultimately, circle of life complete कैसे होगा? Circle of life complete होगा what you have given back to the community. And such services we continuously have done over these 5 years, like blood donation drive, where more than 200 people, members of a BNI, has contributed blood. We have done tree plantation, where we have planted more than 3,000 plants in the city. We have donated plasma during COVID times. We have distributed various COVID relief, packets during these 2 years. So these are certain community service which we have done in over past year. Apart from that, because it's not just the business, it's beyond that. It's beyond that, because business becomes a byproduct after certain years. After that, what matters is how you can impact a life. और यही एक initiative, एक शुरुआत है BNI Greater Surat Cares, where we have
raise funds for the members who require medical support. So इस तरीके के funds भी we have raised for the members, जहां पर members, दूसरे members ही सामने आए हैं to help and support their co-members. Okay, so BNI cares every single, and this we have witnessed over these past 2.5 years, continuously and consistently. So after that, not only that, the circle of life gets complete. Started with business, certainly. Business se shuruaat hui, lekin end. After all these events, the community, the Olympics, the, of course, conclaves, the one-to-ones, it ended with complete full circle of life, that is giving back to the society, giving back to the community. And if we see, these are the perfect core values of BNI. Okay, starting with givers gain as a prime philosophy, then building relationships, traditions plus innovations, recognitions, certainly, and accountability and positive attitude. So just wanted to show a short video of 5 years journey. Chapter meeting, Afsar Aasman Ka. Business conclave, Vyapar Vishw Bhar Ka. BNI Junoon, Utsav Ummeedon Ka, a night full of recognition and awards, a night full of hope. BNI social work, Prabhav Prernaon Ka. BNI Olympics, Parivar BNI Ka. And this is what we are because you are with us. Thank you so much, BNI Greater Surat family, because what we have done, what we have achieved over this past year, we are able to change the ecosystem of BNI Greater Surat just because of you all. Thank you so much. Thank you, Nidhi ji. Thank you for telling us how BNI has impacted the lives of all the members and all the lives around it. How BNI has impacted the lives of everyone, even during a low period like COVID. So now it is time to talk about the 7 core values of BNI. I would like all the members to please give me a shout out. So which is your favorite core value? Can I have the members speak up, please? Thoda zor se. Yes. So give it up for Givers Gain, everyone. Shout out, please. Givers Gain. Itna dheela response. Givers Gain. That is the core principle on which BNI works. हम कैसे बोलते हैं चैप्टर में? Givers, givers. What goes around? Thank you. Now let's hear it for building relationships. Woo. Please. Positive attitude. थोड़ा जोर Raise से. your hand जिसका favorite है positive attitude. Accountability. Okay, और क्या बाकी है? It is lifelong learning, tradition and innovation, and recognition. So now everyone, it is now time that we inaugurate our event with the lighting of the lamp. May I please call upon the stage all the dignitaries that we have. I would cordially invite our chief guest, Shri Harsh Sanghvi ji, to come and inaugurate the event with the lighting of the lamp along with our executive director, CA Gaurav Singhvi ji, Dr. Nidhi Singhvi ji, and the chairman of the event, Atul Gupta ji. And I'd also like to ask Jeetu Savlani ji to join us on stage.
Everyone give a huge round of applause for BizFest 2022. Thank you for your presence today, Shri Harsh Sanghviji. We are all so obliged to have you here. The man who has done so much for the city of Surat, the man who needs no introduction, I would still like to take an opportunity to call upon Senior Director Dhara Shah, who is also the co-chairman of Surat Biz Fest, to introduce him further. Shri Harsh Sanghviji. Thank you very much. So friends, how's the Josh? A leader is one who sees the unseen. A leader is one who hears the unheard. And a leader is one who sees that everywhere there can be flowers if the right seeds are given up. So friends, let's welcome the youth icon of not only the Surat city, not only the Gujarat state, but the entire our nation, India, with a huge round of applause. Can we have a round of applause for the youth icon Shri Harsh Sanghvi ji? कहते हैं एक लीडर वो होता है जो बचपन से ही उनकी चीजें दिखना शुरू हो जाती है. So he is the one. When he was young, at the age of 15, he entered into the politics as a social worker. जब वो युवा मोर्चा के साथ थे तो उन्होंने दूर दूर तक अंडर प्रिविलेज्ड एंड अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें में जाके he has served the people. In 2012, he won the election by record-breaking margin and was the 4th highest winner of the Gujarat Assembly. So friends, this is something which is unbelievable. Let's have a huge round of applause. 27 साल की उम्र में, yes friends, only at the age of 27, he became the youngest MLA. And one of his act was providing full financial aid for the heart operation. Shri Harsh Sanghvi ji is a stark contrast to all other politicians, giving voice to marginalized people and using his power to empower the youth to drive the wheels of change in the society. Over the years, उन्होंने बहुत सारे different programs launch किए हैं for differently abled by distributing friendly mobile phones and also being part of the Youth Entrepreneurship Summit in 2015. As a youth himself, Shri Harsh Sanghvi ji is the compassionate, and हम सब जानते हैं दोस्तों, he is always easily accessible by the citizens whenever any one of us need it. So with this huge round of applause and a standing ovation, can we quickly stand at our place and welcome the Home Minister of Gujarat and the Chief Guest, Shri Harsh Sanghvi ji. I invite the event chairman, Mr. Atul Gupta, as well as our Executive Director, Shri Gaurav Singhvi, to come on the stage and felicitate our guest of honor. दोस्तों, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, because इनको आज हमें सुनने का मौका मिल रहा है, इनसे दो चीज जानने का मौका मिल रहा है. It's a rare opportunity. Let the claps continue.
would now humbly request sir to please give your words of wisdom. The people of Surat, our BNI members, are waiting for you. બધા મજામાં? થાકેલા ચહેરાઓ લાગે છે. પાછળવાળા બધા મજામાં? BNI Biz Fest એમ તો હું ઘણા વર્ષોથી આ પ્રોગ્રામમાં આવતો હોઉં છું અને અનેકવાર મારે આમાં બેસેલા અડધા ઉપરના લોકો એવા હશે કે જેને હું નામથી ઓળખતો હોઈશ. સુરત શહેરના અહીં ઉપસ્થિત સૌ યુથ બિઝનેસમેન એમ હું BNI માટે અલગ અલગ પ્રોગ્રામમાં દર વખતે એમ કહેતો હોઉં છું કે દુનિયાનો સૌથી મોટું જોઈન્ટ ફેમિલી અગર કોઈ હોય ને તો એ BNI છે. એક પ્રોગ્રામમાં મને કોઈએ પૂછ્યું કે એવું કેમ, તો મેં એમને કહ્યું કે ઇન્ડિયન કલ્ચર અગર આપ જોશો અને એની હિસ્ટ્રીમાં અગર બરાબર તમે લોકો જશો તો આપણું કલ્ચર રહ્યું છે કે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં બધા એક સાથે મળીને કામ કરતા હોય, ભલે બધા અલગ અલગ ફિલ્ડમાં કામ કરતા હોય પણ ઓવરઓલ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક સાથે હોય અને મોટી ફેમિલી હોય, અનેક લોકો એમાં હોય. અને આજનું જોઈન્ટ ફેમિલી એટલે BNI એટલા માટે હું એને કહેતો હોઉં છું કે કદાચ એક ફેમિલીમાં 5-7 ભાઈઓ હોય અને એક ભાઈ બીજા ભાઈને બિઝનેસ અપાવવા માટે કદાચ એટલો સિરિયસ નહીં હોય જેટલું BNIમાં સવારે ઉઠે એટલે બીજાને બિઝનેસ ક્યાંથી લાવીને આપવો એ શોધતા હોય. શરૂઆતમાં અનેક લોકો આની મજાક ઉડાવતા હતા, પરંતુ મેં હંમેશા જોયું છે કે સક્સેસ થવાનું હોય કે તમને એક નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આ પ્રકારની મજાક તો આપણી ઉડશે જ. પરંતુ આજે BNI એ પોતાનું એક અલગ ઊંચાઈ બનાવી લીધી છે. એ માટે ગૌરવ સિંઘી અને BNIના આખું સુરત ચેપ્ટર્સના તમામ લોકોને હું અભિનંદન આપું છું. આજે મારે આવતો તો ત્યારે મને કોઈએ કીધું કે તમારે ન્યૂ ઇન્ડિયા માટે બોલવાનું છે. ન્યૂ ઇન્ડિયાનું એક્ઝામ્પલ શું હોઈ શકે? ન્યૂ ઇન્ડિયાનું એક્ઝામ્પલ સર્વપ્રથમ અગર તમે જોશો તો તમે લોકો જે BNIમાં કરો છો એ જ ન્યૂ ઇન્ડિયાનું સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરતા એઝ એન ટીમ આપણે જે પરફોર્મન્સ કરીએ તો એનું રિઝલ્ટ 100% બેટર હોય છે અને રિઝલ્ટ એક ટીમવર્કમાં હંમેશા પોઝિટિવ આવતું હોય છે. હું અલગ અલગ ચેપ્ટર્સના અનેક મારા ફ્રેન્ડ્સ કોઈક ને કોઈક ચેપ્ટરમાં હોય તો દરેક વખતે બધાનું સાંભળતો હોઉં છું કોણ કેટલાનું બિઝનેસ લાવે, કોણ કેટલાનું બિઝનેસ કરે. અને હું તો આજે એક વિનંતી કરવા આવ્યો છું તમને કે તમે લોકોએ સુરતના અલગ અલગ ચેપ્ટર્સે છેલ્લા 5 વર્ષમાં એકબીજાનો બિઝનેસ કેટલો ગ્રોથ કર્યો છે. અને આમાં અનેક લોકો એવા બી હશે કે જે સામાન્ય બિઝનેસમાંથી આજે એક નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી હશે. એક સારા કોલેજની ટીમ બનાવીને જે છોકરાઓ સારું રિસર્ચ કરતા હોય એ લોકો પાસે તમારે રિસર્ચ કરાવીને એક એક લોકોની લાઈફની અંદર શું ચેન્જીસ BNIમાં એઝ એન ટીમ તરીકે કામ કરવામાં આવ્યા તો 5 વર્ષમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા એ કોમર્શિયલ વે પર નહીં. ગૌરવભાઈને પાછું કેવું પડે કોમર્શિયલ વે પર નહીં લઈ જતા એમ, પરંતુ કોઈની લાઈફમાં એક નવું ચેન્જીસ લાવી શકે. એ ભાભી હસ રહે તો
કોઈની લાઈફમાં એક નવો ચેન્જીસ લાવી શકે તેના માટે અમુક રિસર્ચ આપણે સોસાયટીને એક નવી દિશા બતાવે એના માટે બી કરવા જોઈએ. અને મને એવું લાગે છે કે બીએનઆઈમાં મારા ધ્યાનમાં બી એવા અનેક લોકો છે કે જેની લાઈફમાં મોટો ચેન્જીસ આવ્યો છે. આપણે સૌ સુરતના લોકો છે. બધા સુરતના જ છો ને? સુરતના લોકોનો અવાજ જ ના આવે ક્યારે. સુરતના જ છો બધા? સુરતમાં આપણે ઘણા બધા નવા ચેન્જીસ લાવીએ છીએ. એક પછી એક સુરતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે સૌ લોકો જોઈ શકીએ છીએ. સુરત ડુમ્મસ રોડ હોય કે જીડી ગોઈંકા રોડ હોય કે પછી પાલ રોડ હોય, આ તમામ રોડ્સ કદાચ આપને સૌને એક સુરતી તરીકે પ્રાઉડ ફીલ થાય તે પ્રકારની કામગીરી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. એરપોર્ટ રોડ કેવો લાગ્યો તમને? એરપોર્ટ રોડ કેવો લાગ્યો તમને? ખરેખર પાર્લે પોઈન્ટ થી સરગમ જતા એક બ્રિજ આવે છે, એ અંડરબ્રિજ કેવો લાગ્યો? ત્યાં 2 કમ્પ્લેન મારી છે હવે કે બ્રિજની નીચે જે આ જગ્યા એ અનયુઝડ પડી રહેલી, એને સુરતના સિટીઝન્સ માટે અમે લોકોએ વ્યવસ્થા ઊભી કરી. પણ બહુ દુઃખ જોડે કહેવું પડે છે કે આટલી સારી વ્યવસ્થા હોવા છતાં આપણા સુરતના લોકોએ એનું શું કર્યું? હું 15-20 દિવસ પછી ગાંધીનગરથી પાછો સુરત આવ્યો અને મેં જોયું ત્યારે મને ખરેખર બહુ દુઃખ થયું કે તમે અનેક લોકો આમાંથી સોશિયલ મીડિયામાં કોઈએ મૂક્યો હશે ફોટો, કોઈ છત્રી ઊંધી કરી ગયા તો કોઈ કચરો નાખી ગયા, પણ તમે ત્યારે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને બ્લેમ કર્યો. તો મને એમ કહો કે આટલી સારી ફેસિલિટી ડેવલપ કર્યા પછી અગર આપણા સિટીના સિટીઝન્સ ત્યાં કચરો નાખી જાય, ખાવાનું નાખી જાય અને એનો ગેરઉપયોગ કરે તો એમાં બી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને કેમ બ્લેમ? તમે બધા બદલાઈ ગયા પણ તમારું થોટ પ્રોસેસ હજી નથી બદલાયું. આપણે એઝ એન ટીમ કામ કરીને આવા સિટીઝન્સને આપણે સાચી દિશાએ લઈ જવા પડશે, કારણ કે આ તો હજી શરૂઆત છે. હવે તો તમે પાર્લે પોઈન્ટથી ડુમ્મસ રોડ પર જશો તો તમારું નેગેટિવ થોટ્સથી તમે પોઝિટિવ થોટ્સ તરફ બદલાવો એના માટે અમે લોકો પેઇન્ટિંગ્સ કરાવીએ છીએ. એ વોલ પેઇન્ટિંગ્સ જોઈ બધાએ? કેવું લાગ્યું? પણ કોઈએ એવું કહ્યું નહીં. કોઈએ પોતાના ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સેલ્ફીઝ દરરોજ મૂકશો, પણ સિટીનો એક ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ એ પેઇન્ટિંગ કરીને આપણા સિટીની બ્યુટિફિકેશન આખી બદલી નાખે તો આપણે ક્યારે એને એપ્રિશિએટ નહીં કરીએ. મારું એવું માનવું છે કે આપણે એને એપ્રિશિએટ કરવા જોઈએ. આપણે પોલિટિકલ લોકોને નહીં કરતા, વાંધો નથી. જીડી ગોઈંકા રોડ પર એક વોકવે બને છે. એ વોકવે અમે એક સપના જોડે બનાવેલું હતું. એ વોકવેની જ્યારે ડિઝાઇન મૂકેલી ત્યારે મારા અનેક ન્યૂઝના મિત્રો અહીંયા છે, એ લોકોએ મારી ઉપર ઘણા બધા આરોપ લગાડેલા કે અનવોન્ટેડ વેસ્ટેડ મની, આ કોસ્ટિંગ ના કરવું જોઈએ, આ ખર્ચો ના કરવો જોઈએ, આ કેના માટે આ ખર્ચો થાય છે. આપણે ફંડ સ્માર્ટ સિટીમાંથી ફંડ લાવેલા હતા અને એ રોડ આજે સુરતનો એક સિમ્બોલિક રોડ બનવા જઈ રહ્યો છે. વચ્ચેનું મેન્ટેનન્સ ખરાબ થઈ ગયેલું, અમે પાછું હમણાં 1-8 મહિના પહેલાથી જ એનું મેન્ટેનન્સ સારું કરાવ્યું છે અને હવે હંમેશા તમને બહુ ક્લીન રોડ મળશે. મારું એવું માનવું છે કે ન્યૂ ઇન્ડિયા જોડે જોડે સુરત બી નવું બને છે. સુરતનું એક ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ છે. હું સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટ્રીમાં જેવી જવાબદારી લીધી અને અમે લોકોએ નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસી લાવી. નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસી લાવી તો મેં કહ્યું, કોઈને પૂછ્યું કે આ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ કેટલા વખતથી બન્યું છે, શું છે પરિસ્થિતિ, મેન્ટેનન્સ કેટલું છે. પછી મેં એક જણને એક સવાલ પૂછ્યો. મેં કીધું કે આ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં સ્પોર્ટ્સની પ્રેક્ટિસ કે ટુર્નામેન્ટ તો મેં કોઈ દિવસ જોયું જ નહીં. અહીંયા ગરબા રમાય, BNI જેવા ફંક્શન્સ થાય, બીજા બધા ફંક્શન્સ થાય, પણ લોકો
અહીંયા સ્પોર્ટ્સ યુટિલિટીઝ માટેની શું વ્યવસ્થા? આપણે સુરતની અંદર ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું હાઈ પરફોર્મિંગ સેન્ટર 210 કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને સુરતમાં ઇન્ડિયાનું વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટીઝ આપણે ડેવલપ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં માત્ર સ્પોર્ટ્સનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં હશે, પરંતુ એ વ્યવસ્થામાં અમે લોકોએ મેઇન જે અમારું ફોકસ રાખ્યું છે એ કેપિટલ કોસ્ટિંગ જોડે જોડે એનું રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, સાયન્ટિફિકલી લેબ અને ટ્રેનિંગ. એ ટ્રેનિંગ 10 વર્ષ માટે આપી શકીએ આપણે ઇન્ટરનેશનલ લેવલની, એ પ્રકારની ફિક્સ ડિપોઝિટ જોડે અમે નવી પોલિસીની અંદર સુરતની અંદર આ કામ કરવા જઈ રહ્યા છે. હમણાં ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યું છે. તમારામાંથી કેટલા લોકોને ખબર છે? તમારામાંથી કેટલા લોકોના બચ્ચાઓ એમાં પાર્ટ લઈ રહ્યા છે? બસ. આ ખેલ મહાકુંભમાં તમારા બચ્ચાઓ પાર્ટ જરૂરથી રહી રહ્યા હશો, પણ તમે ક્યારેય એ ટ્રાય નહીં કરી હશે કે આ કેના માટે થાય છે. નાની મોટી ભૂલ થતી હશે, હું ના નથી પાડતો કે 100% ઓકે જ થતું હશે, પરંતુ જે ટેલેન્ટ છે, આપણે સુરતમાં રહીએ છીએ, આપણી પાસે ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ છે, પણ તમે વિચારો કે ડાંગ જેવા નાના નાના ગામોમાં જે ગામની વસ્તી માત્ર 150, 200, 250 લોકો હોય, એ વસ્તીમાં ત્યાં ના ગ્રાઉન્ડ હોય, ના બીજી કોઈ ફેસિલિટીઝ હોય, પણ ત્યાંના બી છોકરાઓમાં કોઈક એવી ટેલેન્ટ હોય કે જે ટેલેન્ટને ખરેખર આપણે સ્પોર્ટ્સમાં સારી રીતે ડેવલપ કરી શકતા હોઈએ. આ ટેલેન્ટ શોધવા માટેનું કામ એટલે ખેલ મહાકુંભ છે. તમને અંદાજો કરો કે મેક્સિમમ કેટલા લોકો આમાં પાર્ટ લેતા હશે? આ વખતે ગુજરાતમાં 56 લાખ પાર્ટિસિપન્ટ છે આમાં. સિનિયર સિટીઝન્સ થી લઈને નાના છોકરાઓ તમામ લોકો આમાં પાર્ટ લે છે. સિનિયર સિટીઝન્સનો અમે કેન્સલ કરી નાખેલો આ વખતે, કોવિડ જ્યારે ચાલુ થતું હતું એના માટે, પણ સિનિયર સિટીઝન્સની ખાસ રિક્વેસ્ટ આવીને પાછી શરૂઆત કરી. ખેલ મહાકુંભનો કન્સેપ્ટ આપણે સૌ લોકોએ સમજવો જોઈએ. ગુજરાતમાં એક નવી પોલિસી આવી જે તમારા સૌના કામની પોલિસી છે, એ આઈટી પોલિસી. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ આઈટી પોલિસી ખરેખર વાંચી છે? માત્ર 2 જ લોકો. આખા દેશમાં આઈટી માટેનું સૌથી સારું સિટી કયું? દુનિયામાં આઈટી માટેનું સૌથી સારું કન્ટ્રી કયું? યુએસ, ઇન્ડિયા. બરાબર છે. આમાંથી ગુજરાતના કેટલા લોકો બેઠા છે? થોડા લોકો જ છે એમ ને? હું એવું માનતો હતો કે બીએનઆઈમાં એટલે બધા જ લોકો બહુ એક્ટિવ અને ફૂલ્લી નોલેજ વાળા લોકો હશે, તમે બધા જ લોકો સોસાયટીને એક નવી દિશા આપો એવા લોકો હશો, એવું વિચારીને હું અહીંયા આવેલો હતો. કારણ કે તમે વિચારો કે તમે સવારથી સાંજ તક કેટલા બધા લોકોને મળતા હશો. તમને એ ખબર છે કે આ દેશમાં સૌથી સારું આઈટી માટેનું સિટી એટલે બેંગ્લોર છે. આઈટી માટે બેસ્ટ કન્ટ્રી તો એ ખ્યાલ છે કે યુએસ કાં તો ઇન્ડિયા છે. પણ કોઈને એ નથી ખબર કે ગુજરાતની નવી આઈટી પોલિસી શું નવો ચેન્જીસ આપણા રાજ્યની અંદર લાવી શકશે. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યો છું કે તમારું નવું સેશન જ્યારે હોય કે ચેપ્ટર્સ જ્યાં ચાલતા હોય ત્યાં આ આઈટી પોલિસીનું ડિસ્કશન, લેન્ધી ડિસ્કશન 100% કરવું જોઈએ. આઈટી પોલિસી એટલી બ્યુટીફુલ પોલિસી છે આપણી નવી, અને આ જે પોલિસીના હિસાબે જે ડિમાન્ડ અને જે અમારી કન્ટિન્યુઅસ ગવર્મેન્ટ જોડે જે આઈટી કંપનીઝની જે રિક્વેસ્ટ અને જે ઇન્ક્વાયરીઝ આવે છે,
ગુજરાતની અંદર આવનારા 5 વર્ષમાં નહીં તો 2 થી 3 લાખ લોકોને આ પોલિસીના હિસાબે આઈટીની અંદર નવી જોબ્સ મળશે. અહીંયા ભલે બીજી બધી ફિલ્ડના લોકો ના વાંચે વાંધો નથી, પણ જે એટલીસ્ટ આઈટી જોડે જોડાયેલા લોકો છે એને તો એની ડીપલી સ્ટડી કરવી જોઈએ, કારણ કે સુરત બી એનું એક ખૂબ મોટું સ્ટેક હોલ્ડર હશે. સુરતનું ડ્રીમ સિટી કદાચ બધાએ જોયું જ હશે. સુરતનું ડ્રીમ સિટી જે છે એનો કન્સેપ્ટ સમજવો બહુ જરૂરી છે. સુરતનું ડ્રીમ સિટી એને બીએનઆઈ, તમારા લોકોનું જે બીએનઆઈ નો જે બિઝનેસ મોડલ છે એ અને ડ્રીમ સિટી એનો બિઝનેસ મોડલ સમજવો એટલા માટે જરૂરી છે. ડ્રીમ સિટી પહેલું દુનિયાનું એવું સેન્ટર હશે કે જ્યાં મોર દેન 5000 મેમ્બર્સ, 5000 થી વધારે મેમ્બર્સ પહેલા બાઇંગ કર્યું, પહેલા શેરિંગ કર્યું, બધાએ એક કંપની બની, એક કંપનીએ ગવર્મેન્ટ પાસેથી લેન્ડ બનાવી લીધી અને એ લેન્ડ લઈને એ લોકોનું કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. દુનિયાની અંદર તમને કોઈ બી એવું એક્ઝામ્પલ નહીં મળે કે જ્યાં આટલા બધા સંખ્યાની અંદર લોકોએ પહેલા બાય કરી લીધી હોય જગ્યા અને એના પછી જગ્યા ખરીદાય છે અને એના પછી કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે અને એના પછી આ સક્સેસફુલ મોડલ દુનિયાનું સૌથી મોટું લાર્જેસ્ટ કોમર્શિયલ સેક્ટરનું લાર્જેસ્ટ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ એ સુરતનું ડ્રીમ સિટી બનવા જઈ રહ્યું છે. ડ્રીમ સિટીનું મોડલ બહુ સારું છે, એ બધાને ગમશે, પણ એ મોડલની પાછળ કયા પ્રકારે આ પ્લાન બન્યો, કયા પ્રકારે આ પ્લાન વિચારવામાં આવ્યો, એ જે લોકો બિઝનેસની અંદર છે એ લોકોએ આ વિચારવા જેવું છે અને આ કન્સેપ્ટ એકવાર માટે સ્ટડી કરવા જેવો છે. સુરતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો સાંજ પડી જાય. સુરતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમે લોકોએ વગર માંગીએ એટલું બધું આપતા જઈએ, કારણ કે લોકોને એટલે જ કદર નથી હવે. કારણ કે તમે લોકો વિચારો એના કરતાં સારું અમે લોકો આપવાનો પ્રયત્ન કરવા માંગીએ છીએ. સુરતમાં આપણે બીજા બી ઘણા બધા વિષયો પર કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલ હોય કે પછી હેલ્થ સેક્ટર, નવી ટેક્સટાઇલ પાર્કની વાત હોય કે પછી ડાયમંડના રિલેટેડ અનેક ઇશ્યુઝ હોય, આ બધામાં અમે લોકો કામગીરી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમારા હિસાબે આ હું પહેલી વાર કંઈ પૂછું છું અને હું તમારો રિવ્યુ એકદમ જેન્યુઅન માંગુ છું. આપણે ઘરેથી નીકળીએ અને ઓફિસ જતા હોઈએ ત્યાં રસ્તામાં જે ટ્રાફિક પોલીસ હોય છે, એ ટ્રાફિક પોલીસ લોકોને ઊભા રાખે, લાયસન્સ માંગે, હેલ્મેટ માટે પૂછે, એ કેટલું ડિસ્ટર્બન્સ હોય છે, કેટલું હોય છે. એને ફિઝિકલની બદલે આપણે 100% અગર ડિજિટલ કરી લઈએ તો કેવું રહે? અગર એ લોકો પાસેથી આપણે કોઈને ઊભું રાખવાની સત્તા જ લઈ લઈએ તો કેવું રહે? અમે એક રિસર્ચ કરાવી રહ્યા છે, એના પર એક સર્વે કરાવી રહ્યા છે અને એ બાબતે ટ્રાફિક પોલિસીઝ પર બી અમે લોકો ખૂબ મોટા પાયે કામગીરી કરી રહ્યા છે. ખૂબ ઝડપથી એનો નિકાલ બી આવશે. તમામ લોકોના મનમાં હંમેશા પોલીસ માટે એક જ ફિલિંગ હોય છે કે પોલીસ એટલે શું? તો પોલીસ એટલે આપણે લોકોને ડિસ્ટર્બ કરવા માટે, પોલીસ એટલે ટ્રાફિકની અંદર તમને હેરાન કરવા માટે, બિઝનેસની અંદર કંઈક તકલીફ ઊભી કરતા હોય. કોઈએ પોલીસના કામગીરી નજીકથી જોઈ હોય ને તો જ પોલીસ શું છે એ એમને ખબર પડે. નાના મોટા ઇશ્યુઝ સોસાયટીમાં થતા જ હોય છે. તમે ક્યારેક કલ્પના કરી છે કે તમે સૌ લોકો તમારી ફેમિલી જોડે
દિવાળી, હોલી, આ તમામ સેલિબ્રેશન કરતા હોવ છો. અને આ દિવાળીની બે કિસ્સા હું આપને કહેવા માંગુ છું, જેના કારણે તમને દરેક માણસ જે છે પોલીસમાં એ એક સરખા નથી હોતા, એ ખ્યાલ આવશે. ગુજરાત એ ડેમોગ્રાફિક અગર આપણે જોશો તો એ પાકિસ્તાન બોર્ડર, અફઘાનિસ્તાન બોર્ડર અને એક આપણું કોસ્ટલ જે એરિયા છે એ 1600 કિલોમીટરનો છે, જે મેક્સિમમ કોસ્ટલ એરિયા આપણો ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર જોડે જોડાયેલો છે. આ દિવાળીના 2-3 દિવસ પહેલા ગુજરાત એટીએસને એક મેસેજ મળે છે કે અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન વાયા ગુજરાતમાં ખૂબ મોટું એક ડ્રગ્સનું કાર્ટલ આવવાનું છે. ગુજરાત પોલીસની અમારી એટીએસની 16 લોકોની ટીમ પોતાના ફેમિલી જોડેથી અચાનક જતી રહે છે. દિવાળીનો તહેવાર હોય છે, દિવાળી છે, ચાલ ભાઈ જવા લે, કઈ નહીં, બીજી વાર જોઈ લેશો, એ પ્રકારનું વિચાર્યા વગર અમારી આખી ટીમ એમની ફેમિલી જોડે દિવાળીનું સેલિબ્રેશન છોડીને ગુજરાત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર દરિયાઈ જે આપણો પાર્ટ છે ત્યાં 3 દિવસ તક ઓપન બોટની અંદર રાહ જોઈ છે. રાત દિવસ એ જ બોટ પર એ લોકો ત્યાં જ રાહ જોઈ છે કે બોટ ક્યારે આવે અને એ બોટ પકડાય. એ બોટ તો એ લોકોએ પકડી જ, અને એ બોટ જે પકડી એમાં 152 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ હતું, એ બી એ લોકોએ પકડ્યું. તમે ખાલી કલ્પના કરો કે 152 કરોડનું ડ્રગ્સ કેટલા લોકોનું જીવન બરબાદ કરી શકે છે. હમણાં ઘણા લોકોને હું ગમતો નથી. એનું કારણ એ છે કે ડ્રગ્સની સામેની લડાઈ એ હું બહુ મજબૂતાઈથી લડી રહ્યો છું અને હજી વધારે મજબૂતાઈ રાખશું. સોસાયટી પાસે એક જ એક્સપેક્ટેશન છે કે નેક્સ્ટ જનરેશન આપણું સ્પોઇલ ના થાય. નાની મોટી અનેક લોકોએ ભૂલ કરી હશે, પણ ડ્રગ્સ એ સાચો રસ્તો નથી. તમારા બી ધ્યાનમાં ક્યારે બી કોઈ બી ફેમિલી મેમ્બર્સ, ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ બી એવું હોય, અમે કન્ઝ્યુમરને ડ્રગ્સમાં હેરાન નથી કરતા. અમે એને સાચા રસ્તા પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમે માત્ર ને માત્ર અમારું ટાર્ગેટ એ ડ્રગ્સ સેલર્સ છે. એટલે તમારા ધ્યાનમાં બી આવા કોઈ બી લોકો આવે તો તમે એની લાઈફ સુધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેજો. હમણાં અનેક લોકો રેપ પર ઘણી વાત કરતા હોય છે. રેપના અમુક કિસ્સા મેં ખૂબ નજીકથી જોયા છે. આપણે હંમેશા રેપ થાય એટલે પોલીસને બ્લેમ કરતા હોઈએ છીએ. આ પ્રકારની ઘટના એ સમાજ માટે કલંકરૂપ છે. ગુજરાત આજે આખી કન્ટ્રીમાં સૌથી સેફ સ્ટેટ તરીકે છે જ, પરંતુ ગમે તેટલું સેફ હોય તો બી એક બી ઘટના આપણા સિટી કે આપણા સ્ટેટમાં બને તો એ ક્યારેય ના પોસાય. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આપણે ખરેખર કોઝ ઓફ રેપ સમજીએ નહીં અને સીધો બ્લેમ દરેક વખતે માત્ર પોલીસ પર કરીએ. તમે મને એમ કહો કે કોઈ ફાધર એની નાની દીકરી પર આ પ્રકારે રેપ કરે એ સૌથી મોટો સોશિયલ ઇશ્યુ છે કે નથી? નથી ઇશ્યુ? એ સોશિયલ ઇશ્યુ જો બાપ પોતાની દીકરી પર કરે એનું સૌથી મોટું કોઈ કારણ હોય તો આ મોબાઈલ છે. એ માત્ર ને માત્ર દરેક વખતે પોલીસ સ્ટ્રિક છે કે નથી એનાથી નથી આ ઇશ્યુ. મોબાઈલમાં જે અવેલેબિલિટી છે અને એના કારણે જે સૌથી મોટું કારણ અમે લોકો એક સર્વે કરાવ્યું અને એ સર્વેમાં સૌથી મેક્સિમમ કારણ મોબાઈલ ને મોબાઈલ જ નીકળ્યો છે. એના સિવાયનું એક સર્વેમાં મેક્સિમમ જે આવી ઘટના બની હોય એ ઘટનાઓ કઈ રીતે બની તો મેક્સિમમમાં નેબર્સ, ક્લોઝ રિલેટિવ્સ અને નોન પર્સન્સ, આ 3 સૌથી વધારે રેપના કોઝની અંદર કારણ મળ્યા છે.
સોસાયટીની અંદર અને તમારા સૌ લોકોને આ એટલા માટે કહું છું કે જ્યાં આપણે સૌથી વધારે વિશ્વાસ રાખતા હોય ત્યાં બી નાની મોટી આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. એટલે સોસાયટીની અંદર આ વાત નીચે સુધી પહોંચાડવા માટે આપ સૌ લોકો બી મદદગાર રહેશો એવી મને આશા છે. બીજું તો હવે કંઈ વધારે કેવું નથી, પણ માત્ર આપને એટલું કહેવા માંગુ છું કે સુરત એક નવી દિશા પર જઈ રહ્યું છે, એક નવી ઊંચાઈ પર જઈ રહ્યું છે. આપણે લોકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલ હોય કે પછી બીજી બધી ફેસિલિટીઝ હોય, સોસાયટીને કંઈક સારું આપવા માટે અમે સૌ લોકો એક ટીમ તરીકે કામ કરીએ છીએ. અને તમારી સૌ પાસેથી બી એટલી અપેક્ષા છે કે આપણે ટીમ સુરત તરીકે સૌ લોકો સાથે મળીને આપણા સિટીનું વધારેમાં વધારે ગ્રોથ થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ. આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच श्री हर्ष संघवी जी, आज आके हमें इतना प्रभावित करने के लिए. बीएनआई ग्रेटर सूरत आपका खूब आभारी है. थैंक यू हमें ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स डाल रही है और आज एज सिटीजन्स हमें भी कितने एफर्ट्स डालने चाहिए. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इनॉग्रेट द बिज फेस्ट एग्जीबिशन. चले गए. Friends, once the Business Fest exhibition is open, I request all the members, visitors and guests to take the maximum benefits of this and have a great networking experience. We'll again meet in this same hall for masterclass on photography at 12:15. Till then you can enjoy the networking. Thank you.
Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping up, looking bootylicious and tingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of deep. Like what the kitty like. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. I see you're the finest thing in here. So hot, you don't need to win it. Touch the mic, it's good to bang in here.
The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. It's all around the world, just la 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 la. Silent night is gone, till it goes on and on, so deep inside of me. I don't understand it, I don't know what to do. Just can't explain to you, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. When our eyes connect tonight, I care for you near me. And when the rain starts pouring down, I care for you near me. When our eyes connect tonight, I care for you near me. And when the rain starts pouring down, I care for you near me. That's what I wanna do. Oh, oh, oh. That's what I wanna do. When our eyes connect tonight, I care for you near me. And when the rain starts pouring down, I care for you near me. When our eyes connect tonight, I care for you near me. And when the rain starts pouring down, I care for you near me. That's what I wanna do. Oh, oh, oh. That's what I wanna do.
dance tonight. I will burn for my love. Blown too close to the sun. Falling like it could rush. Now the damage is done. I have burned for my love.
to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels.
Good afternoon, friends. We are starting our masterclass in next few minutes. I request all the members who are in the exhibition area to come to the hall and join us for the masterclass on photography. Good afternoon, friends. We are starting the next session of masterclass on photography. I request all the members who are in exhibition area to come and join us for the masterclass. I request all the members, visitors and stall owners to come forward to the hall and enjoy the masterclass on photography.
Now, friends, I request everyone from the exhibitor area to come in the hall to enjoy the masterclass on photography. We are starting in next 2 minutes.
Friends, I request everyone to please settle down. We are starting this next session. So those who are standing in the hall, I request everyone to please take your seats. Request everyone, those standing in the back, please take your seats and settle down so that we can start the session. गुड आफ्टरनून एवरीवन. अभी हमारे साथ में जीतू जी आएंगे और ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू कोच अस, टीच अस अबाउट द नुएंसेस ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. सो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज, आई नो दैट इवेंट गॉट लिटिल डिलेड, बट मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी एग्जीबिशन एरिया में भी हैं, प्लीज डू कम हियर. वी हैव टू लिसन टू जीतू जी एंड अंडरस्टैंड ऑल दोज नुएंसेस. सो प्लीज डू कम हियर. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इधर आ जाएं. Welcome back to Surat Biz Fest 2022, an initiative of BNI Greater Surat, presented by Torin Wealth Management, powered by BCL Bharat Laboratory and V Founder Circle, in association with LiveGain, Pick a Book Surat and Fortunate Pens. Welcome to Masterclass. Moments can become memories. Moments can become memories only when it is perfectly captured by a good photographer. ऐसे ही आपकी हंसती खेलती स्माइलिंग पिक्चर्स को और कैसे निहारे, कैसे पर्दे के पीछे के सितारे हमें इतने सुंदर और ग्लैमरस रखते हैं, उसी के बारे में है हमारी मास्टर क्लास. सो let me please invite on stage Mr. Anup Jaju to further introduce our keynote speaker for the same. Our Senior Director Consultant, Mr. Anup Jaju. Good afternoon, everyone. So, I'm honored to introduce one of the amazing speakers we have, a self-proclaimed accidental photographer. Jeetu Savlani's career started with a flourish in 2000 with Miss India pageant, and the rest, they say, is history. There was no stopping this shutterbug. From beauty queens to Big B, from award shows to OTT platforms, and from magazines to social media, Jeetu Bhai's work is highly appreciated and recognized. In the span of his career, he has worked with best of various industries. Magazines like
Stardust and Filmfare, award shows like IFA and Femina, travel photography to exotic locations, celebrities like Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, Jacqueline Fernandez, and who not. Advertising brands like Amul, Whitehead Junior, Raymond's, and many music videos and short films. He has done it all. With his 22 years of experience and amazing journey, let's hear it from the man himself, Mr. Jeetu Savlani. Welcome you, sir. I request our senior DC, Mr. Manish Parekh, to welcome him with a token of love from Surat Biz. Thank you very much, Anup ji and Manish ji. Thank you very much. Yes. Jeetu ji, the stage is all yours. Hi, thank you for this honor. Thank you for having me here. I'd like that you've heard about me, these praises. It's really overwhelming. पर मैं चाहूँगा कि आपको मेरे काम से मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करूँ. तो एक छोटा सा AV मैंने बनाया है. प्लीज रिक्वेस्टिंग यू टू हैव अ लुक एट इट.
Thank you. Thank you. So, गौरव जी और अतुल जी मुझे कह रहे थे कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मुझे एक बात याद आ गई बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री से हूं तो फिल्मी डायलॉग ही मारता हूं मैं ज्यादा. शोले का एक बहुत बढ़िया डायलॉग था कि ठाकुर पूछता है कि मैंने तुम दोनों को बुला के इधर कोई गलती तो नहीं कर दी. धर्मबाजी बोलते हैं कि गलती तो एक कर दी, ये तिजोरी खोल के दिखा के मुझे. तो गीता जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड गौरव जी एंड अतुल जी, आपने ये मुझे तिजोरी खोल के दिखा दी. आप सोचिए कि अगर मैं इन सबको अपना काम दिखाने जाता तो मुझे कितने साल लग जाते इन सबको मिलने के लिए. आज गाड़ी भी आपने भेजी, इतना सम्मान भी दिया और होम मिनिस्टर के साथ एक और आप लोगों के साथ एक ही स्टेज पे मैं खड़ा रह के ये मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला है, ये नहीं मिलता मुझे. तो ये मेरा सिंधी दिमाग सर राइट नाउ. सो बिफोर पीपल थिंक दैट आई एम ओनली एन आर्टिस्ट, आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन. हमारे में कहा जाता है सिंधियों में, बिकॉज हमें ऑब्वियसली गुजरातीज एंड सिंधीज तो बोलते हैं ना, हमारे बोलते हैं अगर उंगली ऐसी है मतलब सिंधी मरा हुआ है, जिंदा होता तो ऐसा कर रहा होता. तो मैं ये करने आया हूं सर यहां पर. I wanted this session really because this is really wonderful coming over here, listening to people, listening to what you have done. Thankfully, I've been introduced to this city by Geeta Modi ji, and I love coming here. So I'm in fact doing a lot of work in this city. I have joined hands with with Chevy, her daughter's company called Production House, and they have gracefully accepted me to be a part of this wonderful house. So you will see a lot more of me in this city, and I love coming here because the generosity, the food, I somehow just love this city. There's so much to offer here and stuff. मैं कैमरा के पीछे ज़्यादा अच्छा हूँ, so you'll have to just go with me because I want to share. When I was asked to come here, I already gave you my reason. This is a great way to meet all of you all on this wonderful stage. So I want to share. I've wanted to segment this into 3 parts. I want to share my journey of how I got into shooting celebs. A lot of photographers come to me today, especially with आजकल के नए generation of social media. People think it's very easy. वो एक आध शूट करते हैं. मुझे टोटल 25 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए. 22 साल से मैं आई थिंक मैं चाहूँगा ये मानने के लिए कि 22 साल मेरे करियर को लगा. शुरुआत में तो एक वो टेस्ट रन था, तो टेस्ट रन चल रहा था. Being from obviously, like I said, every young person wants to, I think coming from a community like this, we were business-minded people. I wanted to, एक ही ख्वाब था कि जो भी करूं अपने खुद के बलबूते पे करूं. I think that is something, call it pride, ego. I didn't want to take help. So initially the journey started with how do I not take pocket money from my father. So I started working for my dad connected me to my chacha and said कि आप इनके साथ शुरू करो काम करना. We were dealing in electronics and a lot of custom notified goods in those days. I'm talking to you of almost like early 90s, yeah, 91, 92. So I started with electronics. I went and my chacha gave me my first pay. He gave me some 1500 rupees. So I said, चलो, उस ज़माने में college, I was still in college, pocket money के लिए बहुत अच्छा है. My father went and told him that, अरे, why are you paying him money? He's come to learn. और उन्होंने वो मेरे को next month से देना बंद कर दिया. तो I said, पूरा purpose ही मेरा आपने बिगाड़ दिया. मुझे आपसे पैसे लेने नहीं थे. But I think I spent 2 years. I realized that I think the knowledge I gained from there was a lot more. But I was not appreciative of what I was doing, obviously, because पैसे नहीं दे रहे थे ना, free में appreciation भी नहीं मिलता. My next step was there is I started working for somebody in real estate and finance. So I was brokering deals
I'm talking to you, I was at this point of time about 19, 20. I was brokering deals, I was making, it took a while to understand. पैसे आ रहे थे, पॉकेट मनी जो चाहिए था वो कभी एक डील 4 महीने में होगा, कभी 1 महीने में 2 हो जाएगा, 6 महीने में कुछ काम नहीं होगा. So I was on an average making decent money. Realized that it's not my cup of tea. So I wanted to move on from there. I went into film production. Started learning film production, started working on sets. I realized money is there, pocket money is happening, but I'm not happy. Somebody offered me to act, so I went and joined an acting school. Excelled in my class, signed up a film. खुद की शक्ल देखी मैंने, 3 रील शूट करके मैंने कहा ये तो मेरा करियर का खत्म होने वाला है, because I'm too young, not a time to start. And I said, I can't do this. Fortunately, फाइनेंसर ने भी शायद मेरा रील देखा होगा, उसने बोला ये पिक्चर नहीं बनने वाली भाई, तो वो पिक्चर ही बंद हो गई. So life had its way for me moving forward. Then, due to certain financial circumstances, difficulties in home, I had to start a business. So I started a leather business, which is running successfully even now. It's been 26, 27 years. 3 years down the line, मैंने सोचा कि यार ये 10 बजे दुकान खोलो और 8 बजे दुकान बंद करो, ये मेरी लाइफ तो नहीं है. बिकॉज पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो कमा रहा हूँ और घर भी घर चल रहा है अभी. खास करके when we were going through such a difficult time and we had no money to even run the house. Don't want to get into that story because that's a lesson learned and stuff. So decided क्या करें. I started this shop. It's a shop called Cobbler, the leather boutique. It's quite popular. मैंने सोचा यार किसको बेचे. My father said shoes रखते हैं. And every step of the way I've realized that you need to somewhere or the other tap your inner soul and say इसको चलाए कैसे यार. कुछ तो दिमाग आपको, आप दुकान खोल के दुकान नहीं चलती. तो my father said shoes रखते हैं, ये रखते हैं. तो मैंने बोला हाँ shoes रखते हैं लेकिन we'll keep only for the young people. तो बोला क्यों. मैंने बोला आप साल में कितने जूते लेते हो. बोला 2 जूते, एक लेते दिवाली पे और एक और. बोला मैं साल में 6 से 8 जूते खरीदता हूँ. तो I rather target to people who buy 8 shoes a year. And that obviously worked, and we've been 28, 29 years in the business, and my brother handles the business. Now how do I come out of that, because it was not giving me satisfaction. तो satisfaction के लिए मैंने बोला, मेरे भाई को मैंने पूछा. He didn't want to study any further. He said, I said, why don't you come and start making money for the house? And I got him. He's been running the show since then. I started working for a shipping firm because I like travel. Like मेरे गौरव जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरा पैशन है ट्रैवल. एंड उन्होंने मेरे को आज एक बहुत अच्छी, हिज ड्रीम, आई एम कॉपिंग इट सर, आई विल लर्न, नथिंग गोज अननोटिस्ड. इन्होंने कहा कि जिस दिन मैं 330 डेज में अगर ट्रैवल करूंगा और बाकी दिन पे 30 डेज काम करूंगा सॉरी, और बाकी दिन में ट्रैवल करूंगा, उस दिन मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा. सो यू हैव गिवन मी एन अदर गोल टू फॉलो सर. So I started working for a shipping firm. I was catamaran service traveling in 95, 96, traveling from Mumbai to Goa. I did that for a year, 2 years. Second year में हमारे मानसून में छुट्टी हमको मिलती थी, तो हमने कहा कि यार ये छुट्टी में किया क्या जाए, बिकॉज अभी सेटिस्फैक्शन आ गया था पर अभी पैसे नहीं थे इतने. Because at that time my salary in 95, I was making about 15,000 a month. I used to live one day in Goa, one day in Bombay. Life was great, and I was also helping my brother in the shop. I felt कि मेरे पास ये 24 घंटे भी थोड़े कम है, because that was the energy at that point of time. And I said कुछ तो किया जाए इससे ज़्यादा आगे. And वो 4 महीने जो मानसून में, because the ship used to be in dry dock when it used to not work, I said what do I do? I remember, because I had saved up a little money, like everybody has one hobby, I used to enjoy looking at people's pictures, photographs. तो कॉलेज में लोग स्पोर्ट्स स्टार खरीदते थे और हमारे, आई यूज्ड टू गो इन जय हिंद इन चर्च गेट. देयर यूज्ड टू बी अ सेकंड हैंड स्टॉल एट द गेट इटसेल्फ, जहाँ पर यू कुड पिक अप GQ, Vogue. I used to pick up all those magazines. For somehow I realized my fascination was going towards that. So I started picking up magazines, making collages, making posters for people. And I said, यार ये photography सीखते हैं, कुछ करते हैं.
So वो 4 महीने की छुट्टी में I went to a friend of mine who was actually became a friend because he was a customer at my shop. He used to buy shoes from us. A well-renowned photographer called Dabu Ratnani. I went to Dabu and I said, Dabu, I love your work. I truly loved his work. And I said, I want to come and assist you. Fortunate for me, I feel when the energy is right, the doors automatically open. Dabu at that time was doing very well. He did not have many assistants. He had one person working with him. So he said, I said, मैं 4 महीने की छुट्टी है, I can help you. I don't need to pay me, but I want to come and learn this. So he said, आजा. And when I went to him, I said, okay. I was enjoying it. I was coming home, absolutely excited, very charged up. I had to go back to my job because at a senior most, I was promoted in the first year in the company. जब आप, I personally feel जब आप वो काम करते हो जिसमें आपका दिल लगता है, success comes to you much faster, I feel. So 52 people in Damania shipping, only one with a little PR and personal, no corporate jobs, PR background, because I used to interact with people in all my other jobs. I'm the only one who got promoted in the company in the next 3 years that I was there. Unanimously by the management and the staff, they said nobody better than Jitu to lead us and stuff. I did 2 years, then I got into, I said, yaar, third year hai, मैं promote किया है, इतना मेरे को, I cannot leave this company right now. But those days, because the proposition didn't work for the company, तो वो हम जाते थे रात को यहाँ से, sail to Goa, reach in the morning. In 2 hours, the same crew that has gone 7 hours without sleep used to bring the ship back. Obviously, a lot of management we used to handle, put some people into sleep and allow them to sit on chairs, because as a rule, आपको allowed नहीं था वैसे. And I used to come back, come home, and then I used to tell Dabu, I want to come. I'm in Bombay now, I only travel 2 days a week, 5 days I'm here. So he said, come. So I enjoyed it so much that I quit my job, which at that point of time was giving me almost 20,000 rupees, which was decent for a teenager to make that kind of money. And I picked up the camera and I said I want to be a photographer. अब photography तो कर रहे थे, लेकिन पैसे नहीं थे कैमरा खरीदने के लिए. Fortunate enough, like I said, life opens its doors when you are knocking, when you are ready for it, when you put the right energy. One of Dabu's closest friends who took a liking to me, he says, I like how you work, and he became very friendly. He used to invite us over. He was a fashion designer. So he says, I like your vision, how you say कि ऐसा करो. I was very good at communicating with people. Because वो acting का तो भूत आपको बताया था, वो अंदर कहीं ना कहीं था थोड़ा ऐसा, मतलब सीखा जो था. तो मॉडल्स जो आते थे उनको मैं छुपके से, नॉट दैट माय बॉस वुड गेट ऑफेंडेड, मैं उनको जाके बताता था कि ऐसे पोस्ट करो, आप ऐसा लुक करो, अब ये क्यों नहीं करते, अब वो क्यों नहीं करते. तो ही यूज्ड टू वॉच दैट. ही सेइंग यू शुड स्टार्ट शूटिंग. आई सेड या बट आई डोंट हैव अ कैमरा. सो ही टुक मी होम. ही सेइंग देयर इज वन कैमरा लाइंग, व्हाई डोंट यू सी. उसके पास पूरा प्रोफेशनल किट पड़ा हुआ था, पूरा पुराना था, ऑटोमेटिक के जमाने में मैनुअल था. ही सेइंग why don't you start shooting with this? And with that camera, I have only shot one person for free, because as a photographer you need to do a lot of trial shoots, and that's the picture that you'll see coming up now. This is a shot of my brother, shot from that manual camera in my house balcony, and I looked at it and I said, okay, I can shoot. This is my first picture, first roll. I shot a roll of him. I made him my model. मैंने बोला बाल बड़े हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, थोड़ा कुछ डालते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, कुछ शूट करते हैं. And that was my beginning of my journey. So how do I promote myself now that I've done this? मैं ये तो कर चुका हूँ फोटो, because मैं आपको पोर्टफोलियोज आप समझते हैं, मेरा पोर्टफोलियो, मेरा काम ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ. So मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने मेरे शिपिंग में जब तक दोस्त बने थे, उसमें एक लड़का था, उसने बोला, मैंने सोचा तू सुना है तू आजकल फोटोग्राफी कर रहा है. आई सेड हाँ. आई वांट टू गो बैक इनटू मॉडलिंग, सो कैन यू शो मी व्हाट यू हैव डन. एंड आई सेड आई कैन ओनली शो यू दिस राइट नाउ. सो ही पेड मी, आई रिमेंबर 3,000 rupees he paid me to his shoot. I shot that, I showed that to some other people, and I shot some more pictures, started developing कि पिक्चर्स कलेक्ट करके जितना शूट करता था, तो
भर के फोटो रखता था कि लोगों को लगे कि बहुत काम किया है इसने. कई बार ऐसा होता था कि कोई लोग मिलके आए, बोला अच्छा काम तो अच्छा है, आते बताते आते ही नहीं थे. एक बार कोई बंदा आया, आई हैड डन ऑलमोस्ट 10-15 शूट्स बाय देन, एंड ही सेज व्हाट विल यू चार्ज. तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल था. आई सेड मैं आई चार्ज अबाउट 7,000 एंड आई ऑफर यू इन दिस इज व्हाट आई ऑफर. मैं आप, और इसमें मेरी कमाई होती थी, आई यूज्ड टू मेक अबाउट 2,500 रुपीज कमाता था. सब बात करके गया, आया नहीं दोबारा. 3 महीने के बाद फिर आया मेरे पास कि आई वॉन्टेड टू से नो टू हिम, एंड आई सेड बिकॉज ये बंदा, बिकॉज एक फ्रस्ट्रेशन था उस टाइम पे, एक एंगर था और एक गुस्सा ईगो भी था. 3 महीना पहले तू आया, 3 महीने से घूम रहा है, अभी तक तूने पोर्टफोलियो नहीं कर रहा है, तुझे एक्टर बनना है, आ बताता हूं तुझे. So he said, I want to shoot with you only. I've met a lot of people, but I've not met somebody who's that inspiring as you. I said, good for you, brother, but my rates have gone up. I charge 11,000 now. And he said, done. And I said, are you sure? I said, yeah, sure. I said, in advance. 50% advance दे गया. 50% advance के बाद मैंने बोला 11,000 तो इससे मैंने ले लिया, but true to my word, I said मैं दोबारा पीछे नहीं जा सकता. अभी मेरा रेट आज से 11,000 हो गया, तो मैं तो 11,000 ही लूंगा. And that is how I started. That is my first step, my journey for my work and stuff. And there was no looking back. Then I used to do a lot of portfolios. One such portfolio that you'll see next is of a very prominent actress today called Tamanna Bhatia. She does a lot of South films. She's done in Hindi films. This was shot in the beginning of my career. If you can go back to that page once, yeah. So I'm also trying to say that how in our industry there are certain things that you get learned by default. आप जो इफेक्ट देख रहे हैं पीछे, वो बेसिकली जो स्पॉट्स देख रहे हैं आप. मैं एक बार ऐसा खड़ा था, लाइटिंग कर रहा था, and I realized that a makeup and a hairdresser who was tending to her hair was using a water spray. And that what you see behind is, I told my assistant, I said, this is brilliant. ये तो कमाल है. अभी हम लोग के पास पैसे कहाँ थे, बैकग्राउंड गिने चुने 2-4 थे, बैकग्राउंड को अलग कैसे दिखाए. So we started using that water spray behind. So that effect that you see, which you will see maybe in another few pictures ahead, was done with the water spray. So I feel it's also got to be very watchful in our industry. You also, like yours, you got to be, you all survey the market. I survey my beauty. You can move on ahead. My next job, which I was very proud of, obviously there's a lot of work. This is done for some magazine, a fashion designer. People started picking up, makeup artists started seeing my work and started recommending me to other people. Pictures started coming in magazines and stuff. It was like a small, like कहीं पे आ गया, छप गया, नाम नहीं आता था उन टाइप पे. एक पिक्चर डिजाइनर के लिए शूट किया तो वो पिक्चर रिलीज हो गया वगैरह. So these are images from there. This is another shoot of this. This was shot actually at an art gallery. So I said, what better way to, that was a location. Life also sometimes has never been easy in terms of आपको क्या बोला जाता है और क्या दिया जाता है. But how do you improvise in that situation is what my profession has taught me. And I think I don't get afraid of anything that goes wrong. I have a solution to it, because Dabbu used to say one thing and I really took it in my heart, and he says photography is nothing but problem solving. तो अगर आप यही दोगे तो मेरे से शूट होगा, वो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं लाइफ का. कभी आप जो दोगे मैं उसमें क्या कर सकता हूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, और उसमें भी आई विल गिव यू माय बेस्ट. बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, how you do anything is how you do everything, and that is my formula for life. If I respect myself, I will respect my work, I will respect people I speak to. So that has been my one mantra that I live by today. Let's see what's next. This was a shoot again. So obviously I did a shoot where the girl whose portfolio I had done was a very big model at those days, Bhumika Chawla. Bhumika Chawla has also done music videos. She quit the business almost 15 years back. She used to tie Rakhi to this very prominent jeweler. They were her Rakhi brothers called Notandas Jewelers.
She said, I want, if you want, she was not charging them money. She said, if you want me to shoot for you, then you have to get my choice of photographer. And she said, I want you to shoot with Jeetu. Agency called me, and agency called and asked his brother-in-law, who was a model, another very prominent person called Asim Merchant. He's saying, yaar, the model is saying to shoot with one photographer called Jeetu. So the brother said, just find out if his full name is Jeetu Savlani, please go and shoot with him. So he said, yeah, it's Jeetu Savlani. He's saying, go with the shoot for sure. So I had created that kind of name. मेरे काम से मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे एक रिस्पेक्ट थी, ये पता था कि ये काम अगर इसको दिया है तो ये उभर के आने वाला है जरूर. So when he came to me, he saying, I wanted to, वो ज्वेलरी का शूट हो गया, उनकी एजेंसी का नाम था वेनाट एडवर्टाइजिंग. Mr. Javed Ghadiali, I remember. Javed said, I have to shoot for Rupkala sarees. And कुछ अलग करते हैं. तो I said, अलग करते तो चलो, अलग करते मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. It was my concept to him that I said, साड़ी तो आप हमेशा पहन के ही दिखाते हो ना. Why don't we show it in a different way where we just drape the sari on the body and shoot this. And let's do this in outdoor. So we went to Ladakh to shoot this. No recce, never been there. We just went with blind faith and I said, जाएंगे और करके आएंगे जरूर अच्छा. So these are my initial images from there. It was, again, what you see today, everything has a very, means a lot to me. मेरे लिए मतलब लाखों पिक्चर्स होंगे मुझे ढूंढ के निकाल के दिखाने में, पर मेरे सबसे, like this is the beginning, like we would say and stuff. 1999, I was, like I said, 97 I joined Dabu. ये 2-3 साल का आप काम देख रहे हैं जो चल रहा था. 1999 I met somebody. I think you meet people and what conversation you strike, how you take it forward, how people help you. And I think if you keep the energy alive, somebody may not help you directly, but it's a cycle. You know, the karma takes you and gets you work. Like I got the advertising job because of somebody who had heard of me. My first advertising job for Notanda Jeweler came. Client called me कि आपने shoot किया है पहले. I said नहीं. तो मैं झूठ नहीं बोलता. I don't need to lie about what I can do and what. कर सकते हो? I said हाँ, कर सकता हूँ जरूर. तो करके दिखाया और उसके थ्रू मुझे फिर then I worked with Venard Advertising for almost 8-10 years. 1999 I met someone at a party and he said, he called me. Femina Miss India used to also have another contest which last year was 1999 called Look of the Year. They wanted a picture of all the girls. Sorry, unfortunately I don't have, because those days they were all negative, so I don't have like a scan of all the pictures and stuff. It was not important, so I had never scanned it. And he said, मुझे एक पिक्चर चाहिए, आपका पिक्चर बॉम्बे टाइम्स के कवर पे आएगा. बॉम्बे टाइम्स पे कवर पे आना मतलब at that point of time was a huge thing. He said, we cannot pay you money for it, but we'll give you your bylines, and it's a help we not need because we are not happy with all these girls' pictures. And I want to give you a shot. So I said, sure. They loved it. 2000 millennium year, I was sulking. मैं एक पार्टी पे गया, मैंने बोला पूरी दुनिया बाहर जा रही है और मुझे मौका नहीं मिल रहा है. I said मुझे जाना है बाहर और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ इधर दोस्तों के साथ. पूरी everybody is going out of the country and for some reason I couldn't travel because of some commitments. And I got offered to shoot because of that 1999 6 महीने पहले जो मैंने free picture किया था. They said we are looking at a new photographer and we want to give you a shot. And they offered me to shoot what was my first step, which is how I look at it. कि उसके पहले तो मैं training कर रहा था. My first step to work, what took me to a next level, was shooting for the Femina Miss India Awards. Femina Miss India, when I shot the event, they gave me a trial shoot, which was on the, I remember the dates because it was a landmark year for me, 7th of Jan. I went, they gave me, said, come to shoot. They used to have a preliminary session first, finals होता था एक हफ्ते बाद. बोला आप हैदराबाद आओ, आप shoot करो. Airport पे जाके, somebody with a name tag for you, hotel for you personally. These are small things, but they mean a lot, you know. Suddenly it gives you some sense कि कुछ तो अच्छा कर रहा है भाई. जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है. Like I said, the goal was, money तो मैं बना रहा था,
पर वो खुशी नहीं आ रही थी तभी. अभी खुशी भी आ रही थी और पैसा भी आ रहा था और नाम भी हो रहा था. So I went into that session. I finished that shoot. They liked the pictures and they gave me my final show, which I shot on 14th of January in Hyderabad, in Pune. That year, they gave me to shoot. They loved the pictures so much. They said, we wanted to shoot. आप Filmfare Awards कीजिए, आप Maharashtra Times Award कीजिए, आप Filmfare South कीजिए. And then they offered me a job. Will you like to join the Times of India? Obviously, I did not want to because I was very happy being a freelancer. But they said, आप next 3 साल 4 साल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डेट पता करके आप आ जाइए. You are an official photographer for me. Shooting with Filmfare, because I was shooting the Filmfare Awards, is what got me to travel. Femina Miss India also made me travel a lot all over the globe. Because being the official photographer, उन्होंने कहा कि चलो कल से आपको ले जाते हैं. अभी 2000 में मैंने शुरू किया, जो साल में लारा, प्रियंका और दिया मिर्जा जीती थी. 2001 में सेलिना जेटली जीती. They started a new trip. They started a segment called Wow Travels. So we went our first trip with the Miss India girls to Wow, Switzerland, living in the finest of hotels. 2002, Neha Dhupia. So a picture that you see, if you can go back to, this is Neha's picture shot in Morocco at a travel. Again, these were all negatives at those days and stuff. So I have just one picture. The next picture you see is a picture shot in Cappadocia. These are the Miss India girls of 2010 actually. And this was a picture shot, it's an actual picture shot in Cappadocia where I was shooting with the Miss India girls again. It opened up something that I always wanted to do, which is why I took my first job. Shooting again, obviously, with Femina Miss India and shooting with Filmfare helped me a lot. उस ज़माने में मुझे याद है कि फेमिना में पिक्चर्स में भी जब हम करते थे तो पिक्चर्स में हमको हर पिक्चर देयर वाज अ असाइनमेंट फी देते थे और हर पिक्चर का पैसा आता था. जो पिक्चर मैगजीन में जो साइज का छपा उसके लिए आपको पैसे मिलते थे. Whether you are, if it's a smaller picture, आपको 200 rupees. If it's a full size page, it will give you 2000 rupees. So there used to be a great amount of check. End of the month, they used to calculate it and send it together. Filmfare gave me, because of shooting Filmfare Awards, it gave me a fantastic opportunity, is where I actually started shooting and meeting with the stars. I want to share a very nice story. Like I said, कि कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना ही है. और आप अगर डर जाओ आपके what life throws you, then you can never, like I said, it is also, जो मेरी जर्नी रही है, has taught me a lot of things and stuff about how to make the most of this situation. So I started shooting with, Filmfare gave me smaller artists to work with. They gave me Kader Khan, they gave me Om Puri Saab. मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, but they were not giving me the main stuff because उन्होंने मुझसे कम से कम काम करवाना शुरू कर दिया था. My first big star that I shot was Manoj Bajpayee. This is Manoj Bajpayee immediately after Satya, and the success was huge. हम चाहते थे कि कुछ अलग करें because लोग उसको भिकू मात्रे से ही देखना चाहते थे. तो I said, what is the best way is when you shoot a nice fashion picture with him. सूट आ गया, सूट के साथ शूज नहीं आए शूट के लिए. अब आप कैसे शूट करो, बिकॉज डिजाइनर ने कपड़े भेजे, सब भेजे, आप पिक्चर कैसे शूट करोगे. सो द बेस्ट थिंग आई टोल्ड हिम इज, मनोज भाई आप काम कीजिए. एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड टू कम ऑन कैमरा बिकॉज ही सेइंग यार मैं एक्टर हूँ, ये पोज वोज में से नहीं होता है. सेट मैं आपको कहाँ पोज करने को कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप एक्टिंग ही करो. सो आई मेड हिम सिट डाउन एंड टू कवर, to not show his shoes or whatever, I just put one light on his face and I said, हम करते हैं ना इसको cover तरीके से. So I just used one light and I shot this and I got the right expression. And I got so many people calling me for this picture, so many people loving it. Today, Manoj Bajpayee treats me as a brother because it was from this shoot that I developed a rapport with him, developed a relationship with him, जहाँ उनके साथ मैंने उनको as a photographer आप also director हो. जब हम इट्स लाइक किसी क्लाइंट के पास जाके, अगर क्लाइंट को सब आता है तो आपके पास आएगा क्यों एज अ प्रोफेशनल.
तो आई फील इट इज योर ड्यूटी, द ओनस इज ऑन यू कि आप उनको समझाओ. तो बिकॉज वो, अगर मैं ये सोचूं कि अरे आप एक्टर हो, आपको नहीं पता है क्या करना, तो फिर मजा क्या. इट वॉज बिकॉज आई एक्सेप्टेड इट एंड आई गेव हिम माई इनपुट एंड आई सेड साथ में करते, जो आपकी स्पेशलिटी है उसको यूज करते ना. कि मैं आपको पोज करने को नहीं कहूंगा, आप कैमरा में देखे भी नहीं, बट आप उसको अलग अंदाज से एक लेके आइए. एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पिक्चर. द नेक्स्ट पिक्चर यू सी is a director we all love, Sanjay Leela Bansali. These were my initial shoots. Sanjay Leela Bansali one day called me to his house. This is shot just outside his house. He says, मैं कैमरा में नहीं देखूंगा, you know, ऐसा है, just natural है. मैं इनके घर पहुंच गया, which is also very important for people who want to understand about celebrities. थोड़ा सा एक आपको रिस्पेक्ट जरूर देना है, बिकॉज वो जहाँ पहुंचे हैं कुछ करके ही पहुंचे हैं. तो आप आई लाइक टू बी 10 minutes अर्ली फॉर अ शूट. मैं इनके घर पहुंच गया हाफ एन आवर अर्ली, और मैंने सिक्योरिटी पे नीचे खाली अनाउंस कर दिया कि मैं आ गया हूँ शूट के लिए. मैं 15 मिनट रुका, 15 मिनट पहले मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ, खाली बता देना. ऊपर से जवाब आया कि आप जल्दी हो, आप 15 मिनट बाद ही आइए. मैंने कोई बात नहीं. मैं घर गया, हमने लाइटिंग वाइटिंग सब सेटअप कर दी, और he was taking a shower with lot of respect. The maid came and asked us if you, आप चाय पियोगे, कॉफी पियोगे. I think it speaks a lot of the kind of people that you go to if even the staff treats you like this. He came in 10 minutes fresh out of a shower. He looked at all the lights और ये कह रहे हैं कि अरे आप रेडी हो गए. तो मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ. तो बोला नहीं, बोलिए सर क्या है. बोला नहीं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तो आई विदाउट टेलिंग हिम एनीथिंग आई जस्ट टोल्ड माय बॉयज, आई सेड पैकअप करो. आई सेड सर आप जब बोलिए मैं तब आऊंगा, पर आपने तो इतनी मेहनत की. आई सेड कोई बात नहीं सर, अगली बार आ जाएंगे आप जब खुश हो. So for me, I was going to get paid for that one day, and if I don't do that and I had hired, मुझे पैसे नहीं मिलते उसके. लेकिन that quick thought got me so much of respect for him that every time he used to shoot with Filmfare, he used to say जीतू को बुलाओ, and he used to shoot only with me in those days. किसी और के साथ shoot ही नहीं करता था. One day I go to his house, he saying shoot करेंगे बाद में, come sit with me. He showed me his whole house. He says ये जगह है, was a window because he lives by the sea. He's saying मेरे घर में मैं जहाँ सोचता हूँ क्रिएटिव जगह है. बोला इतना बड़ा घर है, ऐसा है. बोला ये बाथरूम का विंडो जो है ना, जो सी को देखता है, बोला मैं यहाँ बैठता हूँ, ये मेरी छोटी जगह है खाली. आई थॉट कुछ तो मैंने सही किया है कि somebody shares such a personal detail about himself with me and stuff. He's saying I want to show you an album of my best pictures. तो मेरा तो दिल बैठ गया. मैं बोला मेरे से किसी और के पिक्चर्स दिखाने वाले. He showed me an album of all the pictures that I had shot of him and stuff. So these are moments that will stay with me forever and stuff. And we go to the next slide. Obviously, then there was no end. This is the kind of covers that I've ended up doing. I have a great rapport with Mr. Ajay Devgan. I shoot with him. Last 15 years, I've been shooting with him. I do almost 80-90% of his advertising work. I've done a lot of films with him also. Anything personal work, I'm called for it and stuff. Something that I've developed like this itself. While doing this, a very fortunate incident happened with me. At one of the shoots, I met a friend of mine and he said, he didn't know मेरा स्कूल का दोस्त था. God bless his soul. I just lost him last year. Raj Kaushal, my closest buddy. हम स्कूल में साथ में दोस्त थे. And we did a lot of great work together and stuff. Raj met me at a shoot and he said, अरे मुझे पता ही नहीं, because after college वो अलग कॉलेज में था, मैं अलग कॉलेज में था. He saying मुझे तो पता ही नहीं, तू फोटोग्राफर बन गया है. तो he said, मेरे साथ एडवर्टाइजिंग काम करेगा तू? I said क्यों नहीं, I'll do. So he called me for a job and he took me to shoot. He's saying इटली जाना है यार. तो I said with pleasure. आप बोलिए क्या करना है, क्या कर रहे हैं शूट इटली में? बोला निर्मा साबुन शूट कर रहे हैं. They went to Italy to shoot Nirma Sabun. We had Simone Singh on the beach of Positano, bucket में कपड़े धो रही है. But this is one of my pictures from Naples. Was of the idea was obviously running bride. This was not a part of. This is a part of the ad shoot.
But I've learned to grab opportunities जब मुझे लगता है कि ऐसा कोई presentation नहीं है. I don't go for talks. Like I said, this is probably my second or the third. I've been in, friends invite me, graduation, college invites me when they do. We just want you to come and share your experiences, motivate these people. So I've done those and stuff. But this is any presentation I've given in my life, anywhere I've sent my work, I've always added this picture in my presentation. Because for me, this gave me faith that I think I know my job or I'm going the right path. I love this picture. This was a shot that camera के पास angle भी नहीं था उनके पास. ये angle मेरा अलग सा angle था because I saw this, that the way she is flying. Because बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर हो सिर्फ artist नहीं, एक mood create करो आप. You try and show the ambience also. ये तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये इंडिया है ही नहीं. So this was my step into advertising. Because after this, then I did a lot of advertising work. Because like any industry, एक बार उनको पता चल गया कि एक नया photographer हमारे field में आया है, so then you get other calls. Our line of work only works initially by one person recommending another. I think in every business that's what you really need. When you connect, आप किसी को खुश रखोगे तो वो आपको अपने दोस्त से मिला देगा. ये हमारे इंडस्ट्री में एक चीज़ और भी होती है कि बहुत कमाल की चीज़ होती थी कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो लोग आते थे ये रीज़न से भी कि अरे डब्बू रत्नानी का असिस्टेंट है तो अच्छा ही शूट करता होगा. तो मैं कह रहा हूँ कि काम तो आ रहा है लेकिन वो फ्लो नहीं आ रहा है जितना लोग मिलके आ रहे हैं, जो आ रहे बता नहीं रहे. लाइक my portfolio, moment I shoot somebody, you show your picture to somebody else and that becomes you become a selling point. कि see, I've shot my pictures from this photographer. तो ये आप इससे इससे शूट कराओ. मैंने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है. आई रियलाइज कि लोग डब्बू के पास जा रहे थे बिकॉज आपने मेरे से शूट कराया. आप नहीं चाहते कि आपका कॉम्पिटिटर को सेम फोटोग्राफर शूट करे बिकॉज आप उसी ऑडिशन के लिए जा रहे हो. अगर जीतू सावलानी उस टाइम पे 25,000 चार्ज करता था, डब्बू रत्नानी चार्ज करता था 50,000, तो आप बोलते हो डब्बू ने कराया ताकि आप चाहते हो कि तू जा ही नहीं सकेगा. मुझे पता चला, मैंने बोला यार ये बड़ा अजीब काम है. तो आई स्टार्टेड पुटिंग स्टिकर्स बिहाइंड माई पिक्चर्स. Which was that thought that came to me. I used to have every picture of mine that used to go from the lab saying photography by Jeetu Savlani and my name behind. And that started getting me like a lot of work because then people had direct access. Agency में photo पहुंच गया, client के पास photo पहुंच गया, वहाँ से मुझे बहुत काम आने लगा. So that's a theory that I have to use all the time even now because लोगों को पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे. So this is some of my advertising work that I've done. This is very recently done. This is just released 15-20 days back. While shooting with Raj, 3-4 साल हो गए थे एडवर्टाइजिंग वर्क करके. 2004 में आई वेंट टू इटली टू शूट दिस. 2007 ही टोल्ड मी, ही सेड आई नीड 40 days of your life. And at that time I had generated a lot of work. I kid you not, I used to work every day of the month. मेरे पास रोज काम था and I was very happy doing that and stuff. And I said, and I had made a name in the city. Because of all these tactics, एक हो गया था बॉम्बे में, एक नाम हो गया था कि अगर आपको, मेरी स्पेशलिटी थी कि लोग जो अपना पोर्टफोलियो करना चाहते थे एक्टिंग में जाने या किसी चीज़ में जाने के लिए, वो मेरे पास आया करते थे. तो बोला जीतू के पास जाओ, तुमको काम मिलेगा. वो फोटो ऐसे खींचता है कि तुमको क्लाइंट काम देगा. इट्स नॉट अबाउट जस्ट शूटिंग पिक्चर्स. Raj told me at that moment that I need 40 days of your life. I want you to come and shoot with me for a film. मैं film work नहीं करता था उस time. I was very happy doing fashion, advertising and stuff. So I went to shoot my first film with him, and this was my beginning of my step into film publicity. These are pictures which were shot in actual light. They were shooting in Thailand for this film. All the images you see, nothing was posed. These were shot because I used to candidly shoot all these pictures. Obviously the Arshad and Sanjay picture was shot keeping in mind that
ये पोस्टर में आएगा सर, आप खड़े हो जाइए प्लीज वगैरह. When the posters came out, it was great, interesting. I came back to Bombay. मैं अपना फोन घर छोड़ गया था, मैंने ले नहीं गया अपने साथ, because मैंने कहा कि फोन आएगा तो आप काम कैसे मिलेगा आपको? How will people, if I am in Bangkok, and those days was very expensive to have international roaming and stuff. So I left my phone with my brother. I told him, भाई फोन आएगा तो क्या करना? बोलना 10 दिन में आ रहा है, ये नहीं बोलना कि 40 दिन के लिए गया. तो बोला फोन आता था, मैं उसको वहां से बोला फोन तो आ रहे थे, बहुत पूछ रहे बुकिंग के लिए, बट यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ वर्क. ऐसे ठीक है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई केम बैक, आई हैड 150 कॉल्स फॉर वर्क, एंड अबाउट 48 पीपल वेटेड फॉर मी टू कम एंड शूट, एंड सेड इफ वी शूट वी ओनली शूट विथ यू. गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू नो दैट मैंने इतना कुछ ऐसा ये तो काम किया है अपने तरीके से कि लोग अब मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मेरे पे इतना ट्रस्ट फैक्टर करते हैं. वन फिल्म देन, लाइक आई सेड, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओ, पोर्टफोलियो में मेरा नाम हो गया था कि ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करता है, बिकॉज मैं अपना जान लगाता था. मैं ये सोचता था कि ये मेरा काम, मैं अपने आप को शूट कर रहा हूं. सो इफ आई हैव टू शूट माई सेल्फ, हाउ वुड इट बी एंड स्टफ. So I used to keep that in mind, always put myself in their shoes. So I used to keep that and I used to guide them. मेरा मेकअप मैन बोलता था यार तू बहुत टाइम लेता है ऐसे, लेकिन उसका तो करियर है ना, हम तो पैसा बना देंगे, उसका करियर है, वो नहीं करेंगे तो कैसे काम मिलेगा. Which is why I'm still doing work, because all those people that I've shot, the numerous, I must have shot about 8 to 10,000 portfolios in my life. When I go on to television sets, most of the actors know me. Marketing team, चैनल बात नहीं कर सकता, वो मुझे बोलते हैं कि जीतू तू बात कर, तेरे से ही मानने वाले हैं वो. So this is why what happens because of what I did then. This got me my next very interesting story. Bye now, thank you. The posters of this film that you will see after this also, but I have a very interesting story to tell you about. लाइफ में आपको हर चीज स्मूथ नहीं चलती है, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है आपको कि कहीं ना कहीं आप कैसे इसको आगे ले जाओ एंड स्टफ. दिस पिक्चर ऑफ अमिताभ फायर्ड मी बिटवीन द शॉट बिकॉज दीज वर कैंडिड पिक्चर्स. सो आई वाज शूटिंग एंड डायलॉग बोलने के बीच में उनका ये क्लिक मेरा आ गया, तो उन्होंने कहा कि स्टॉप द कैमरा, ही सेइंग यू बॉय पैक योर कैमरा, टेक अ बस एंड गो होम. तो मेरा पहला ख्याल था कि मैं क्या इतना गरीब लगता हूं कि इन्होंने मेरे को बस का क्यों बोला, मतलब टैक्सी में क्यों नहीं बोला जाने के लिए. जोक्स अपार्ट, आई सेड क्या किया जाए. इनका मैंने पिक्चर शूट किया था, ऐश्वर्या बच्चन सर एंड अभिषेक इन आईफा अवार्ड्स इन 2004 इन एम्स्टरडैम, और मेरे पास उसके प्रिंट्स थे बहुत बढ़िया. ये पिक्चर्स फिर इन्होंने और इनके अभिषेक फर्स्ट शो ऑन स्टेज वाज for the tsunami victims called Help, which also I had shot. So I made prints to him and I gifted to him, and that's how I mended my ways with him. Because I went to him later and I said, sir, rehearsal में तो shoot कर सकता हूँ ना आपको, मुझे तो काम देना है, मैं फोटो नहीं दूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे. So these were pictures from there. I went and told Mr. Bachchan this. I met him a few years later. उस टाइम पे तो इतना गट्स नहीं था कि उनसे बात करके बोल सके. तो I went a few years later and I told him, I said, sir, ये शूट कर रहे थे, बोल बच्चन शूट फिल्म कर रहे थे जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड ही वाज देयर प्रमोशन सॉन्ग पे. आई सेड सर आपको याद नहीं होगा पर आपको मैं शूट करा था, शूट आउट पे आपने मुझे बोला था. और यू नो व्हाट हिज रिप्लाई वाज टू मी, एंड दैट इज व्हाई ही इज द ग्रेट अमिताभ बच्चन. हिज रिप्लाई टू मी वाज, आई ऑल्सो टोल्ड यू आई डोंट शूट फॉर 2 कैमराज एट द सेम टाइम. So he's not Amitabh Bachchan just for his performance, but his memory of one small photographer who started his career, and he remembered this 10 years down the line. Let's show you my other pictures of. It's been an interesting journey. You can just show the images. When you shoot with them for other pictures, you obviously get a connection with them. You start getting close. They have started trust factor with you and stuff.
Because of me doing Miss India shoots, I got into the panel in 2000. In the year 2000, I started my career with them. In 2010, which was my dream, they invited me to be one of the panelists. I used to then shoot their portfolios, which also took me to shoot their calendar, the pictures that you will see. Of a calendar shot in Fiji Islands. This is my work, obviously, with web series portals coming up. This is some of my work that I want to share with you. I do want to say that all this comes because lot many people, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये shoot करना वगैरह. There are people keep questioning me कि यार ये film stars को कैसे shoot किया जाए. तो उनके लिए मेरे पास 3-4 ही point है खाली सलाह देने के लिए. पहले तो एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. We'll end with this. I want to wrap this up right now with those images that. So first thing I think I tell people who ask me what is my mantra or to shoot, what do you do to shoot celebrities and stuff. I would say the first thing is I tell everybody is a little preparation is very important. This is a shoot I did with Bachchan sir about 3-4 years back for Cineblitz, and my point to them was एजेंसी वगैरह सब गए शूट के लिए, किसी को पता नहीं था कि क्या करना है. ये रेफरेंसेस मैं लेके गया था उनको, तो उन्होंने बोला अच्छा करना क्या है, तो nobody had a clue and I had just gone to meet him. I said सर मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एक कोलाज बनाऊँ जिसमें you are so great with expressions कि मैं आप चाहता हूँ कि आप अलग अलग एक्सप्रेशन करो. So this was my homework done for this. Point number 2 I think is you need to go an extra mile. When I was called to do this cover, this many years back, they were doing a film called All the Best. That ribbon, they wanted to do a Diwali picture. तो मैं ये reference ले गया था अपने साथ. और shoot next day था, तो बोला कल कुछ कर रहे हैं, वो references लेके आए. अजय देवगन refused all of them, and Sanjay Dutt said ये बहुत बकवास है. And there was a film, English film released called Christmas Gift or something. I remember. मुझे बहुत अच्छा लगा था picture. I said, sir, all the best. आपकी picture आ रही है, दिवाली का time है. I said, what better way to have the two hunky stars of the industry wrapped up as a gift to the public, and they agreed to the picture. The stylist ने बहुत नाटक किया कि नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. तो obviously I cannot be rude and stuff, and I cannot say. I said एक काम करते, if you allow me, can I do the production for this? So they said okay. Immediately from the meeting I went, caught a tailor, bought the fabric, and I did this, and I didn't even charge them at my cost because I said मेरा cover आ रहा है, मेरा concept है, तो मैं ये shoot करना चाहता हूँ वगैरह. Third point I feel that before I end this long talk of mine is I tell people it's very important to build a trust with people and stuff. This picture was shoot मेरे पास आया because Pinky Roshan ने बोला like my other clients कि if you want to shoot my cover मैं चाहती हूँ कि जीतू सावलानी मेरा शूट करे because मैंने उनके साथ शूट किया हुआ था. जब ये पिक्चर सेलेक्ट हुआ, ऋतिक रोशन इज बीन नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट. मैंने काम किया हुआ है तो मैं बता सकता हूं आपको कि वो इन डिटेल जाएगा हर चीज में. ऋतिक रोशन ने बोला मेरी माँ का पिक्चर जो कवर पे जाएगा वो यही जाएगा पिक्चर. मैगजीन एडिटर कॉल्ड मी एंड सेड वी वांट ऑल द पिक्चर्स. आई सेड मैम ऋतिक ने बोला है और पिंकी जी ने कहा है कि यही पिक्चर जाएगा, नहीं आप मुझे दे दो, वो मेरा प्रॉब्लम है. आई सेड मैं आपको नहीं दे सकता. आर यू टेलिंग मी द एडिटर हु इज पेइंग यू फॉर इट? I said I was called by Pinky Roshan. My loyalty lies there. उन्होंने मेरे को काम दिलाया. I said आप पेमेंट मत कीजिए, लेकिन मैं आपको पिक्चर नहीं दूंगा दूसरा हो, क्योंकि मुझे ऋतिक ने बोला है मैं वही दूंगा. So this is why that picture came. The editor never paid me for this shoot, which is okay. But because of that, I still work with Hrithik. I just did White Hat Junior ad with him in COVID times. एक relationship आज भी है, respect आज भी है, इसीलिए मेरी उसके साथ. So far I feel these are certain points that I feel are very important in life. My last point I would like to tell people is लोगों को क्या लगता है, ये पिक्चर भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कभी-कभी you know social media has become so big today that people don't even realize. मैं एक इंटरव्यू दे रहा था किसी मैगजीन में and they said एक पिक्चर चाहिए आपका और अजय देवगन का, आप 14 साल से इतना मतलब 10-12 साल हो गए थे तभी आप इतना काम करते हो. ऐसे मैंने कभी लिया ही नहीं फोटो उनके साथ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती. आई एम नॉट
I love them for the art that they generate and the way they entertain us. पर मुझे कोई अपना शौक नहीं है. लोग क्या करते हैं इस चीज़ का बहुत फायदा उठाते हैं कि अरे मैं इसका नंबर, like I have the actor's number, I never call them, I never send them messages. Unless and until it is their birthday, I never send any of the actors, I never share their numbers and stuff. I tell people कि आपके relationship को आप friendship मत समझो. आप respect दो तो आपको respect मिलेगी and stuff. So these are my 4 points. I feel this is my journey. What I do want to say is that I like experimenting. I like doing new things. I'm here. I'm plugging my business again with you guys. I'm going to be in Surat a lot. We have a production company. My partner in crime, Geeta Modi, sitting right in front. The boss of the company and my partner sitting there who's helped me make this presentation, Chevy Modi. We are going to do a lot. We work a lot in Mumbai and in Surat now. My dream is to bring all these celebrities to all of y'all over here and introduce them. I know a lot of y'all use them and stuff, but that is my plug-in. We also did a very interesting thing just before COVID stopped us. Geeta Modi ji has immense faith in me, so I gave her an idea. I said, आप इतना travel करते हो and you are also an actor. एक travel show करते हैं आपके साथ. So in 2019, and she is a great entrepreneur. She sees the spark in me. I hope you all see that also. I ended up directing my first travel show. I want to end this by playing a little AV promo of that show that we did. One step at a time, I find my way through valleys of flowers, fresh mountain showers, with magical powers I find my way. One step at a time, I walk my path in trust and surrender to sunshine and thunder. With eyes full of wonder, I walk my path. One step at a time, I find my way. One step at a time, I find my way. Thank you. You guys have been wonderful. Do watch this on YouTube. It's also very informative for anybody traveling up to Himachal. Lots of things to go. Lots of journeys just begun, I feel. A long way to go. And maybe we shall do a lot of work together in the future. Thank you. Once again, Gauravji, Atulji, Geetaji, BNI Surat for giving me this opportunity. Really very happy and thrilled. I'm looking forward to many such more moments together with you all. Thank you once again. Thank you. Sorry, I wanted to actually do an offshoot and all, but I will not because also there was no lights. Thank you so much, Jeetuji, for taking us through your glamorous journey with your photographic lens. फोटो की बात हुई है तो हमारे फोटोग्राफर पार्टनर मैक्स मीडिया ने बाहर एक स्टैंडी लगाया है, तो जो आज जितने भी खूबसूरत मेमोरीज कैप्चर होने वाली हैं, आप वो वहां पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके अपने मोबाइल फोन पे आपके फोटोज या कॉन्क्लेव के फोटोज, बीसफेस्ट के फोटोज आप वहां पे देख सकते हैं. फर्दर अनाउंसमेंट विल बी स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट एम्पावरमेंट आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, सो मेक मस्ट ऑफ दैट एंड हैव द बिगर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. So we all know that an event as large as this has the contribution of a lot of people. So उन्हीं में से कुछ people हमारे barter partners को shortly we are going to felicitate, and for the same I would be requesting our senior director consultant Mr. Anup Jhaju and Manish Parekh to please join us on the stage. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोग हैं जो हमें एज अ बार्टर पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं. फोटोग्राफर पार्टनर, डिजिटल मीडिया पार्टनर, टी शर्ट, फैशन एटसेट्रा एंड ऑल. एंड आप ये अपना इवेंट जो है फेसबुक, यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं. Anup ji.
Anup ji, can we please have you on stage? Okay, let's start. We'll have invite Mr. Saival Rathod from Drona chapter. Company name Aura Designs, who are our graphic partner. So जितना भी आप designs देख रहे हैं, they have been prepared by Aura Designs, Mr. Saival Rathod. Please give a big round of applause to all the barter partners. इनके बिना ये event अधूरा है. Next we have Mr. Ibrahim Siddiq Kagzi from Afinic, our branding partner, if he is in the hall. We also have Mr. Anuj Toshnewal from 4 Pillar Media Agency, our social media partner. Anuj, are you here? Okay. And we have Mr. Keyur Modi from Surtis, our digital promotion partner. So if we have Keyur ji, yeah, please. We also have Mr. Ravi Saparia from Sanskari Nagri Navsarians, our digital promotion partner. Mr. Vatsal Shah, Arihant IT Solutions, who is our bulk SMS partner. Vatsal Shah. Okay. Ibrahim is here, I think. Ibrahim. Yeah, Ibrahim Siddiq Kagzi from Afinic, our branding partner. Next in line, I'd invite Mr. Sandeep Bhatt from Balaji Tech, our bulk SMS partner. Mr. Sandeep Bhatt. सब मेंबर्स को जो व्हाट्सएप पे अपडेट्स आ रही हैं, दैट इज आवर बल्क व्हाट्सएप पार्टनर मिस्टर अविनाश सवलानी फ्रॉम JMD Infotech. Next is Mr. Amar Panchal, our website partner, Technotech India. Mr. Amar Panchal, our website partner. Mr. Mitesh Mehta, our brand specialist partner, Media Logic, if we have. Mr. Rachit Khator, STAG by our technical support partner. Mr. Hiral Cholera, sorry, Miss Hiral Cholera, the Travelopedia, our travel partner. Friends, we'll be starting with the corporate empowerment soon after this. And upcoming, we have keynote speaker at 4 p.m. by Dr. Pawan Agarwal, and also masterclass on LinkedIn at 5:30 p.m. Don't forget to bring your fully charged laptop for the same. Thank you, Miniji. Thank you so much.
Friends, we are starting with the corporate empowerment. So I request all the members to come in the hall and take the maximum benefit. We have companies coming up.
people standing behind, please take your seats. Okay, car number GJ05RK7843. They've lost their keys. Please come backstage and grab it. I repeat, GJ05RK7843. So everyone, आपका फिर से स्वागत है Biz Fest 2022, an initiative by BNI Greater Surat, presented by Torin Wealth Management, powered by BCL Bharat Laboratory and B Founder Circle, in association with Life Gain, Pick a Book and Fortunate Pens. So Neerav, audience क्या बोल रही है? अलग मैं ऑडियंस में हूं, बहुत ही बढ़िया एनर्जी के साथ में लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो मैं किसी के पास जाके पूछना चाहूंगा कि आज का दिन कैसा रहा. कोई शेयर करना चाहेगा सर, आपका आज का एक्सपीरियंस? एनीवन वांट टू शेयर? या हाय गुड मॉर्निंग, आई एम BNI सड्डा फ्रॉम बारडोली, पाट खतरे. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला. सो थैंक यू BNI ग्रेटर. थैंक यू सो मच सर. कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ नया एक्सपीरियंस BNI बिज फेस्ट 2022 के अंदर? या यस, अनुराग जी. सर जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस. कोई और शेयर करना चाहेगा कोई स्पेशल मोमेंट जहां पे उन्होंने कोई विजिटर? या थैंक यू. हेलो हेलो, आई एम शीतल सापरिया. आज मैं ये मेरी फर्स्ट इवेंट है बिजनेस, तो उसमें मुझे जानने को मिला कि जो लोग होते हैं वो अपनी बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं और हम कहाँ पे वीक रहते हैं और हमें कहाँ पे लीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे ग्रैब करना है हमें, वो सारी बातें जानने को मिली. थैंक यू सो मच. कोई है ऐसा विजिटर नॉन BNI मेंबर यहाँ पे अभी रूम में हो? एनीवन विजिटर गेस्ट? या थैंक यू सर. सो अगर आप शेयर करना चाहें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? My name is Hatim. Good afternoon, everyone. I've just moved in from Dubai to Surat. I'm originally from Surat, and I networked through Mufaddal Badri. He's my brother-in-law. So I met quite a few prospects trying to set up a new business here and looking for good leads. Thank you. What is your category?
आप क्या काम करते हैं? What is your category? I am a consultant basically in ISO management, document management. Yeah. So कोई चैप्टर में अगर ISO मैनेजमेंट की कैटेगरी ओपन है, then you can connect to Mr. Badri from Dubai and you can invite him to your chapter. Any other guest, non-BNI member in room? Yeah, sir, please. Yeah. I am Shreyas Gandhi. I'm into IT field. I mean, I'm coming here in this such a program for the first time. And in the program menu, when you have written that there's something like photography session, so I missed it. I didn't know where it was. So, and one more thing, that there are so many chapters of BNI, so wish to join. आपका category कैसा है? He is from IT field and he is looking to join BNI chapter. Yeah, yes, sir, please. Yeah, hi, I'm Bhavin Kapadia from Finos Cable Limited. Okay, some of my distributor are with your BNI group, and some of my retailers, they are handling in electrical field. मैंने जब तक देखा है कि BNI के प्लेटफॉर्म बना रहा है जो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस एक्वायर कर रहा है एक दूसरे को हेल्प करके, सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. Thank you, sir. Hello, good morning. I'm a member of Jupiter Group. So I recently understand how people introduce their business and how they convince about their products and their, all those things which is help in business. So thank you. Thank you, sir. Any observer from non-Surat region? Any observer outside Surat in the house? Okay. कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट में किसी को कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला हो? If any member wants to share about that. Yes, sir. Myself, Prakash Sethia, SVSS Export, A to Z Export category. I got the opportunity to meet with the Samara tea. I am putting them one order also for Malaysia. My office in Malaysia also. Thank you so much, sir. Thank you. Over to Palak. Thank you so much. We have a lot of visitors in the house today. Lot of prospect inductions for all our chapters. So now moving on to our next speaker, जिनके लिए अभी से already house full है. So let me call on our Assistant Area Director, Miss Meenakshi Bhatnagar, to come on the stage and introduce the speaker for the day. Let's just hear it from her. Good afternoon, everyone, and thank you so much, Dhara and Palak, for this privilege. मैं आज जिनका परिचय देने जा रही हूँ, उनका परिचय देते हुए, like, I am feeling proud and privileged that I am introducing such a person who is working tirelessly to increase the profile of the integral Mumbai network. He researched in studies of logistics and supply chain management of Dabbawala in Mumbai. उनकी मैनेजमेंट स्किल्स की नॉलेज के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी उनको सराहा जाता है. He has imparted his knowledge in various countries in Asia and Africa and beyond the Pacific, in United States and in the United Kingdom. He has received many awards for his work as a teacher, including the Utkrishti Shikshak Samman from Mumbai National Congress in 2010 and Rajiv Gandhi Puraskar in 2007. Along with the regular work, he also runs the Mumbai Dabbawala Education Center. He's also working as on a new thesis and that importance of newspaper distribution business in Mumbai. He is TEDx speaker, an educationist, a business consultant, an entrepreneur leader. So friends, to manage your business, we will learn today how our management skills, how we can work
मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गड़ल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। एंड none other than मिस्टर पवन अग्रवाल का ये मानना है कि कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है कुछ थमा थमा सा, हमारी इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट स्किल से चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। Let's have a huge round of applause for a person full of management skills who is always ready to learn, to explore and to execute it powerfully. Mr. Pawan Agrawal, floor is all yours, sir. आपका स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। Thank you so much.
I invite our event chairman, Mr. Atul Gupta, to come on the stage and welcome him with a token of love from BizFest team. Stage is all yours, sir. Thank you, friend. Thank you. सबसे पहले तो मैं BNI सूरत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसका कारण है दोस्तों, बहुत से कारण है, पर दो तीन कारण बहुत स्पेशल है आज। एक तो कि लॉकडाउन, कोरोना सारा बंद था। इवन मतलब इट्स नॉट सरप्राइज फॉर मी, ट्रैवलिंग 20-25 डेज इन अ मंथ, मतलब महीने में 25 दिन ट्रैवल करने वाला बंदा 25 महीने ट्रैवल ही नहीं किया। और आज ट्रैवल किया तो दो बातों स्पेशल। नंबर 1, हमारे महाराष्ट्र में आज से कोरोना के रिस्ट्रिक्शन खत्म, और दूसरा, आज महाराष्ट्र के लिए नवीन वर्ष है, गुड़ी पाड़वा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और गुप्ता जी, आपने इस बहुत ही भले दिन आपने मुझे बुलाया। मेरा दावा है, वादा है कि शायद ये आने वाले साल में सर और मैं ज्यादा ट्रैवल करूं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल। और अब ठीक है, ये तो लोग बोलते हैं आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है कि आप इतने बड़े लोग, मुझ जैसे बंदे को आप मंच पर बोलने के लिए बुलाते हैं। रियली इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर। आई एम रियली सिंपल पर्सन, नॉट अ बिग थिंग, बट यू मेक बिग डील विथ मी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे 45 मिनट्स दिया है। 1 मिनट कम नहीं बोलूंगा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। आई 45 मिनट बोलूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन दावा है दोस्तों मेरा, जब तक मैं बोलूंगा कोई हिलेगा नहीं। इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी। नॉट बिकॉज आई एम गुड स्पीकर, ऑफ कोर्स आई एम गुड स्पीकर, बट माय कंटेंट्स आर वेरी गुड। और हम जानते हो दोस्तों कि जब अपने बोलने में दो बातें चाहिए दोस्तों, चाहे वो सिर्फ बोलना नहीं है। मैं तो बोलूंगा जब तक वहां हिंदी ज्यादा चलेगा ना, मुझे भी चलेगा, क्योंकि जो हिंदी में दम से बोल सकते हैं ना, अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, ये तो पक्का है दोस्तों। और मैं सॉरी, माय होल एजुकेशन मराठी, मेरी पूरी शिक्षा मराठी में हुई है। हाँ, लय भारी एकदम आभारी है। एनीवे, तो फ्रेंड्स रियली तुम्हारे अंदर वो जज्बा चाहिए। एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट, मैं स्टोरी नहीं बोलूंगा आपको। इफ आई टेल यू अबाउट डब्बावाला, एवरीवन नोज व्हाट इज डब्बावाला, बट आई विल कनेक्ट देयर वर्क विद योर वर्क। मैम, वो भी एक बिजनेस ही करते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं। बॉस, मैं तो कहता हूं पूरे विश्व में सेवा ये बोलने की बात है। बॉस, हम लोग अपने काम के लिए काम करते हैं, चाहे वो समाधान हो, पैसा कमाना हो, कुछ भी हो। देर आर सम सेल्फ इंटरेस्ट फॉर विच वी आर वर्किंग। वैसे डब्बावाला भी करते हैं दोस्तों। हालांकि ऑफकोर्स मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोगों को पता नहीं कि मुंबई डब्बावाला है क्या। दोस्तों मैं बताऊंगा कि डब्बावाला डिब्बा डिलीवर करते हैं दोस्तों, ये खाना बनाते नहीं है, आपके घर का खाना आपके ऑफिस में पहुंचाते हैं। यू नो व्हाट दे आर डूइंग? They collect your lunch box in the morning from your home and they will deliver before lunch time in your office. After lunch is over, they will deliver back empty tiffin at your home. That's it. It means they are doing simple 2 deliveries, and on this 2 delivery, I speak globally because their delivery is important, but more than that, how they deliver, that is more important. बोलते हैं ना, काम तो और कोई करता है, कैसे करते हो,
कैसे करते हो? मैं बात कर रहा हूं, मैं स्पीक कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हो? मोर इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, मोर इंपॉर्टेंट, बिलीव मी फ्रेंड्स। द रीजन बिहाइंड दैट कि हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो ठोक के करना, रोक के क्यों करता है? यू शुड डू यस बिकॉज आई एम डूइंग गुड जॉब, आई एम डूइंग गुड जॉब। दैट इज टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, एंड दैट्स व्हाट डबल आर डूइंग। नंबर 2, कई सूरत के लोगों को पता नहीं होगा कि डिब्बा वाला व्हाई कलेक्ट यूर लंच बॉक्स इन मुंबई। क्या आपको लगता है ना यार, ऐसा क्यों होता है मुंबई में कि डब्बा वाला डिब्बा ले आता है? व्हाई यू कैन नॉट कैरी योर ओन लंच बॉक्स इन मुंबई? मेनली 2 रीजंस। मैम, हमारे कस्टमर मुंबई में ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन से, और पिंकेश जी, लोकल ट्रेन इज ओवर क्राउडेड, so when you travel in local train you need both hands free. Carrying tiffin out of question you cannot carry. Number 2, long railway route 60-70 किलोमीटर। सर, घर से ऑफिस पहुंचने में 3 घंटा लगता है। सपोज यू स्टार्ट मॉर्निंग 6 o'clock, यू विल रीच ऑफिस 9 o'clock, और फिर भी आपको डिब्बा ले जाना है, तो आपकी धर्मपत्नी को खाना कितने बजे बनाना होगा? अब मुंबई हस्बैंड नहीं चाहते मेरी बीवी 5 बजे खाना बनाए। क्यों? मुंबई हस्बैंड लव इज वाइफ। सूरत ना अपन प्रेम करता हसे, मैंने જરાક ગુજરાતી ગમે છે, વધારે નથી જમતી। सूरत के हस्बैंड भी प्यार करते हैं, लेकिन सर मुंबई के हस्बैंड कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। अंदर की बात कुछ और है, बट ऊपर की तो यही है, ही लव इज वाइफ लॉट। तो वो क्या चाहते हैं? हस्बैंड मेरी बीवी 8 बजे खाना बनाए। सर होता क्या है? हस्बैंड स्टार्ट 6 o'clock, वाइफ कुक 8 o'clock एंड 9 o'clock हु कम टू कलेक्ट टिफिन। तो मैं मुंबई में प्रचार करता हूं, जो बीवी से करे प्यार, वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार? लेट डब्बा वालों कलेक्ट टिफिन। दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हो तो मेरी बात सुनना, मेरा पहला मैसेज है, आप बिजनेस में जो भी सर्विस देते हो, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, कुछ भी करते हो, सर योर कस्टमर शुड सेटिस्फाई, बट अलॉन्ग विथ कस्टमर अदर पीपल आल्सो शुड बी बेनिफिटेड विथ योर बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस, इट इज कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों, कई मैसेज बताऊंगा मैं। अगेन, मैंने कहा ना, पहले ही बोल दिया, मैं छोटा आदमी हूं, आप खैर बड़प्पन देते हो मुझे, तो आपका बड़प्पन है, लेकिन दोस्तों प्लीज, सही में इतने सारे मैसेज दूंगा, केवल आप तक नहीं, अपने घर के लोगों को बताना। यहां कुछ मैंने छोटे बच्चे भी देखे हैं, नॉट यूथ, मे बी चिल्ड्रन। बिलीव मी फ्रेंड, आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बातें पता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ डिस्कशन, इंटरेक्शन। आपने करना होगा। बिलीव मी फ्रेंड, मैं 45 मिनट्स में आपकी जिंदगी नहीं, लेकिन आपकी सोच बदल दूंगा, इतना मेरा गारंटी है। द रीजन, सर, इट्स अ फैक्ट, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच की सिवा कुछ नहीं। एंड दैट्स द रीजन कि व्हाई मुंबई डब्बावाला इज रिकॉग्नाइज ग्लोबली। ग्लोबली फ्रेंड, पता है हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। Believe me, they do not know, sir, what is logistic, what is supply chain, but they are the masters of supply chain. Can you imagine? Because बंदा बोलता है, जो मैं कर सकता हूं वो मैं ही कर सकता हूं, that's it. वो ऐसा नहीं बोलेगा कोई और नहीं कर सकता है, मैं कर सकता हूं, that's it. And that's what they call master. और दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी बातें बताता हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों 40 मिनट में बताऊंगा मैं। पैशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। कैन इमेजिन? मुंबई डब्बावाला मुंबई में 130 साल से डिब्बाते रहे। 130 साल, 130 साल, बड़ी बात है यार। 130 साल से किसी एक काम को कंटिन्यू अंजाम देना अपने आप में बड़ी बात है। कैन इमेजिन? और दोस्तों, 100 साल पहले सर पे उठाता था, आज भी सर पे उठाता है। द रीजन, वर्क कल्चर डू नॉट अलाउ टू यूज एनी अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डोंट अलाउ। मतलब क्यों सर फ्रेंड? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स द रीजन दे वर्क कंसिस्टेंटली। 130 साल करता है, बताऊंगा मैं, और दैट टू विथ 100% एग्जीक्यूशन। फ्रेंड्स, 130 साल में इट नेवर हैपन सिंगल टिफिन इज नॉट डिलीवर्ड। सर 100% डिलीवरी, 100% डिलीवरी। मैंने पूछा एक डब्बे वाले को, बोला मैंने, क्या रे, एक डिब्बा नहीं देगा तो क्या होगा? कस्टमर बाहर खा लेगा। सब पता है डब्बा वाला क्या बोलता है? बोले साहब, एक डिब्बा नहीं दिया उस दिन बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो उसी दिन मेरे कस्टमर की बीवी ने डिब्बे में मेडिसिन रखा और उसी दिन मैंने नहीं दिया और मेरे कस्टमर को कुछ हो गया, तो जिम्मेदार कौन? डबल बोलता है, जिम्मेदार मैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट
every delivery is important. दोस्तों आपको डिलीवरी इंपॉर्टेंट है यार. आई एम सॉरी फ्रेंड्स, नॉट प्रेजिंग. मैं पूरा ट्रैवल करके आ रहा हूं. मैं कल रात में बाहर से आया और मैं यहां से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा. मुझे कल सुबह 5 बजे कहीं और जाना है. बिलीव मी फ्रेंड्स, आई नेवर गेट टायर्ड व्हेन आई गिव लेक्चर. क्यों साहब? मुझे सुनने के लिए एक तो इन्होंने बुलाने वालों ने बहुत मेहनत की और 400-500 लोग सुन रहे. आई कैन नॉट अनएग्जीक्यूट माई सिंगल डायलॉग. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. क्यों सर? हमारी सेवा इंपॉर्टेंट है, केवल हमारे पैसे के लिए, हमारे काम के लिए नहीं सर, औरों के लिए. एक डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट है. यस एवरीवन, एवरी डिलीवरी. नंबर 2, दोस्तों हम लोग एक्सक्यूजेस नहीं लेते. बोलते हैं ना, काम करने वालों के लिए एक ही कारण है, करना है. नहीं करने वालों के लिए कई कारण है, नहीं करना है. कई कारण है. हमको तो सिर्फ एक ही कारण करना है. एंड विदाउट मिस्टेक sir, despite their illiterate 100% accuracy in 130 years, it never happened. Single timber is wrongly delivered. Impossible, impossible. 100% execution, 100%. मैंने डेवलपर को पूछा साहब कि यार एक भी गलती नहीं करता, ऐसा बोलता हूं मैं. सुनना क्या बोलता है. बोले पवन सर, मैं अपने कस्टमर को उसके खुद के बीवी का खाना देना चाहता हूं, पड़ोसन का नहीं. सर मेरा बोलना क्या है? फीलिंग. हमारे मराठी में कहावत है, विचार बदला नसीब बदले. हिंदी में सोच बदलो नसीब बदलती है. इज इट राइट? इट इज राइट. आप सब कुछ वैसे करते हो जहां आप सोचते हो. यार इट्स कॉमन थिंग. 100% you should think for their thinking, and this is because of dedication. Sir, 100% dedication, and that too in time. If you see on Google, in time, on time delivery, you will find on the top Mumbai Dabawala. Jabki their delivery depend on local train. Sir, in Mumbai, local train may not runs on time. Dabawala always on time. Can you imagine? मैंने पूछा क्या रे कैसे होता है? पता क्या बोलता है? पवन सर, I am not railway minister. I cannot change train system. I can change my system. I am sorry दोस्तों. यूथ ध्यान से सुनना. वैसे मुझे अधिकार है, मैं स्पीकर हूं, टीचर हूं, और जब मैं बोलता हूं तो मैं यूथ के लिए अपने आप को फादर महसूस करता हूं. तो मेरी किसी बात का उल्टा मत समझना. मैं डबावाला नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे से क्वालिफाइड व्यक्ति हूं. लेकिन मेरे हर बोलने में बिलीव मी यूथ के प्रति प्यार, सम्मान दोनों है. और आने वाले समय में उम्मीद है, उम्मीद है. हमारा राइट सर? यहां जितने भी बाप बैठे हैं, पापा बैठे हैं या सीनियर है, उनको पूछो कितनी आस लगा के बैठते हैं वो अपनी जिंदगी में. द रीजन यू डिजर्व फॉर दैट, क्योंकि आप उस लायक हो. इसलिए यदि मैं नालायक हूं तो मेरे से कोई उम्मीद करेगा ही नहीं. यदि मैं लायक हूं तो दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. एंड आई नो BNI members, friend, number of times I have met many BNI forum, many members, executives. Sir, really बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं मैं BNI का, because it is extraordinary institute, extraordinary organization. Maybe people are ordinary, but institute is organization is extraordinary. तो दोस्तों आपको उस पर खड़े उतरना है. और पता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? Because of 100% complete customer satisfaction. सब बिलीव मी, हमारा उठते बैठते सोते जागते एक ही नाम है जवान पर, कस्टमर कस्टमर कस्टमर. दैट्स इट दोस्तों. उठते बैठते सोते जागते. इसका कारण है दोस्तों, हमको लगता है कि वी शुड वर्क फॉर कस्टमर, एंड दैट्स द रीजन वी आर हैविंग टू प्रिंसिपल्स. नंबर 1 वर्क इज वर्शिप, नंबर 2 कस्टमर इज गॉड. कैन इमेजिन? एंड ऑफ द सेशन यू विल एक्सेप्ट यस यस यस, दे बिलीव कस्टमर इज गॉड. भगवान मानते नहीं है, भगवान की तरह उनको पूछते हैं. मैम जब डबल आपस में बैठते हैं ना, एक दूसरे को समझाते हैं, ये कपड़ा भी पहनता है ना, कस्टमर के पैसे का, अपने पैसे का नहीं है. एम आई राइट दोस्तों? आप भी बिजनेस करते हो, आपको क्या लगता है पैसा कौन देता है? सर नीचे से ऊपर तक, चाहे कंपनी हो कोई भी हो, एवरीवन पेड बाय कस्टमर. एम आई राइट सर? और सोचिए आप, यदि हम उसके प्रति सम्मान नहीं रखेंगे तो फ्रेंड्स पैसा कितना भी कमा लो, सर हमारा सम्मान अपने ही लायक शायद नहीं रहेगा. That is a very important for businessman, and I believe in every person in India businessman है. सर बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि तुम मालिक. I don't believe that. We feel ownership. जो काम करते हो आप, उस काम का ओनरशिप दे डू फ्रेंड्स. एंड रियली फ्रेंड, हमारा तो इतिहास है. सी द हिस्ट्री ऑफ डब्बावाला. अशोक सर माझं क्लिक कर दे बरं. क्या हो गया? नहीं चल रहा है आपका. फ्रेंड्स, इफ सी द हिस्ट्री ऑफ डब्बावाला,
स्टार्टेड 1890, 1890 में स्टार्ट किया था सर। 1890 में एक डब्बा वाला, एक कस्टमर। आज 5000 डब्बा वाला एंड डिलीवरिंग 200,000 लंच बॉक्स। रोज 2 लाख डिब्बा देते। कैन इमेजिन, 2 लाख डिब्बे। सर इसका मतलब एक बंदा कितना डिब्बा देता है सर? एक बंदा डिब्बा देता है 40। कैन इमेजिन, 40 डिब्बा। फ्रेंड्स, आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, फूड बास्केट, सब 40 डिब्बों का वजन कितना होता है? 50 किलो। कैन इमेजिन, इन दैट क्राउडेड लोकल ट्रेन इन विच वी फील्स बोथ एंड फ्री। हमको काली आज चलना मुश्किल है, ये बंदा 50 किलो ट्रैवल लेके चल रहा है। क्यों सर? वर्क की वर्शिप, कस्टमर इज गॉड। सोचिए दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के समय में, सर हमारे पास कितने टेक्नोलॉजी है सर? मुझे याद है मैं पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर में लेक्चर देता था, आज मेरे पास क्लिकर है यार। कैन इमेजिन, दीज पीपल डू नॉट हैव एनी डेवलपमेंट बिकॉज वर्क कल्चर। बताऊंगा मैं, आई विल शो मेनी थिंग्स। और सर ये डिलीवर करने के लिए 8 से 9 घंटे काम करता है। कैन इमेजिन, और सर जब वो 9 घंटे काम करता है सर, बिलीव मी, ही डू नॉट रिलैक्स 5 मिनट्स। आई विल शो वीडियो। He do not relax 5 minutes despite he is working because he believe I should work for my customer and I should work for my organization. सर आप और हम, सर हम उनसे ज्यादा करते, उनके जैसा नहीं करते यार। मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा, यू विल सरप्राइज। इज इट? हाँ इट इज। लाइव है दोस्तों, लाइव है। मैं आपको मोटिवेट कर नहीं रहा हूं, आई एम शोइंग लाइव टू यू ऑल। और उसमें भी सर मॉर्निंग 3 आवर्स ऑफ वॉर टाइम। कैन इमेजिन, ये दे आर वर्किंग। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है सर, मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा यहां पर आता हूं। समय की पाबंदी है। मुकादम मतलब ग्रुप लीडर। आई विल रियली ट्राई टू आस्क यू टू प्लीज कॉन्संट्रेट, लिसन टू मी। बीएनआई में भी ग्रुप लीडर है या सुपरवाइजर, कुछ भी बोलिए आप। सर इनके ग्रुप में 10-20 डब्बे वाले होते हैं और एक ग्रुप में एक पर्सन बिकम अ मुकादम। और मुकादम कौन बन सकता है? ये आर नॉट क्वालिफाइड। सो ओल्डेस्ट मैन इज द मुकादम। जो उम्र में सबसे बड़ा है, ही विल अपॉइंट मुकादम। सर मुकादम 30% ज्यादा काम करता है, 1% इनकम नहीं मिलता है ज्यादा। मैंने पूछा मुकादम को, क्या रे यू वर्क 30% एक्स्ट्रा, व्हाई? सुनना उसका आंसर। बोले पवन सर, मुकादम मीन्स फादर ऑफ द ग्रुप। फादर ऑलवेज वर्क मोर देन चिल्ड्रन। आई एम द फादर, आई शुड वर्क मोर। संघवी साहब, गुप्ता साहब, मुझे पता है बीएनआई ने मुझे आज यहां बुलाने के लिए कितने, सॉरी गलत मत समझना, पापड़ बेले हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड, रियली। मैं पहले तो मना कर दिया था बिकॉज मेरा कुछ आज कमिटमेंट था और मैं बोला नहीं पहुंच तो कौन। सर मेनी धारा मैम कहां पर है पता नहीं। हाँ आपने कितनी धारा भाई, मतलब ईमेल की, कॉल की, मुझे बताया धारा मैम। हैट्स अप टू यू। मैंने बोला मैम यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रियली दोस्तों। तो what I am saying, my dear friends, you should understand what people are taking pain for us. और वैसा सर मुकादम बहुत तकलीफ लेता है। यदि आप मुझे पूछेंगे सर द सीक्रेट ऑफ डब्बा वाला, कपल ऑफ सीक्रेट, अमॉन्ग दैट सीक्रेट वन सीक्रेट इज मुकादम। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल 5000 पीपल वर्किंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर मुंबई का लोकल ट्रेन का मैप है। हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बट डब्बा वाला कैन ट्रैवल ओनली बाय लोकल ट्रेन बिकॉज दे आर अलाउड टू ट्रैवल बाय लगेज कंपार्टमेंट। एंड मुंबई में, पूरे भारत में मोनो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट नहीं होता है। कैन इमेजिन, कभी सुना आपने टीवी पर कि रोज मुंबई में लोकल ट्रेन में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? पता है 80 लाख। जितनी आबादी नहीं होती किसी शहर की, हमारे मुंबई में 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। उसमें ये बंदा डब्बा वाला डब्बा ट्रैवल करता है यार। मैं आपको एनिमेशन से बताऊंगा कि एक डब्बा वाला ये यहां से स्टार्ट करता है और ये 50 किलोमीटर जाके देगा और वापस 50 किलोमीटर वापस कैसे आता है। फ्रेंड्स, आई एम प्रेजेंटिंग देम, आई एम नॉट प्रेजिंग देम, आई एम नॉट प्रेजिंग देम। उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना एनिमेशन से और समझ आना। 5000 डब्बा वाला ऐसे ही काम करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, सर डब्बा वाला वहां से 40 डिब्बा उठाएगा और 40 डिब्बा उठा के वो डिब्बा कहां लाएगा? नियरेस्ट स्टेशन कॉल विले पार्ले। क्यों? यहां पर 10, 12, 15, 20 डब्बा वाले आएंगे, टिफिन रीसॉर्टिंग होगा। रीसॉर्टिंग के बाद ये बंदे को बोला जाएगा, ए 40 डब्बा तो क्या कर, विले पार्ले से दादर लेके जा। दादर आएगा,
फिर लोडिंग अनलोडिंग, फिर सॉर्टिंग होगा, इसको बोलेंगे 40 डब्बा दादर से ग्रांट रोड ला, ग्रांट रोड लाएगा, फिर वहां पर होगा, फिर बोलेंगे ग्रांट रोड 40 डब्बा चर्चगेट लेके जा। दोस्तों लोगों को क्या लगता है डब्बा वाला कलेक्ट टिफिन डिलीवर टिफिन, नो मैन, थ्रू आउट द डे डब्बा वाला इन कलेक्शन डिलीवरी लोडिंग अनलोडिंग कोडिंग डिकोडिंग सॉर्टिंग रिसॉर्टिंग एवरीथिंग इज डूइंग, एंड दैट टू crowded local train, overweight on his head, long railway routes. फिर भी करता है बॉस, फिर भी करता है। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको दोस्तों कि यहां पर हम एटलीस्ट थैंक्स ऑलमाइटी गॉड कि हमको ईश्वर ने अच्छा काम दिया है, वो भी अच्छा कर रहे, हम भी कर रहे, लेकिन वी आर इन कंफर्टेबल सिचुएशन, एम आई राइट साहब? ये हमारी हकीकत है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। तो कम से कम अपने जीवन से कंप्लेन तो मत करो यार, एटलीस्ट मत करो। You should satisfy yourself. That is very important for every entrepreneur, every businessman, every person in this earth, on this planet. Sir, अब वो by road जाएगा, सर के ऊपर, कंधों के ऊपर, he will carry 40 lunch box to नरीमन पॉइंट, बिजनेस सेंटर है सर, वहां पर ये टावर है, मान लो BNI का ऑफिस है, 40 लोग इस टावर में लंच के लिए वेट कर रहे हैं। दिस मैन विल डिलीवर ऑन फर्स्ट फ्लोर, 10th फ्लोर, 20th फ्लोर। जब कस्टमर खाना खाता है, सर ये कहीं नीचे आके अपना खाना खाएगा, पता है डब्बा वाला अपना खाना कैसे घर से लेके निकलता है साहब? एक जेब में पानी की बोतल, एक जेब में खाने का डब्बा, बिकॉज यू डोंट वांट टू ऐड वन मोर टिफिन इन हिज वेट। पूरी दुनिया में जिसका नाम है आज भी सादगी से जीता है, सादगी से। क्यों सर? हमको बापूजी ने पहले से ही सिखाया है, सादी रानी उच्च विचार, एम आई राइट? और दोस्तों मेरा दावा है, जब हम हकीकत में, सॉरी, मुझे एक फोरम में किसी ने बताया, मनी जी की, पवन जी आप क्या चाहते हो अपने बच्चे के लिए, क्या मांगते हो? पता नहीं, ये सवाल एक बार पूछा किसी ने और किसी ने पूछ नहीं पाए, और पता नहीं मुझे उस दिन क्या मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य मुझे पता नहीं, मैंने दीदी मन से बोल दिया कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मेरे बच्चों को तकलीफ देना, तकलीफ। लोग एकदम ये हो गए, ऐसा सब पागल आदमी बोल रहा है। मैंने बोला सर, मैंने दुख देना नहीं बोला है, मैंने बोला तकलीफ देना है। क्यों दोस्तों, प्लीज मेरे बात को आप एक्सेप्ट मत करना, लेकिन मेरा दावा है सर, किसी भी काम में आपको तकलीफ है ना, आप वो काम और ज्यादा अच्छा करोगे, ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। आप देख रहे हैं ना, एसी है, मुझे पसीना आ रहा है, सर पसीना आता है ना, मुझे बोलने में और मजा आता है, कैन इमेजिन? लगता है मैं अच्छा बोल रहा हूं, तकलीफ से बोल रहा हूं। मैं पढ़ने वालों को ऑलवेज बोलता हूं, बस जब पढ़ते हो ना, एक चेयर पे बैठो, 2 चेयर पे नहीं बैठना, आराम से नहीं बैठना, कंफर्टेबल मत बैठो। क्यों सर? हाथ में नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। आप, सॉरी दोस्तों, मैं BNI की तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, मैंने कहा ना 2 दिन का कार्यक्रम है शायद, राइट सर? आज और कल सर बड़े बड़े दिग्गज कितनी दूर से यहाँ आपको लेक्चर देने आ रहे हैं सर, यदि आप नहीं सुनोगे सर, सुनना होगा। मेरा दावा है, जब 100 लोगों को सुनते हैं, आपको 10 लोग पसंद आते हैं, वो 10 में एक बात ऐसी बोलकर जाता है, आपकी जिंदगी बदलता है, am I right? सर मेरा दावा है, वो 10 में एक मैं हूं। यस, इट्स माय कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। सर अब वो जैसे कहता है वैसे वापस आएगा, शाम को 6 बजे फ्री होता है, कैन इमेजिन? सर इसका मतलब क्या है? सीधा वर्किंग आउट डब्बा वाला एरर रेट, 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ 60 लाख डिब्बे जब देता है तब जाके एक मिस्टेक होती है। ऐसा किसने बोला? फोर्ब्स ने। जब डब्बे को पता चला, फोर्ब्स ने ऐसा बोला, बोलता है एक भी गलती नहीं निकाल, मतलब एक गलती मानने को तैयार नहीं। हमारा डायलॉग है, एरर इज हॉरर, डोंट गो टू मिरर, इट इज डेंजर। और हम लोग क्या बोलते हैं? अरे इंसान में गलती हो गई, अरे कल डॉक्टर बोलेगा मेरी पहली गलती है, तेरी पहली गलती, उसके आखिरी सांस है, उसका क्या? ऐसा चलेगा दोस्तों? नहीं चलेगा। आप शाम को मान लो कंपनी 9 बजे बंद करते हो, सर जो सुबह का 9 बजे आने वाला कस्टमर है उतना ही इंपॉर्टेंट रात को 9 बजे वाला है। आप थक गए बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपके लिए दिन भर के कस्टमर है, उसके लिए पहला ट्रांजैक्शन है यार दिन भर का। इट्स अ फैक्ट। सो दोस्तों बिजनेस तभी होता है, और हम तो सर 6 सिग्मा वाले। क्विकली सुनाता हूं, किसको समझता है थोड़ा सा तो दे विल एंजॉय। सर 6 सिग्मा मतलब जो अपने काम में मिस्टेक नहीं करता है, ऐसी कंपनी को 6 सिग्मा देते हैं। पता है 6 सिग्मा कैसे मिला सर? 1999 में सीके प्रहलाद साहब जो नहीं रहे, उन्होंने 4 लोगों को दिल्ली से मुंबई भेजा रिसर्च करने के लिए। 4 दिन रिसर्च किया, प्रोजेक्ट बनाया, दिल्ली गए। 3 महीने बाद फोन आया दिल्ली से, डब्बा वाला यू गॉट 6 सिग्मा। डबल बोलता है 6 सिग्मा क्या मालूम नहीं। बोले बहुत बड़ा सम्मान है। बोले क्या करे? बोले आपको मिला है। डबल बोलता ओके भेज दो।
अरे बीएनआई भेजता नहीं सम्मान, बोलते आके ले जा, वो देगा क्या वहां? बोले नहीं, हम लोग मुंबई आ रहे डब्बा वाला, प्लीज कम, इट्स अ वेरी बिग ऑनर. अब ऑन द डे ऑफ ऑनर डब्बा वाला वांट टू गो टू कलेक्ट दैट ऑनर. डब्बा वाला डोंट नो सिक्स सिग्मा क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि दिल्ली वाला बहुत बड़ा सम्मान है. बिकॉज दिल्ली वाला बहुत बड़ा सम्मान है, 16 डब्बा वाला वेंट टू कलेक्ट सिक्स सिग्मा. 16 लोग गए, बड़ा सम्मान है ना. और जब मंच पर गए तो उनको सिक्स सिग्मा मतलब ऐसा बोला, सर ये सिक्स सिग्मा है. वो प्रेसिडेंट बोलता है क्या है ये? बोले सिक्स सिग्मा. पता है बाकी डब्बे वाला क्या बोलते हैं? साहब 4 टैक्सी का पैसा बर्बाद किया, इट इज यूजलेस. Because they are not working for Six Sigma, they are working for customer satisfaction. भारत की पहली कंपनी who got Six Sigma, that is मुंबई डब्बा वाला, भारत की पहली कंपनी. दोस्तों, हमारे दादाजी बोला करते थे, मांगे मिले ना भिक, बिन मांगे मिले मोती. है मैं राइट? आजकल अगेन मैं यूथ को मैं कहीं नाम लूंगा तो मैंने पहले ही बोल दिया, माय डियर, डोंट टेक अदरवाइज. और हर स्पीकर ये चाहता है कि आपके अंदर बदलाव आए, आप बहुत अच्छे हो और अच्छे हो और अच्छे हो. दैट्स इट. क्योंकि आने वाला हर पल हमारे लिए सर अच्छा होना चाहिए ना. वी वांट दैट. एवरी फादर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट दैट. सर आजकल यूथ में एक शब्द है रिकॉग्निशन, मुझे उसका मीनिंग नहीं समझता है. पता है कमाल है, मुझे यूथ को दिया सेमिनार भी 17-18 दिन पहले. एक था, कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा मैं, एक यूथ. अब क्या है, मैं बोलता हूँ बाहर आके पूछना कुछ क्वेश्चन है तो, क्योंकि अंदर डरते हैं कंपनी में पूछने के लोग. कुछ एक बंदा बाहर मिला मुझे, सर आपने बहुत अच्छा बोला रिकॉग्निशन. बोला हाँ सर, मेरा दर्द कुछ और है. मला पता क्या बोलता है? सर मैं इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं, सारा क्रेडिट मेरा बॉस लेके जाता है. क्रेडिट बॉस लेके जाता है? मेरा तनख्वाह कौन लेता है? सैलरी कौन लेता है? सर मैं लेता हूं. तो पैसे लेके निकलना भाई, यू बॉदर. कौन क्या सोचता है? कमाल है. आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बीएनआई ने मुझे सारी फैसिलिटी देना, गाड़ी दी, बोलने का पैसा दिया, सम्मान देगा जरूरी है क्या? कमाल है. इज इट गुड? हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते साहब. नंबर 2, ताली बजाना. मैं बोलूंगा क्या? पटे तो बोल ले तो निकल जाऊंगा मैं. अरे सर ताली कब बजाएंगे? आप अच्छे तो बजाएंगे ना सर. समय लगता साहब. हमको सिक्स सिग्मा साहब 100 साल के बाद मिला. 100 साल के बाद काम तो करिए. मेरा दावा है, इफ यू वर्क कंसिस्टेंटली 100% यू विल रिकॉग्नाइज. 100%. समय दो यार. और सर ये तो देखो ना सर, पैसा सर एक महीने का 600-700 रुपया, सर एक दिन का 20-22-25 रुपया होता है. सर मुंबई में, सूरत में कुरियर स्मॉल एनवेलप रिक्वायर 40 रुपीज. कितना कमाता है? 15,000. सर एवरेज में भी 20,000. कैन इमेजिन? सर बोनस, हमको एक महीने का बोनस चाहिए. आई एम सॉरी, सम कस्टमर डू नॉट पे बोनस. आई आस्क्ड द वाला, दिस कस्टमर नॉट पे बोनस. बंद कर दे. पता क्या बोलता है? सर कस्टमर मेरा भगवान है, मैं अपने भगवान को खाने से कैसे रोकूं? मेरा भगवान, तेरे भगवान ने बोनस नहीं दिया. पता क्या बोलता है? पवन जी उसने एक महीने का बोनस नहीं दिया, 12 महीने का पगार दिया ना. बोले एक महीने के बोनस के लिए डिब्बा बंद कर दूंगा तो 12 महीने को खो दूंगा. What you to sacrifice? 1 month or 12 months? 1 month. And because of that, in 130 years, no strike record, 100% work, 100%. सर क्या है ये? जुनून है, नशा है, वर्किंग है, सेटिस्फैक्शन है. लोग बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन. एक दो एग्जांपल देता हूं मैं, सुनना बहुत मजा आएगा आपको. मैंने पूछा कस्टमर को कि मैंने इसमें पीएचडी की है, आई डन 9 years रिसर्च. एक कस्टमर को पूछा मैंने, साहब कैन यू टेल मी डब्बा वाला कैसा काम करता है? पता है व्हाट ही टोल्ड? सर एक्सेलेंट. मैंने व्हाट एक्सेलेंट? टिफिन इज योर, फूड इज योर, डब्बा वाला सिंपली डिलीवर. कस्टमर बोलता है सर यू नॉट सिंपली डिलीवरिंग फूड. देन कस्टमर टोल्ड, जब मैं 6 बजे घर से निकलता हूं तो समटाइम कस्टमर फॉरगेट हिज मोबाइल स्पेक्टेकल एट होम. देन 9 o'clock कस्टमर वाइफ पुट हस्बैंड मोबाइल इन लंच बॉक्स एंड डब्बा वाला डिलीवर अलॉन्ग विथ फूड, मोबाइल इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर इन ऑफिस. कैन इमेजिन दिस? दूसरा कस्टमर बोलता है सर, बोले बहुत ईमानदार लोग हैं. मतलब बेईमान कैसा होगा? तेरा खाना खा लेगा क्या? सुनना किस्सा. कस्टमर बोलता है सर व्हेन वी गेट सैलरी इन कैश, आवर कस्टमर कैनॉट कैरी सैलरी इन पॉकेट. व्हाई? इट कैन बी स्टोलन इन क्राउडेड लोकल ट्रेन. पता है हमारा कस्टमर क्या करता है सर? जब ही गेट सैलरी इन कैश, आफ्टर ईटिंग फूड ही पुट सैलरी इन एम्प्टी टिफिन एंड डब्बा वाला डिलीवर एम्प्टी टिफिन विथ सैलरी इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर वाइफ सेफली इन द इवनिंग. Because in 130 years, Dabala never opened tiffin. Customer 100% faith.
आई एम सॉरी वी आर वर्किंग अंडर सीसीटीवी. व्हाट मैन, काय का सीसीटीवी? इज इट गुड? Sir, I am surprising how that small device can control this big device. मुझे कंट्रोल करेगा तू इतना सा मशीन? Friend, let CCTV work, but you don't require because you are the best. You are the best. मुझे डर ही नहीं यार, मैं अच्छा काम कर रहा हूं. इसके लिए सोचो जो पैसा. सर कितने कस्टमर सोना चांदी, कुछ कस्टमर की वाइफ लव लेटर पता नहीं क्या क्या भेजते हैं. सांभलो एक लव लेटर एग्जाम्पल, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत बड़ा मैसेज है. एक कस्टमर बोलता है पवन जी मैं डबल को भगवान मानता हूं. मैंने क्या हो गया? सुनना किस्सा. दैट कस्टमर टोल्ड, बोले पवन जी कुछ दिनों पहले मेरा बीवी का झगड़ा हो गया. मैंने छोटी बात है. नहीं सर बड़ी बात है. मैंने अच्छा बता. तो नेक्स्ट इतना झगड़ा हुआ, नेक्स्ट डे ही स्कोल्ड एंड टोल्ड वाइफ डाइवोर्स. इंडियन हस्बैंड एंग्री यंग मैन. और सेकंड क्वालिटी आपको इंडियन हस्बैंड की मालूम है? सॉरी हस्बैंड, हमारे इंडियन हस्बैंड टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा. कितने ईमानदार है, मतलब फैक्ट है. सेम थिंग हैपेंड. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग he scolded and told and went office. 9 o'clock Dabawala came home. Indian wife दिल के मानता नहीं. Despite dispute she delivered tiffin Dabawala and Dabawala delivered in office. In lunch time husband saw the tiffin. Morning angry young man become the hungry young man. So he opened the tiffin. When he opened the tiffin, on top of tiffin, written love letter from wife. Oh my beloved husband, I love you a lot. Forget what happened in the morning. Eat my food, it is for you. Message given by wife to husband, delivered by. अगली स्टोरी सुनना. हस्बैंड खाना खाता है. हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है. After eating food, husband brought 2 cinema tickets, put in empty tiffin and written love letter to wife. मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ. इसका मतलब क्या? मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना. दो आत्माओं का मिलन करने वाला. दोस्तों बिलीव मी, मैं तो पहले मैं बोलते बोलते रोता था बहुत. पहले 4-5 साल तो लोग मुझे पागल बोलते थे. बिकॉज फिर रियली मैं आज मेरा सौभाग्य है कि इवन मेरी बिटिया सामने है, हमारे जवाई है. आज बीएनआई की वजह से मुझे आज पहली बार इनको मिलने का यहाँ मौका मिला. मैं कभी इनके घर पे आया नहीं. इट्स माई प्रिविलेज. तो जो बोलूंगा सच है दोस्तों. मैं ज्वाइंट फैमिली में पड़ा बड़ा हूँ. मुझे पता है दोस्तों कि कितनी तकलीफ होती है जब घर में कुछ काम होता है. इमोशनली प्रैक्टिकल जो भी है हम लोग समझ नहीं पाते दोस्तों. आपको नहीं पता, सॉरी अगेन बोल रहा हूं मैं, जब आप काम करते हो दोस्तों, सम टाइम यू चेंज द लाइफ ऑफ योर कस्टमर. यू डोंट नो. एम आई राइट? इट्स अ फैक्ट. जबकि हमने पैसा कमाया, सर्विस दिया, हमारा कमिटमेंट था, इसके बावजूद सम कस्टमर बिलीव यू आर गॉड फॉर हिम और हर. एम आई राइट? तो दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी. दोस्तों अब आपको तो पता है दोस्तों, कोविड सिचुएशन, मैं 2-3 मिनट इसके बारे में बोलूंगा, ज्यादा समय की पाबंदी इसके लिए. बट फिर भी यू नो फ्रेंड, कोविड में क्या था आप भी जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. सारी ट्रेनें बंद थी सर. कस्टमर रोड फ्रॉम था, स्कूल क्लोज. 2 लाख डिब्बों में 50,000 हमारे स्कूल चिल्ड्रन है. कैन इमेजिन? 50,000 स्कूल चिल्ड्रन. सर स्कूल बंद, कस्टमर बंद. क्या क्या सर, कितने तकलीफ है सर, क्या बताएं हम लोग. सर स्टार्टेड ओन कुरियर सर्विस, जो कभी नहीं हुआ अब हुआ. 130 साल में कभी नहीं हुआ अब हुआ. मेरा मैसेज क्या है, धंधे वाले या काम वाले दोस्तों, पीछे हटना नहीं. कई लोग बोलते हैं बहुत तकलीफ है. सॉरी दोस्तों, मेरी आज 60 साल की उम्र हो गई. मैंने वो दौर देखा है मेरे परिवार में. सर खाने को पैसे नहीं थे, खाने को नहीं थे. कैन इमेजिन? मुझे बताइए दोस्तों, आई एम सॉरी अदरवाइज मत लेना, लॉकडाउन में सर कोई भूखा नहीं सोया है. क्यों? देने वाले कई हाथ थे. एम आई राइट? सर हम तब तो भूखे सोते थे. तो एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति साहब तब ज्यादा थी. इसमें क्या डर रहे हैं? डरो मत. क्यों? आज आपको सपोर्ट करने वाले कई हाथ है और सबसे बड़ा हाथ बीएनआई है. यस, बीएनआई इज देयर फॉर यू. तो कैसे डरेंगे यार? आप डर के घर में कैसे रहोगे? नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा. आने दो परिस्थिति. और मैंने बोला ना, सम टाइम एडवर्स सिचुएशन गिव अ लॉट ऑफ लर्निंग टू यू ऑल. And we open many doors. Same thing happened, friend. Not only this, we tie with these many Swiggy, Zomato, Amazon, जो कभी नहीं किया था. सर खुद का दबाव दिल से डिलीवरी चालू किया. सर कई लोगों से टाइप किया, उसमें होटल है, भोजनालय टाइप किया. क्यों? दे शुड डू इट. सर मूवर्स एंड पैकेट शुरू किया. कैन इमेजिन? बिकॉज दे आर द सोल्जर्स ऑफ शिवाजी महाराज. दे आर वेरी स्ट्रांग. दे आर वेरी स्ट्रांग.
दोस्तों अपनी ताकत को पहचानो। सर सॉरी, ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले शायद 40 वर्ष हो गए सर, मुझे याद नहीं कि कोई मैं 16-17 घंटे से कम काम करता हूं। काम नहीं है तो भी करता हूं। हाँ सर, हमने काम पैदा करना, मे बी एम्प्लॉयर मे बी एम्प्लॉई, दैट डजंट मेक डिफरेंस बिकॉज लाइफ इज माइन। मेरा अपना जीवन है यार, अपना जीवन है, हमको काम पैदा करना होगा। सर मैसेज दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं सर मैं। दोस्तों हमने तो क्या किया अभी, विमेन एंटरप्रेन्योर। मैम व्हाट इज आई एम प्लानिंग, आई टोल्ड आई एम प्रपोजिंग डबल योर वाइफ शुड कम इनटू कुकिंग बिजनेस। लोग क्या बोलते हैं मुझे, पवन जी मुंबई में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है। मैं बोलता है पहले हस्बैंड कस्टमर था, अभी वाइफ भी कस्टमर है, डबल धंधा होगा। डरना क्या है, डरना क्यों है? लेकिन क्या होगा उसके लिए, मैं आई टोल्ड डबल वाइफ यू कम इनटू कुकिंग। जब वो कुकिंग करेंगे दोस्तों, डिलीवरी हस्बैंड करेगा और खाना बीवी बनाएंगी, डबल इनकम होगा। दोस्तों ये हमारा भारत देश चाहता है कि महिलाओं को हम और ऊंचा स्थान दे। सम्मान नहीं दोस्तों, स्थान। सम्मान तो सबको देना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा एवरीवन शुड बी रिगार्डेड डिफरेंट। दोस्तों रियली इट्स माय प्लेजर टू टेल यू फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड अंडर केसीटी स्किल्स। क्यों? स्किल इंडिया में वी वांट टू प्ले मेनी रोल्स। उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, एटीट्यूड, अप्रोच, डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे बड़ा है। वीडियो देखना सर, आवाज बढ़ाना, मैं आपको वीडियो बताता हूं ये कैसे लोग वेट कैरी करते हैं। देखो आवाज आवाज। Are a close-knit group of 5,000 people of stamina, values and 62-year-old, they are engaged in 72-year-old, collecting tiffin boxes filled with homemade food from different houses and distributing them at the workplaces of the earning members of these families. 87-year-old, And returning 87-year-old, empty can you boxes imagine? 87-year-old still working because they never retired, never such retired. lunches to सर क्या है 200,000 ये? people मैंने working कहा ना, in ये काम different करने का नशा है organizations. दोस्तों। यदि आपको नशा है ना, थकान कभी महसूस होंगे नहीं। दोस्तों ये कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली बताता हूं, समय का मैं ध्यान देना, और जब मैं कोडिंग बताऊंगा तो ट्राई टू विजुअलाइज माय लोकल ट्रेन मैप। मैंने जो लोकल ट्रेन मैप बताया था ना, उसको जरा देखना अपनी नजर में, आपको कोडिंग समझ में आएगा। सर कोडिंग यहां लिखते हैं हम लोग। मैं आपको एक डब्बे का कोडिंग समझाऊंगा, 2 लाख डिब्बे समझ जाना ऐसे डिलीवर होते हैं। व्हाट इज वीएलपी? वीएलपी विले पार्ले, जहां से डिब्बा कलेक्ट करते हैं। ई मतलब कौन? डब्बा वाला जो विले पार्ले से डिब्बा उठाएगा। और 3 मतलब क्या? नरीमन पॉइंट, वर्किंग एरिया। ई नंबर का बंदा विले पार्ले से डिब्बा उठाएगा, ये डिब्बा विले पार्ले से नरीमन पॉइंट ट्रैवल करेगा, 5-6 बार मिक्स होकर पहुंचेगा नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट पहुंचने के बाद इसको उठाएगा कौन? 9 नंबर का डब्बे वाला। वो उठा के कहां देगा? EX माने एक्सप्रेस टावर, 12 माने 12 मंजिल, बिकॉज दिस कस्टमर ऑफिस इज ऑन 12th फ्लोर। विदाउट नेम एड्रेस, विदाउट नेम एंड एड्रेस, टिफिन आपके फ्लोर पे डिलीवर हो गया। व्हाई नॉट ऑन योर टेबल? बिकॉज योर कंपनी डू नॉट अलाउ ऑफ सिक्योरिटी, दे आस्क यू टू डिलीवर ऑन फ्लोर। मैं मानता हूं कुछ लोग देख रहे होंगे डिसोजा। सर डिसोजा कौन है? कस्टमर। ये किसने लिखा? डिसोजा कस्टमर अपना खुद का नाम लिखता है। क्यों? मिस्टर कस्टमर डिसोजा अपना खुद का डिब्बा पहचान नहीं पाता है, नाम लिखता है। मेरा मैसेज सुनना, कस्टमर को पता नहीं है लेकिन डब्बे वालों को पता है। दैट इज बिजनेस। तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए तुमको समझना चाहिए बॉस। दैट इज बिजनेसमैन, दैट इज BNI। कमाल है यार, वो पैसा देता है। सर मैंने कहा ना, मुझे मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि मैं टीचर हूं। सर टीचर को पता होना चाहिए बच्चे को क्या चाहिए। वो थोड़ी मांगेगा ये पढ़ा वो करा। वैसे दोस्तों पापा मम्मी आपकी बातों को समझती नहीं है। कैसे समझती है? दोस्तों हम बिजनेस में कस्टमर के माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, ये भूलना नहीं आपने। जरा सी भी आपने तकलीफ दी कस्टमर को, सर सॉरी, ईश्वर करे आपको तकलीफ कभी ना हो, लेकिन सर वो रिपे होता है, रिपे होता है। रियली फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसे ही करते हैं सर। देखना कोडिंग कैसे करते हैं। सर आवाज देना। Every day with practically no mix-ups at all. Simple matches they become the brush. Simple piece of paper become the brush. Resources may not be available. They use those resources which are available. बात खत्म। Empty 10 on the top and few सर प्रॉब्लम क्या है? tables below. सर ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो चीजें आपको यूज करना है सर, सॉरी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। पता है ये डब्बा वालों को मैंने बोला
कह रहे क्या करता है पता है, जब आप डिब्बा धोते हो घर पर तो हमारा कभी कभी कोडिंग प्रॉपर दिखता नहीं है। जब किसी डेवलपर को पता चला कोडिंग प्रॉपर नहीं है, वो जेब से कलर निकालेगा और फिंगर से ओवरराइट करेगा। ही विल नॉट से दिस इज नॉट माय जॉब, ही विल डू द जॉब। क्यों? करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट सर। रियली जब मैं देखता हूं हर काम में दोस्तों, सॉरी मेरा कोई मकसद नहीं कि फोटो वाले मेरा अच्छा फोटो निकाले, बट छोटे से रियली सर मैं देखता हूं इनकी नजर पता नहीं कितनी तेज होती है। वो गेस्ट किसको पता बाद में चलता है, इनको पहले पता चलता है, आ गया भागा बंदा उधर। व्हाई? कस्टमर, दे नो आई वांट टू टैप माय कस्टमर इन एवरी कॉर्नर। सेम दोस्तों हमारा है। मैं 3 वीडियो बताता हूं, समय कम है, बगैर बोले बताऊंगा, ध्यान देना। That 200,000 of them are having it on all working days on time, thanks to the Mumbai Dabbawalas. The shelf life of these lunches are just 4 to 5 hours. Therefore, watch the spontaneous sorting. Everyone is picking up his tiffins as per his delivery areas. Tiffins for areas with more density are transported on carts collectively. Some tiffins are on bicycles and some are personally taken by hand. From here, one tiffin box shifts hands in transit at least 6 times. Standing near the running local train and doing sorting, taking risk of life because to save time. दोस्तों that is businessman. दोस्तों ऐसे तो कई बातें हैं और आपको पता है कई डॉक्यूमेंट्री की है। बीबीसी, यूटीवी, एमटीवी, जीटीवी, ए टू जेड टीवी ऑफ वर्ल्ड हैड डॉक्यूमेंटेड डब्बावालास बिकॉज दे वर्क एक्सेलेंट। सर कई सम्मान मिले, 6 सिग्मा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दे गॉट आईएसओ सर्टिफिकेट विदाउट एप्लीकेशन। कैन इमेजिन? पता ही नहीं किधर एप्लीकेशन करना है, अंश पता ही नहीं क्या करना है, दे नॉट अप्लाइड। आईएसओ वाला बोला यू आर आईएसओ, तो किधर रखा है मालूम ही नहीं आईएसओ। बंदा बोलता है सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज माय आईएसओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों ऐसा मेरे पास बहुत बोलने जैसा है, मेरे पास तो कई हर एक फोटो मेरा, हर एक स्क्रीन का शॉट मेरा बहुत मैसेजेस है, लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास लास्ट के 6 मिनट बचे हैं। आई विल फिनिश इन 6 मिनट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों रही में दोस्तों ये मेरा सौभाग्य, मैंने पीएचडी की, मेरे लाइफ पर पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंट्स बनी है, कितना है, लेकिन दोस्तों वो मायने नहीं करता है। लेकिन बिलीव में दोस्तों 1980 का मुझे वो दिन याद है, मुंबई में मेरे पास वड़ा पाव खाने के लिए पैसा नहीं था और उस समय वड़ा पाव की कीमत 25 पैसा थी। ये हमारे सबके दादाजी की, शायद सबके मतलब नॉट ऑल एवरीवन, कई दादाओं की ये हकीकत है, घर घर की कहानी है कि पहले उनके पास खाने को नहीं था, आज खिलाने के लिए। क्यों? इतनी मेहनत हम लोगों ने की, इतनी मेहनत की हम लोगों ने। हाँ सर हमारे पास बीएनआई जैसी संस्था चलाने के लिए ताकत है। सर संस्था की ताकत कौन होता है? मेंबर्स। एम आई राइट सर? एवरी मेंबर इज द पावर ऑफ दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सर वी आर डूइंग दैट। ऐसे तो बहुत है, लेकिन फिर भी लेट मी टॉक अबाउट प्रिंस चार्ल्स। सर 2003 में प्रिंस चार्ल्स आना चाहते थे, बिफोर प्रिंस चार्ल्स सपोज टू कम, सर 6 मंथ प्रायर जितेंद्र जैन ब्रिटिश कॉन्सुलेट फोन डब्बावाला, डब्बावाला प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। डब्बावाला बोलता है प्रिंस चार्ल्स कौन है मालूम नहीं। उनको क्या पता प्रिंस चार्ल्स कौन है? कौन से? बोलता है सर वो लंदन के राजा है। डब्बावाला बोलता है लंदन के राजा है, ठीक है। डब्बावाला टोल ओके वी विल अलाउ हिम टू कम, नो प्रॉब्लम। डब्बावाला अलाउ प्रिंस चार्ल्स टू कम, लेकिन बोले साहब, डब्बावाला बोलता है हमारी 2 शर्तें। नंबर 1 हम केवल 20 मिनट देंगे प्रिंस चार्ल्स को। क्यों? हम बिजी है, टाइम नहीं है। नंबर 2 वी विल नॉट गो टू प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स टू कम टू अस। कहां पर? चर्चगेट के फुटपाथ पर। अरे वो कौन सा बोलता है ऐसी बात करते हो? पता है डब्बावाला क्या बोलता है? सर वो लंदन के राजा है, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है। वी कैन नॉट डिस्टर्ब आवर कस्टमर फॉर 1 किंग, दैट्स द रीजन, दीज आर द 2 रिक्वेस्ट। साहब प्रूव किया, वर्क इज वर्शिप, कस्टमर इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, कस्टमर इज गॉड। मैंने कहा दोस्तों ये आपके आचरण में आना चाहिए। सर प्लीज, मैं जितने जोर से बोल रहा हूं, ठोक के बोल रहा हूं, बिलीव मी, नॉट बिकॉज माई फैमिली इज हियर, सर बिलीव मी 100% आपको चीर के भी देखेंगे। सर मैं जो बोल रहा हूं वैसा हूं, इसके लिए ठोक के बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। वैसे बिजनेस में सर जो आप बोलते हो ना, करना चाहिए, दैट्स इट। सर दुनिया तुम्हारी यार, कस्टमर तो हमारे पीछे पागल है। वो बोलता है 1 रुपया ज्यादा ले, सर्विस दे, अच्छा दे, एम आई राइट? इट्स अ फैक्ट। दोस्तों वो हमारी ईमानदारी खुद से है, खुद से ईमानदारी है। मेरे कहा दोस्तों वाई यूनिट सीसीटीवी, बॉस मैं खुद बेस्ट हूं,
तो बहुत सा बोलने जैसा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पता होगा प्रिंस सर की शादी में 3 लोगों को न्योता था भारत से। सर वो 3 लोगों में 2 डब्बे वाले थे। कैन इमेजिन, प्रिंस आज की शादी में, और एक राजस्थान की महारानी पद्मिनी देवी। कैन इमेजिन फ्रेंड। और फिर हमको जब पता चला प्रिंस की शादी है, हम दोस्त बन गए थे प्रिंस चार्ल्स और हम। मैं 3 कंट्री में, इटली का किस्सा तो बहुत बड़ा है, सुना नहीं पाऊंगा दोस्तों। कैन इमेजिन, एक लंदन के राजा, एक हम इसको चाकर मानी बोलते हैं मुंबई में, एक खाना देने वाला बंदे से इतना प्रभावित। सर उससे प्रभावित नहीं है, उसके काम से प्रभावित है, उसके काम से प्रभावित। सर मेरे ऑफिस में लिखा है, ऐसे काम करो नाम हो जाए, ऐसे नाम करो काम हो जाए। फैक्ट है साहब, ये फैक्ट है। सर आजकल बुलाते हैं ना, आई एम सॉरी धारा मैम, बहुत छीन छीन के देखते हैं गूगल में, यूट्यूब पर, पवन अग्रवाल कैसे बोलता है, कैसे बोलता है। पट्टा तो बुलाते हैं ना, तो नहीं बुलाते हैं। हाँ, एम आई राइट। वैसे हमारा कस्टमर है सर, जा जाके देखता है कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, फिर तुम्हारे पास आता है। सर सोचिए सर, जब वो आपके पास आता है, मतलब तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, वो भरोसा करता है। सर वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फ्रेंड्स। और आपने वो, मुझे मूवी याद नहीं है कौन सी थी, शाहरुख खान का डायलॉग मुझे याद है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और काम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। एम आई राइट? ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है दोस्तों। ऐसे तो बनाना बहुत कहानी है, एनीवे। लेकिन दोस्तों जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई तो 3 लोग गए, 2 इंडियन थे, मतलब सर 2 डब्बा वाला थे। और जब सर शादी हुई सर, तो जाने के पहले 3 दिन पहले मुझे फोन आता है डब्बा वाला, सर बुरी खबर है, हम लोग शादी में नहीं जाएंगे। मतलब क्या होगा, क्या बुरी खबर है? पता डब्बा वाला क्या बोलता है, सर जिस शादी में जा रहे हैं वो प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी है। अच्छा, और आपको पता है हम जो डब्बा वाले मारा करिए, विठ्ठल भगवान के भक्त है, और ये बहुत मतलब कई उसूल है, दूसरी शादी करते नहीं और दूसरी शादी करने वाले के शादी में जाते नहीं। अब मुझे टेंशन आ गया, बिकॉज आई वॉज इंटरेक्टिंग बकिंगहैम पैलेस, प्रिंस चार्ल्स के इनसे बात मैं कर रहा हूं 15 बार। थैंक्स इंडियन जुगाड़ तो हमारे पास बहुत है। मुझे शाम तक डायलॉग याद आ गया, मैंने बोला डब्बा वाला, यू आर इन्वाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डब्बा वाला, दिस इज फर्स्ट मैरिज। ओ फर्स्ट मैरिज, अब हम लोग जाएंगे। फिर वो चले गए। सर क्यों? प्रिंस चार्ल्स के प्रति सम्मान। बिकॉज प्रिंस चार्ल्स केम टू मुंबई, दे टच, प्रिंस चार्ल्स टच डब्बावाला लाइफ एंड दे रिकॉग्नाइज ग्लोबली। ग्लोबली दोस्तों, तुम्हारे मेरे जीवन में किसी ने टच किया है, मे बी BNI, मे बी माँ बाप, मे बी दोस्त, पता नहीं। डोंट फॉरगेट दैट टच टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। डोंट फॉरगेट दैट, दैट इज सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रिकॉग्निशन। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बोलते हैं दोस्तों छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़े मायने कर जाती है, बहुत मायने कर जाती है। ऐसा तो बहुत है, बट एनीवे दोस्तों, यहाँ फिर रिचर्ड ब्रैंसन, पता नहीं कौन कौन आया। यस दोस्तों, ये मैं लॉकडाउन जब लगा दोस्तों, रियली मेरा सौभाग्य है, मैं 10 दिन पहले अहमदाबाद में था सर, 1.25 घंटा लेक्चर था मेरा। संघवी साहब ऐसे बैठे थे, और जब लेक्चर खत्म हुआ, जैसे साहब ने मेरा सम्मान किया, ये साहब ने आकर सम्मान किया, तब पता चला ये गौतम अदानी साहब है। मुझे क्या मालूम कौन है, रियली सर। हमारे जमाई पूछ रहे, बोले पापा जी क्या कौन है? मालूम नहीं भाई, बुलाया है, टिकट फुकट में दिया है, आ रहा हूं, खत्म। मुझे क्या मालूम कौन क्या है। नंबर 2, बॉस मेरे लिए हर एक सुनने वाला, कितने सुनने वाले खड़े हैं यार, हर एक सुनने वाला मेरे लिए भगवान है, रियली। कि आप इतना समय खर्च करके मुझे सुनने आते हैं, तो आई हैव रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कैन इमेजिन फ्रेंड्स। और फिर साहब ने बोला, मुझे उनके ऑफिस से फोन आया, सर आपको क्या वो ट्वीट बोलते गए इसको, ट्विटर से कुछ। मैं ठीक है यार, जो भी है। एनीवे दोस्तों ऐसे तो बहुत है सर, मैं ऐसे अरेबियन कंट्री बहुत लेक्चर दिया हूं मैं सर। ये लोग हमारे भारत को इतना मानते हैं ना, देखो ये बड़ा अरेबियन बनता, जब मेरे स्टेज पर आया तो पूरा तामझाम था उनका, अरेबियन का ड्रेस कोड। जब मैंने उनको कैप दिया, पवन सर रुको, सारा तामझाम उतारा और अपनी टोपी पहनी। क्यों? भारत की सम्मान, भारत की सम्मान, हमारी गांधी कैप। दोस्तों हमारे, सॉरी मैं किसको डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, हमारे भारतवासियों को सर बहुत सम्मान है, बशर्ते हमको रखना होगा। ऐसे तो सही में, मतलब इट्स अ फैक्ट फ्रेंड। ऐसे मैं कई जगह जाता हूं दोस्तों, मतलब क्रिकेटर हो, बड़े 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 लोग हो सर। लास्ट 3 minutes आई हैव लेफ्ट, और 2.5 minutes सर। वी वर्क ऑन HIV/AIDS, वी वर्क स्वच्छ भारत अभियान। सर बिलीव मी, जब 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 100
ब्रांड एम्बेसडर चुना स्वच्छ भारत का, सर मेरा सौभाग्य है, मैं उसमें से एक हूं. इट्स माय प्रिविलेज दैट प्रधानमंत्री ने डब्बे वालों को इतना सम्मान दिया. पहले प्रधानमंत्री जो डब्बे वालों को इतना सम्मान दे चुके. कैन इमेजिन. सर हम तो न्यूट्रल है, हमारे भारत देश कोई भी किसी पार्टी का कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों रिकॉग्निशन यार इतनी बड़ी बात है. ऐसे तो बहुत है दोस्तों, रियली फ्रेंड्स. एंड वी वर्क फॉर योगा. सर कपड़ा बैंक, रोटी बैंक, एक किस्सा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना. यूथ ध्यान से सुनना. यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, लेकिन शेयर माय डब्बा नाम ध्यान रखना. सर पता है जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब डिब्बा वाला खाली डिब्बा वापस लेता है तो कभी कभी कोई कस्टमर खाना नहीं खाता है. क्यों? पेट भरा होगा, खा चुका होगा, समय नहीं होगा. हमको पता है कि कस्टमर ने खाना नहीं खाया, लेकिन हमको यह भी पता है कि जब तक डिब्बा घर पर जाएगा शाम तक खाना खाने लायक नहीं रहेगा. तो क्या करें? वी आर नॉट अलाउड टू ओपन टिफिन. फिर हमने क्या किया सर, एक स्टिकर बनाया शेयर माय डिब्बा, और हमने वो 10-10 स्टिकर बांट दिए उन कस्टमर को जो कभी कभी खाना नहीं खाते. हमने अपील की, सर जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो, आप चाहते हो कोई और खा ले, यहां पर स्टिकर लगाओ, शेयर माय डब्बा स्टिकर. सर आज थैंक यू, ग्रेट, एक्सेलेंट. प्लीज प्लीज, प्रिविलेज एंड ऑनर. दोस्तों देखा, ये हमारे प्रति सम्मान है. अपने काम का हमको कितना एहसास होता है. हाँ यार हम ऐसा करते हैं, हम सर ये करते, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं साहब. आज रोज 400 गरीब बच्चे डब्बा खाते हैं जो कस्टमर ने नहीं खाया, और डब्बा वाला डिलीवर करता है. 400 गरीब लोग. क्या है ये सर? सर सोशल कमिटमेंट. मैंने कहा ना आज हमारे पास खिलाने के लिए ताकत है. ऐसे तो बहुत है सर. फिर हमने स्टार्ट किया रोटी बैंक. सर सीरियसली एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं 20 सेकंड रखता हूं और पढ़ना मुझे बोलना इसमें से ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो तुम्हारे पास मेरे पास नहीं है. सर मेरा दावा है हमारे पास ये 30 नहीं 32, 35, 40 क्वालिटीज है. ये 20 तो सर एग्जाम्पल है. प्रोवाइडेड यू शुड ब्रिंग योर क्वालिटी इनटू प्रैक्टिस. सर बीएनआई ने मान लो हम लोग मेंबर बने, हमको बताना होगा मैं कितना एक्टिव हूं. बिजनेस में कस्टमर को बताना होगा मैं कितना अच्छा हूं. सर अभी देखिए ना, मैं 2009 में आई वांट डब्बावाला शुड लर्न कंप्यूटर. तो मैंने क्या बोला, डब्बावाला आपको कंप्यूटर सीखना होगा. 1 साल मेहनत किया. अब मुझे ही पता है यार 80 साल का बंदा कहां से कंप्यूटर सीखेगा, लेकिन सीखना होगा. नॉट रेडी. 1 साल के बाद मुझे आइडिया आई. मैंने अपने स्कूल में लकड़े की लोकल ट्रेन बनाई, हर एक कोच में पीसी रखा, इन्वाइटेड डब्बावाला. डब्बावाला टोल इट्स अ लोकल ट्रेन, नाउ वी विल कम टू लर्न कंप्यूटर. ओके नो प्रॉब्लम. मैंने आ जा भाई. फिर आई टोल्ड डब्बावाला यू शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज हमारे मुंबई में कस्टमर फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, केरला, दे डोंट नो हिंदी मराठी. आई टोल्ड डब्बावाला यू शुड लर्न इंग्लिश. टू टीच इंग्लिश आई मेड वुडन क्लासरूम्स और लोकल ट्रेन. डब्बावाला इस ट्रेन में बैठ के अंग्रेजी पढ़ते हैं. नो प्रॉब्लम. मेरा मैसेज क्या है बिजनेसमैन, सपोज your people are not working, you should give them atmosphere to work, they will work. 100% they will work. They will work. सर मेरा सौभाग्य है दोस्तों, बिलीव मी, मैं सबके सामने बोलता हूं सर, आपके संस्थान मतलब आप लोगों ने सर मुझे लेक्चर का पैसा भी दिया है. कैन इमेजिन. सर यकीन मानिए सर, मैं जब स्पीकर करके पैसा लेता हूं सर 100% आई स्पेंड दिस मनी फॉर गर्ल चिल्ड्रन एजुकेशन इन मुंबई. आज 5000 बच्चे पढ़ते हैं सर, 5000 चिल्ड्रन. It's my privilege and honor. और सर इतना नहीं, in this my family also included. Last 1 minute, सर ये मेरा बड़ा बेटा है चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष अग्रवाल, ये छोटा सर आकाश अग्रवाल. आधा मिनट बताता हूँ, घर पे बोलना अपने बच्चों को. सर मेरे बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया बम्बई में, बोलता है पापा अमेरिका जाना है. मैंने कहा के लिए? सर एमएस करने के लिए. पापा मैंने एमएस करने के लिए, अच्छा ठीक है. मैंने बोला 2 शर्तों पे भेजूंगा, 2 कंडीशन. नंबर 1 वापस आएगा, नंबर 2 अकेले आएगा तो जाना है. सॉरी दोस्तों, आज गुड़ी पड़वा है, मैं तारीफ से नहीं बोलूंगा. मैं बच्चों को बहुत, मैं आईआईटी, आईएम, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज कई जगह गया हूं दोस्तों. मैं कई बार रो रो के बोला बच्चों को, गिड़गिड़ा कर बोला हूं कि बच्चों कितना भी पढ़ो अपने माँ बाप को, अपने संस्कारों को मत भूलना, नहीं तो सब खत्म. नहीं तो खत्म दोस्तों. फायदा क्या यार, हमने पैसा कमाया, कल्चर नहीं रखा तो नहीं चलेगा दोस्तों. बिलीव मी फ्रेंड्स, उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला, ही केम बैक एंड ही इज अ टीचर. मेरे दोनों बेटे टीचर है. कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स. क्यों सर, मजा आता है ना, दैट्स इट.
So it's a privilege and honor, and that's the reason I'm doing this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, BNI. Thank you. Thank you for your love and affection. Thank you. Thank you, Ben. Thank you. Thank you. The Thank you, claps thank you. should not stop, please. What a wonderful speech. Thank you. Thank you. So Thank you. inspiring. Thank you. Thank you. Please, please, please. Thank you. Thank you. दोस्तों, कई दिनों बाद मेरे आंसू की धारा और पसीने की धारा बह रही है, क्योंकि बुलाने वाली भी धारा ही है ना, इसके लिए शायद. थैंक यू धारा मैम. आई एंजॉय लॉट टुडे. रियली તમે બધા એક નંબર છો, એક નંબર. મારો બિગ સેલ્યુટ તમે ઓલ. રિયલી ફ્રેન્ડ, તમે રિયલી મને ગુજરાતી ગમે છે बिकॉज मेरी माँ, पता नहीं कितने लोग वही बैठे हैं यहाँ सब. सर, सूरत के बाद नवापुर है, आपने गांव का नाम सुना होगा, माझा मामाचं गाव. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई नो गुजराती. मुझे 40 साल पहले बहुत अच्छी आती थी. 40 साल पहले मैं बम्बई चला गया और बिगड़ गया, गुजराती भूल गया. थैंक यू मैम. ओवर टू यू. तुमचा खूप खूप आभार पवन जी. एक मिनट मैम. An impactful मैम speech. एक मिनट है, एक मिनट. दोस्तों, अब क्या है, मेरे पास यदि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा स्टैंड है मैम, माइक का कोई इश्यू ही नहीं, मेरा जेब स्टैंड है. दोस्तों, मैं गुप्ता जी या सर कुछ लोगों को मैं चाहता हूँ मंच पर आए, मैं इनको कैप से सम्मान करना चाहता हूँ सर. प्लीज, आई डोंट नो हु आर द लीडर्स. सर, मैं चाहूंगा कि आपके परिवार जो आया है उनको स्टेज पे बुलाएं. अरे सर प्लीज. दोस्तों, एक मिनट. और एक बंदा है, अशोक सर कहाँ है, हमारे एजुकेशन सेंटर के प्रिंसिपल अशोक परदेशी सर. जी प्लीज पधारें. आइए. आप प्लीज ऊपर स्टेज कोमल, पे पधारें. प्लीज प्लीज सर. थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा काम किया सर आज. मतलब ये फोटो भेजूंगा गांव में तो सर उनको बहुत मैं चाहता हूँ सर, आइए ना सर. धारा मैम, कैन यू हेल्प मी? सर जी आइए ना सर. देखना सर, कैप में और खूबसूरत लगेंगे, पहले से हैंडसम है. दोस्तों, मैं स्पेशल गिफ्ट लाया उनके लिए. सॉरी, सबके लिए नहीं ला पाया. आई ब्रॉट स्मॉल लंच बॉक्स एज अ टोकन ऑफ लव. हेलो सर. हेलो. मैं भी हमारे पवन चाचा के लिए ये बोलना चाहती हूँ. मुझे
हीरे की चमक होती है ना, तो वो चमकता इसलिए है, वो इसलिए सिर्फ ऊपर की चमक नहीं होती है, हीरा इसलिए चमकता है, वो इसलिए स्टैंड और मतलब इसीलिए वो पूरा चमकता है क्योंकि उसकी चमक सब तरह से होती है। ऐसे ही हमारे जो चाचा है, वो सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाली चमक नहीं है, उन्होंने हमको इतना प्यार, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर सब कुछ दिया है। तो ये जो चमक है ना, वो असली चमक है हीरे की, ये कोई दिखावे वाली चमक नहीं है। बस मैं यही हूँ। दोस्तों, हमारे बिजनेस में दो ट्रांसपोर्ट मैन है, एक लोकल ट्रेन और दूसरी बाइसिकल। मैं आज बीएनआई के लिए बाइसिकल गिफ्ट लेके आया हूं, एक बाइसिकल हमारी डब्बे वालों की। पवन जी, एक मिनट, परिवार के साथ में मैं चाहता हूं परिवार को एक एक मिनट।
Friends, we'll be starting with the next masterclass on LinkedIn very shortly. So please be in the room. Everyone, please wait back in the hall. We'll be starting with the next session in the next 5 minutes.
उसी को अपना प्रोफेशन बनाया. यस, अपनी कमजोरियों से सीखकर उसको प्रोफेशन बनाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं. ही इज वन ऑफ देम. सो यस, a formal introduction for Mr. Sagar Amlani. Sagar Amlani is a global speaker, productivity explorer, and an author. Though he has 16 plus years of professional experience on the productivity mindset, what sets him apart is his initial life struggles. These struggles made him learn the value of time, money, and education early in life. Also, these were the same challenges that became the foundation of Sagar's innate personality. His respect and gratitude towards his initial life challenges make him a unique person even after living in the slums. Yes, living in the slums. He believes in execution is the key ingredient for success, trained over 1800 plus professionals, creating result-oriented teams, and he has served to various whooping corporates like Hyundai, TVS, Mercedes-Benz, Volkswagen, Royal Enfield, HDFC Standard Life, Renault, Nissan, Maruti, Godrej, and many more. He firmly believes building the team with the right mindset helps the organization create the proper infrastructure, establish the right system, standardize the processes with their 100% focus on the set goals, and learn the art of saying no. A productivity mindset is when you utilize the available resources to achieve your focus goals, dreams by setting priorities and standardizing processes. Being a recommended LinkedIn profile in 2019, he has also trained a 5,400 plus professionals from India, US, London and Australia to improve their LinkedIn productivity, plus through his signature program ECG on LinkedIn. An author of the books called At the Crossroads of Life and The Key. And yes, उनकी books आपको stall number B7 में भी available होगी after the session. May I now invite none other than Mr. Sagar Amlani on stage. The set is all yours. I request our Executive Director, Dr. Nidhi Shangvi, to welcome him with a token of love. The stage is all yours, Sagar. Thank you very much. BNI, how is the Josh? Of course, after Dr. Pawan, we know commitment, consistency, hard work is all required. Morning में हमने सुन लिया photography content कितना जरूरी है. Now let's understand, हमें छूने कौन वाला है? पवन जी ने बताया, right? कोई कब छू जाएगा पता नहीं चलेगा. Let's welcome LinkedIn to chart our business, touch our lives, and change the way we work in this digital language, digital world, or digital era, the way you want to put it. So welcome to the LinkedIn Masterclass. Give a round of applause to yourself that you are learning the digital age, the digital business. Thank you very much. Congratulations. Why LinkedIn? Why should one invest time on LinkedIn? Why should one spend energy on learning LinkedIn? Why should you actually do business on LinkedIn when you have everything? You have the customer which is there with you, you have your business, you have your products. What will LinkedIn give you extra? Let's learn. It enhances your professional reputation. It helps you to establish thought leadership. It acts as an enabler to gain customer insights. Do we pay lakhs of rupees to get customer insights, to get what customer wants,
market surveys, and we get papers, we get documents. Do you pay for the customer insights? Do you do market research? Yes, we pay lakhs. LinkedIn gives it for free. And last but not the least, the most important, it will help you in generating leads by creating awareness. It will not generate leads like Facebook or Insta where you click and sell. It will create awareness for your business and help you generate lead. So how many of you here think that at least one of these is what you need for your business, or all four? All four तो दोनों हाथ उठा दो, अगर एक ही है तो एक ही हाथ उठा दो. Right? All four we need, right? We need all four for our business to thrive. But before that, why should you listen to me? What did LinkedIn give me? I'll take a minute and tell you the power of LinkedIn. It started with a very, very simple thing called LinkedIn Local. Now, LinkedIn Local started somewhere in Australia. It started spreading all the way across to the continents. I was a licensee to bring it to Hyderabad. But what happened in there? So, जैसे BNI में we do networking, we do 30 seconds, we do speed networking, we do one-to-one calling, we do referencing. All that was a part of LinkedIn Local Hyderabad as well. We started bringing online profiles offline. जो online में महाशय दिखते थे, and they were talkers, speakers, we used to bring them offline. Doing what? Connecting virtual world to the real world. Very soon, LinkedIn Local Hyderabad joined the wagon, Local Global, and today as we speak, there are 10 lakh members all across the world on LinkedIn Local as a community. No fees paid, direct connection, direct business, and you don't have to be specialized in something, but still be a community. Isn't that amazing to have? What next? 2019, I was awarded the commended profile, which means out of 700 million profiles, 100 are selected. Out of 100, I ranked 84. What more? It invited me to become a professional speaker. Like Pawanji said, there are people who do public speaking, there are people who do paid speaking. Paid speaking is all professional speakers. So it invited me to be the board member of Professional Speakers Association of India. What else? My business, which is into building productive mindsets. I work with businesses to build strategy and help them to improve effectiveness. You can't have only output and no quality conscious, but you need to have efficiency multiplied by effectiveness. And that company was born due to LinkedIn Live series and only because of LinkedIn. What more? My journey started from slums of Mumbai. Yes, I am a Mumbaikar myself, born and brought up in Mumbai, in slums where my mother used to cook with an umbrella in her hand just to ensure कि ऊपर से जो maggots गिरते हों बारिश के सीजन में वो खाने में ना आए. My father used to lay bricks inside the house and we used to walk making fun of it only because the feet should not get in water. Because every monsoon we were blessed to have fountains from the floor और 3 inch पानी भर जाता था. And that is exactly what I have described in my book, that from that to becoming a bartender, becoming a litter picker, becoming a cigarette butt picker. But not leaving my grit and perseverance, I went to London, self-funded, did my masters, and today I can proudly say not one, but I've done 3 masters, one from Middlesex University, one from University of Glasgow, and one from IIM Kozhikode. And that all came through LinkedIn, but the perseverance came through my parents. Like we all know, there's a source of power. So that was a source of power. The book was endorsed by Marshall Goldsmith. Now Marshall Goldsmith is #1's executive coach. Getting his endorsement was a dream for me. He's just authored, edited, contributed in 40 books. And being one of them was
was a privilege and an honor. The second book that I authored is The Key, A to Z of Productivity. And again, that book is available for all of you to share. And that is where I said that. So LinkedIn connected me also to Atulji, Gauravji, and I'm standing in front of you. So thank you very much for that. And LinkedIn has changed my life. And I'm sure in this masterclass by 7 p.m. it will change your life, your business, and your approach. So are you ready? Great. So my CV is very simple. You know it all. Chawl to Villa is my CV. That's my description. That's how I present my life to you. Let's go back to LinkedIn now. So LinkedIn, as on today, as we speak, has got 800 million active users, which means you have a smartphone in your pocket, you have 800 million active customers. Are you willing to tap them? Are you willing to encash on them? Are you willing to leverage that? If your answer is yes, LinkedIn is the space for you. हम सबको पता है सोशल मीडिया कहां से शुरू हुआ था, राइट? अतुल जी सुबह मुझे बता रहे थे. It started with Orkut, went on to Facebook, went on to Twitter, Instagram. You know what is selling today? LinkedIn. This era is LinkedIn, and next 10 years it's going to be LinkedIn, because LinkedIn is a place for B2B, LinkedIn is a place for B2C, and LinkedIn is also a place for C2C. So if you are in any business right now, LinkedIn is the place for you. Let's understand the analytics done by the marketeers. When I say these analytics, these are done by the top marketeers. What do they say? That B2B content, the most used platform is LinkedIn. How many of you invest your time watching reels on Facebook or Insta? How many of you have seen reels on LinkedIn? Reels hote hain LinkedIn mein? There is no reels. They are all motivational videos. They are all business, and वहाँ पे only money talks. पवन जी ने बताया था, सुबह जीतू जी ने बताया था ना, सिंधी का हाथ ऐसे कब होता है? When he is dead. LinkedIn is always like this: money, 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 nothing else. Right? So LinkedIn is all about networking, money, business, connection, and the content is various forms of content, be it posters, be it images, be it video, or be it any kind of content, but it sells on LinkedIn. How does LinkedIn work? What is the marketing strategy? Most of us know that yes, LinkedIn works. Most of us know LinkedIn is the place to go. Most of us understand that yes, LinkedIn is required. But there is a simple funda. The funda is, starts with your profile. Connect using your profile. Nurture by your content, by the IP, by the content that you do. And once you have nurtured them, bring them to conversion. So it's a very, very simple 3-stage process. Connect, educate, convert. Most of the time, what we do is, we connect and we sell. We connect and we offer. What happens? The customer says, thank you, I don't need it. Why? You've not understood what the customer wants. So doing paid ads, doing marketing on LinkedIn is a big failure if you're not understanding. Connect, educate, convert. Right? Because most of the time when I finish sessions, people say, let's start doing LinkedIn ads. There is nothing to educate. You just want to connect and convert. Nahi hota hai. You will fail drastically. How many of you have experienced LinkedIn ads? Have you spent money on LinkedIn ads? You have done? कुछ मिला है? कुछ भी नहीं ना? मैं सच बोल रहा हूँ. Right? Validation हो गया. Because don't believe on what I say. Believe on what you see.
believe on what you want, believe on what you have in your pocket, in your mobile phone. Right? Once you validate that, give me a call and thank you. I want everyone to stop whatever they are thinking for this few seconds and just understand what I'm going to say. Your LinkedIn profile is a digital representation of your professional reputation. Can you all repeat with me once, please? Your LinkedIn profile is your digital representation of your professional reputation. Now, whenever we are doing business, how important is our reputation? Number one, top priority, right? We all say first impression is the last impression. First impression to acha hona hi chahiye. We should make a good impression on the customer. Is your LinkedIn profile doing the same? Is your LinkedIn profile communicating what your customer wants or what you want to sell? Remember, selling is solving. Selling is not about pitching. Selling is not about marketing. Selling is about solving. Now, what does a world-class LinkedIn profile as a basic structure would have? Number one, a minimum of 10,000 organic connections. I'm not talking about random connections. I'm talking about 10,000 organic connections. Reason why this 10,000 number comes up is because of the algorithm and how it reacts to your content. Second point, a minimum score of SSI to be 70%. If you're below 70%, with all due respect, you're not visible on LinkedIn. We will check what your SSI is, but remember, if your SSI is below 70%, you're not visible on LinkedIn. You need to have minimum of 20 recommendations, 10 skills, the top 10 skills that you have, that your profile should have, that your business showcases. And last but not the least, और इसके लिए मैं खाली एक example कहूँगा. All of you have a smartphone right now. I have not paid a rupee to a SEO. Let's try something. Just type Sagar space Amlani. What do you see? What is the first link that you see? Can someone tell me? Just type on Google Sagar space Amlani. LinkedIn, right? I have not paid a single penny to SEO, but still my LinkedIn profile will come on top. That is the power of LinkedIn. You all can leverage that. It's not me only. You all can leverage that power by using the right URL, right keywords, and putting the right SEO in your LinkedIn profile. We will learn shortly. Call to action. अब मेरे प्रोफाइल पे कोई आ तो गया. How do I educate? And how do I convert? That is the importance of call to action. We always need to have a call to action. Need not be a sales pitch. Need not be a sales email. It could be a question. Let's say if somebody is in wealth management, just ask a question. Are you managing your wealth or enjoying your wealth? Ask me. No, no. I have a friend who is into facility management, which is like housekeeping. Now, I've been a litter picker, bartender, waiter, so I understand and I connected with him because जब 10 रुपया 20 रुपया टिप मिलती थी ना, I used to go and buy a chocolate for me, and that was my motivation to go again the next day and do the same job. Right? We find motivation outside. I used to find motivation in that 5-star. So that person who is into facility management, he said, what do I do? Should I put pest control? Should I put cleaning? Should I put this? I said, no. Create an SEO by saying, I create an environment for your organization to improve their productivity by 14%. To know more, ask me how. Interesting, isn't it? Now 14% productivity मैंने नहीं बताया, Forbes ने बताया that अगर अच्छी housekeeping होती है तो 14% productivity automatic improve होती है. The customer started getting 7 calls in a day to his LinkedIn
do you do to improve productivity? Can we have a meeting with you? And all he used to do is go and meet the HR, share the products, share the housekeeping options, share the service, and started getting contract. None other than Pulin Shop, our Mumbai. So it's a live example and it's absolutely working. So call to action and SEO, very important. Is there someone who would like to share their headline and for me to roast it right now? If you're okay, I take one volunteer. You can come up here and we'll do that masterclass for you, for everyone else to enjoy. You want to come up, sir? Please. वाईफाई नहीं आ रहा है तो आपका हेडलाइन तो आपको पता होगा. Tell me. So my headline says that I am a digital marketing coach and consultant with 8 years of experience, consulted 100 plus brands and given training to 800 plus participants, and I am having a global MBA from IIT Ghaziabad and Liverpool Journal. With all due respect, can I do some fun? That's all why I I'm would here say for is, that. so what? So what? Yes. You're a digital marketing consultant. So what? You've done IIM from? IIT Ghaziabad and Liverpool Journal University. So what? So ask me how. That's what I will take it. Exactly. So the Call to point action. is not ask me how, but when you say digital marketing, thank you, sir. Thank you for the sporting energy. But a digital marketing consultant, if you go and search on LinkedIn, you will have 10 lakh people plus on digital marketing, because LinkedIn, in COVID, everyone became a digital marketing consultant. 2 साल में everybody is a digital marketing consultant, email marketing consultant, digital marketing company, content writers, content copywriters, everyone. So the differentiator for you, sir, would be how do you add value to your customer? What is that differentiator that you bring as a digital marketer in customer's company? The best headline would be, I changed how the way people look at your business. Welcome, I'm a digital marketer. Brilliant, right? A small change, but that will change the way people think about you. So let's move on to analytics and understanding how people can use this. So this analytics right now, if you've brought your laptop, you can actually open your LinkedIn profile and go into the Me icon, click on View Profile, and you will be able to see the statistics. I'll repeat it again. Open your LinkedIn profile, go into the Me icon on the right hand side top. I breathe LinkedIn, so I know where exactly what buttons are. So right hand side top, click on the Me icon, you will see View Profile. Click on View Profile. In that, scroll down, you will see your analytics dashboard. When you come to this analytics dashboard, click on the search preferences and you will be surprised to know what keywords are assigned to your profile. If you are a consultant, there would never be a keyword as consultant, because आपने keyword use नहीं किया होगा profile में. Can anyone share what is their search preferences? Do we have internet? Yes, sir. What is your keyword? You can say, I can repeat it to you. Brand consultant. What do you do? Okay, so you're into advertising and branding and it's showing you as a brand consultant. What else? Human resource. Advertising and branding, and keyword is human resource. Executive director. Salesperson. Right? What are we seeing? We are seeing wrong use of a keyword. Now, where do you use this keyword? You use this keyword in your headline, in your about summary, in your experience, in your education, in your justification of recommendation, and you will see the difference. This is something which I had on my LinkedIn for 1st January to 13th January when I was launching my book E to Z of Productivity. I was publishing every day. I had 10 lakh views. It's great, right? But what do you do with that? My posts have 81,000 views, 20,000 views, 10,000 comments. What do I do with that? And that is where connect, educate, and convert.
So what do? As soon as I see these comments, I will write them a message inbox. Hi, thank you for engaging on my content. It was really nice for you to share that comment. I've seen your profile and I'm interested to know more about you. Can we connect on Zoom? What I did, I boosted the ego of the person and I got him connected with me on a Zoom call. What happens next? I will build trust, I will educate, and I'll shake hand and say, thank you, let's do business together. And that is the key. Connect, convert, educate. So anything that you see on statistics on LinkedIn, if you're just increasing your dopamine like Insta, Twitter, Facebook, yes, I've got so many likes, yes, so many views, you're using it wrong. Check your statistics, pick up the comments, engage with the client, take it to the next step, take it to the logical end. Kabhi kabhi ye bhi hoga that the conversion will not happen. That's okay. You will at least have a friend. You will at least have a like-minded person. You will at least have a business associate who might refer you somewhere else. Right? BNI में हम सबसे मिलते हैं. Not everybody is a client. But referral works. This is 800 million active users का BNI. Now, let's play a short game of where we are on our LinkedIn productivity. Now, when I talk about productivity, I told you, right, efficiency and effectiveness. So, LinkedIn पे भी मैंने 2x2 matrix बना दिया because KPMG, PNG, Ernst & Young, and we all corporate people, we love 2x2 matrix. Now, I learned this when I was working as a vice president in a public limited organization and serving Mercedes-Benz, Hyundai, Royal Enfield, Renault, Nissan. I learned 2x2 matrix always works. So corporate chhod diya, but DNA is still there. So what is this 2x2 matrix for? 1 means striking gold, complete profile, inbound leads, and business from LinkedIn only. Like me, I don't go out to pitch anywhere. My laptop, my home, and my room, I'm sorted. My business is done. So that is striking gold. I left a job of a vice president getting 7-figure salary, and it only took me 6 months to get the same from LinkedIn. Let's clap it for yourself because by 7 p.m. you will understand how to get it for yourself. Thank you very much. You can get it too. So number 2 is slow burnout. Profile bana diya. Activity chalu kar di. But no content, no engagement. I'm there on LinkedIn, sir. I have a profile. Brilliant, good, but burnout is slow. The third one is fast burnout. मेरा सेशन खत्म होने के बाद बैनर लगा दिया, फोटो लगा दिया, हेडलाइन लगा दिया, next 10 days back to back content कर दिया, and then calls me on LinkedIn and says, Sagar, you told me if I do this it will work, but it's still not working. I don't want to do anything. That's fast burnout. Everything fast, instant coffee, instant gratification, instant leads, not possible. The fourth one is lost opportunity. Or I have a profile, but I don't know what content to post. I have no idea how to connect my business there. So I have one person who sells chocolates. Now he's like, sir, मैं तो चॉकलेट का धंधा करता हूँ, फेसबुक से हो जाता है, मिल जाता है. I said, great. हाँ सर वो तो चाहिए, but I don't know how. I said, fair enough. Create 100 boxes as if you've got the order. Let's work law of attraction. Create 100 boxes, create a video that I'm going to give this in Diwali to my clients as a corporate gift. What are you giving to your clients? It took him 3 months before Diwali to do that, but today it's been 6 years. He does not have a stall, he does not have an office. He's working from home and doing corporate business from home. He stopped all his rented office. He stopped all the things that he has done. And there are many such cases. If you want to really find out, there is a lady called Chinal Tank from Mumbai. She's minting money on LinkedIn, doing chocolate business, but
consistent effort of 1 year. But today, if you call her and give her an order of 400 boxes, she'll say, yes, I'll do, but I don't have time. If you give her 1200 boxes, she might do it for you. So that's how busy she is. She is having an authority to select the customer. How important and how fun it would be अगर आप चूज कर सको कि आपको किसके साथ काम करना है, मजा आएगा. Yes, freedom, right? There are so many customers who would be nagging, but we can't tell them no. Income आनी चाहिए. But LinkedIn gives you that authority, gives you that freedom. It is not your ego or arrogance, but I'm saying it will give you a choice of who should be your customer rather than running behind every single customer who comes in your shop. So let's play the game. You can join using this barcode, or you can go to slido.com and use this number, and let's understand from this audience, where are you? 1, 2, 3, 4. Let's see who wins the game. You can either use the barcode or go to slido.com and just enter this number, and let's play a small game. And if internet doesn't work, we will take it offline. Wow, we have one vote, 67% lost opportunities, fast burnout, 33%. Wow. 10, 11 people are already online, 13. That's brilliant. Burnout is the winner in the room, is it? We have 21 votes. Striking gold, someone is at striking gold, congratulations. I'm very happy for you, thank you. But आज ये रूम के बाहर कोई भी नहीं जाएगा जो स्ट्राइक गोल्ड नहीं करता होगा, वो मेरी गारंटी है. So wherever you are, don't worry. By the end of the session, we will all strike gold. Brilliant. 36 votes. Let the votes keep coming, and let's understand what do we need to strike gold. How are we going to strike gold? So let's talk about ECG. What is ECG? ECG is very, very important, because ECG is something that makes you feel that you're alive and kicking. But there is also ECG of LinkedIn. That stands for engagement, consistency, and groups. We have all heard about consistency from Dr. Pawan. I don't need to iterate more. But there is something which is a little different in consistency when it comes to LinkedIn. We will catch that. So if you are excited to know what is your ECG, all you have to do is go on to SSI space LinkedIn. I'll repeat. On Google, just type SSI space LinkedIn. The first link that you see will be an ad. Don't click on it. Go on to the second link which Google will give you. That will be your social selling index. So यहाँ पे we will have a game, and can I have 3 volunteers? Please, ma'am. Please, please. So the game here is, इन तीनों को अपना SSI बताना है, and whoever is the lowest, because as a LinkedIn coach, I should help someone who has got the low score and not the high one, right? So whoever has got the lowest wins 30 minutes with me, exclusive. Right? Let's play a game. So sir, आपका स्कोर क्या है? इंटरनेट नहीं चल रहा. जिसका स्कोर आ गया वो आ जाओ. Sorry. No, you don't. Yeah, you have to sign in on LinkedIn, of course. So anybody who's got a score, 3 people. 20. No, you have to. No, it's 40. So you are at 40. Okay, anybody below 40?
42, you are out. Sorry, ma'am. Anybody below 40 gets 30 minutes exclusive with me. That's your chance. If you're not on active on laptop and LinkedIn and mobile, do it right now. 40, you stand at 40. But below 70, you are non-visible, so that's why I'll help you. Anybody else below 40? 1. Boli lag rahi hai, boss? Number 2. Password lost opportunities. And number 3, 40. 30 minutes, we will talk together. Done. See, password नहीं था, lost opportunities, live example, अब भी बताया मैंने. Sir, password जल्दी retrieve कर लो. Okay, so I'm sure we've been sitting for a long time. Let's play some activity and be ready. 19, but अभी उनको मैंने दे दिया countdown 1, 2, 3 कर दिया, but I'll give you 15 minutes, don't worry. Congrats. Okay, so can you all take out your mobile phone? Brilliant. Can you log into your LinkedIn app? Mobile पे ज़्यादा better रहेगा. So once you are on your mobile app, just open this LinkedIn app. Go on to this screen. Are you seeing the 4 dots? Yes. Are you able to see the 4 dots on your LinkedIn app? Yes. Click on the 4 dots. And that is your digital card in your pocket. Sorry, ma'am. Okay, so you have your digital card right now. What's the game? Here, right now. I'll give you 1 minute. The person... Anybody more than 12? Brilliant. Let's have dinner together. So, this QR code can replace your digital card. This QR code can be the new communication QR code in your gallery. Even if there is no network, you can still share your QR code. Right? So, your QR code, your business is in your pocket. Now, what does it require to have a complete LinkedIn profile? There are 5 main elements. 1 is a banner. How many of you spend lakhs of rupees to get banners across the city? Have you done anything like that? At 5 lakh. LinkedIn banner is free of cost. LinkedIn gives you a banner to advertise completely free of cost. और इसको बनाने के लिए भी you don't need anybody who has got a, experience or anything. A very simple tool. Just go on finding the differentiator. What is the differentiator for the community to connect with you? And then you can also have you. How many of you would connect to number 4? No one. How many of you would connect to number 2 and 3? Shayad. But how many of you who has already got everything right on his LinkedIn where I can say tick, 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 tick. Sir, a banner which speaks either you innovate or you invest in innovation because he's an investor. Second, he talks about a professional photograph and he's also a speaker, so he's put that on the banner. And at the end, he's put his headline, which is not only talking about his titles, but what he's delivering to the society. So a very, very easy, simple example, a person with you, around you, always has an example of a good LinkedIn profile. So अगर आपको किसी को ढूंढना है कि कैसा प्रोफाइल बनाना है, you know you have to go and connect to Mr. Gaurav and see his profile और copy paste कर लो तो भी चलेगा. Okay, so now let me give you a secret connection tip when you really want to connect to the HR managers, admins, CXOs and CEOs of a company. Most of the time when I go in sessions, people tell me, I tried sending invitation, but abhi tak accept hi nahi hua. It's a very, very simple thing that you're missing. What did I tell you, remember? Connect, educate, convert. The secret tip is that जिसके साथ connection करना है ना, take a step, open their profile, check what they have done,
go to Google, do a little research about them, and then ego massage. Sir, I saw your profile. I saw the recent article that you posted. Brilliant. I just love the way you expressed your thoughts. I'm so impressed. Can I connect with you and know more about your thought leadership? Immediately वो बंदा क्या बोलेगा? Yes, yes, let's talk, and you get connected. But then is where you can actually build the trust, convert, educate him about your business, and convert into a client. But always remember, people on LinkedIn will respect you if you respect them. People on LinkedIn will connect with you if you take time to understand them. Because everyone is a professional there. They are there as managers with maybe hundreds and thousands of teams. You are a business owner. You think that you are an MD. You are a CEO of your company. But in corporates, they have their own team. They have their own things. So we have to approach in a more polite, more humble, but more of a strategic way. All you can do is go to their profile, do some research, and then write an inbox. 99.9%, I'm not giving 100% guarantee, but 99.9% it works. Why I said not 100%? Because sometimes big CEOs, big HR people already have completed their 30,000 connections. So for that, what do? We spend money on LinkedIn Premium. अरे LinkedIn Premium में in-mail messages free है. Use this secret tip. You will get it for free by using personalized invite. Now what happens if they don't connect with you? They will at least revert to you that I'm out of connections and hence I'm not able to connect with you, but this is my email address or this is my phone number. You can always give me a call. अपना तो काम बन गया ना, connection चाहिए था. अब LinkedIn पे हो या phone number से हो, doesn't matter, right? Do you agree? Absolutely. This is going to save you 6,000 rupees every month. This secret tip is going to save you 6,000 rupees every month. You don't need to pay LinkedIn Premium. I hope it's not going to LinkedIn. Okay. So then talk about engagement, the ECG. First comes engagement. So what is the most important thing about engagement? We discussed it all. Your profile. Sometimes the personalities are confidential. They will have their photograph confidential, headline confidential, working at confidential. And I'm not joking. Seriously, certain profiles which don't put anything and they say working at confidential, 7 years of experience. Why? Confidentially raho na, it's okay. Why are you on LinkedIn? Why are you doing that favor? Don't be on LinkedIn. Reduce. Then is a salesman. The minute you connect, no, you get a message. Sir, our company is manufacturing ERP systems, the best systems that you can hire, and it will resolve all your problems, all your sales pitch, all your HR. We have HRMS module. Boss, I'm a single man working in a company. I don't have any HR. I don't have any team. पहले मुझे समझ तो ले, मुझे रेनबो होते हैं ना, हर इवेंट में पहुंच जाते हैं, हर नेटवर्किंग इवेंट में पहुंच जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. आउटपुट अगर पूछोगे तो BNI से धंधा नहीं आता, मजा नहीं आता BNI में. BNI पैसा खराब हो गया यार, बट फिर भी BNI में है. क्यों? पार्टी करनी है, नेटवर्किंग करना है, टाइम पास करना है. एंड दैट इज ऑल्सो ऑन LinkedIn. रेनबो पर्सनालिटीज, दे विल बी एवरीवेयर. रेनबो, मुझे सब करना है, धंधा छोड़ के सब कुछ. Then comes professional. All of you sitting here in this room are professionals. But किसी का बैनर कंप्लीट नहीं होता है, किसी का अबाउट समरी कंप्लीट नहीं होता है, एंड किसी का पासवर्ड भूल जाता है. So what we need is the stars, and that's exactly where I come in help. I help you to build your profile the way you want, how you want, and what is important for you. Now you will tell me, what is the rocket science in building a profile? It's simple English. Absolutely. So what do you consult in? Branding. What do you consult? Dietetics. So now both of you are consulting on two different things. If you tweak your headline, if you tweak your banner with food, with pictures, and with a fat lady, arrow, 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 a thin, beautiful, cute looking lady, job done. And बीच में खाली लिख दो, ask me how. Sorted? Or check this or put a QR code of your YouTube video. Sorted. Be creative.
Every profile needs to be creative because there are so many consultants in this room. There are millions in LinkedIn, and every second person is a coach. Huh? How many coaches in this room? Life coach, business coach, strategy coach? Not one? Great, competition nahi hai. But in LinkedIn, when you put coaching, 34 lakh life coaches, 62 lakh business coaches. What is your differentiator? The headline, the banner. So now, let's take the next step. If you want, you can write these notes. If you want, you can check your about summary on the laptop that you've got. If you want, you can change it while I speak. That's absolutely fine. This would be a first session where a speaker is saying, mobile phone भी निकालो और laptop भी निकालो because मुझे confidence है, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ. So you can take out and write these points down. The about summary is very, very important. Why? Most of the time, when we have networking session, how do we introduce ourselves? Hi, my name is Sagar Amlani. I'm a productivity explorer. I'm the author of. But on LinkedIn, most of the times people make this mistake and they say, hi, Sagar Amlani is a productivity explorer. Sagar Amlani is the author. Why are you writing in third person? It's your profile. आप मेरे घर में आ रहे हो तो मैं welcome करूँगा या बोलूँगा? No. So write it in first person. There are certain CEOs जिनका profile देख के आप बोलोगे सागर उन्होंने third person में लिखा है. It's because they've reached that level. Executive assistant is taking care of their profile. It's okay for them to write in third person. But if you really are there on LinkedIn to connect, convert and educate, write it in first person. It's more healthy. And you can add a twist. So earlier I used to say, I'm a father of two. So what? Everybody is there. A loving husband. Of course, everybody is there. So then what's the differentiator? Who is always at home? Immediately people say, ये बंदा है क्या? मतलब क्या कर क्या रहा है? And then they say see more and they pull it down. Recently what I did, I played with that and I said, I help you to improve your LinkedIn productivity. और उसके बाद मैंने नीचे कुछ लिखा ही नहीं. चार, the ancestors. कौन थे हमारे ancestors? Monkey, right? What is the most important thing for a monkey? He is curious. आप ऐसे करके कुछ लगा दो ना, he will ensure that he will come and check what it is. Till that time, he will never leave you, right? Are we all the same still? Curiosity. If I tell everyone ना कि by the end of last slide, you will all be millionaires, ये hall खाली नहीं रहेगा. People will call their friends and call everyone and say, आ जाओ, because it's curiosity. If I have a box here and I say at the end of the session I'm going to open this, people will wait for curiosity. The same curiosity, create in your about something. Be creative, be a little different. Don't be standard that I'm a MD of so company, I'm a founder of so and so company, I do this. No, it's okay. Be different. Be a different thing. How you can do that? 5 pointers. Who you are. What you do. Why do you do what you do? Talks about your passion. And then comes the differentiator. How are you different? And then last but not the least, remember, conversion will only happen when you have call to action. Agar call to action nahi hai, even if you have the best about summary, lost opportunities. Why? The person can only read and say, wow, where do I connect? I don't know. So call to action is very, very important. You wanted to take a picture? You can. Okay, so moving on, I've said productivity not less than 17 times. I don't know if you noted it or not. Now, if I talk about productivity and if I don't make your life more easy, that's going to be an unfair thing, right? So let me give you a hack. You can operate your LinkedIn and Twitter at the same time, one click of a button. All you have to do is go into settings, account preferences, partners, click on Twitter, connect, password yaad rehna chahiye. Connect, and then you forget the password. Every single thing that you post on LinkedIn will be posted on Twitter, which means LinkedIn will take care of your Twitter account. And why is that?
Any idea? Why is that? Microsoft, both the product or both the platforms are operated by Microsoft. And that's where you have the leverage to take advantage. But there is a catch. Who is a smart person who tells me what is the catch between LinkedIn and Twitter? Sir, आपको पता है. आप Okay, anybody? Yes, tell me, sir. Brilliant. LinkedIn has 3,000 characters. Twitter, 220 only. So what do you do? Or what is the hack? Very simple. First 220 words, create a hook, because that will go on Twitter. Post an image, and नीचे लिखा आएगा, to view more, click here, and that will take them to your LinkedIn profile. So even if you're using LinkedIn and posting it on Twitter, the traffic from Twitter can be diverted to your LinkedIn. Again, a LinkedIn पे. Once you come on LinkedIn, connect, convert, educate, right? Done. My job is done. Thank you. Connect, educate, convert. Never ever forget that. Okay. There are certain profiles who would put anything on the banner after listening to the session. Please don't do that mistake. Think about it. Think what you want to put on the banner. Think what you want to offer. Just by putting random pictures, it doesn't work. This is anyways a hypothetical profile. It's not a profile that is available on LinkedIn. So don't worry. Now comes your address. Your address on LinkedIn is nothing but your URL. And URL is a random number provided by LinkedIn to all of us. But you can and you should customize it. Why? Because there's a story. While I was building my brand, what if I keep telling you every time I am a productivity explorer, I am a productivity explorer? चौथे बार में क्या बोलोगे? It's okay, yaar, he repeats it every time. There's a twist. I created my URL as www.linkedin.com/theproductivityexplorer. So if anyone asks me, are you on LinkedIn? Yeah. Search me as the Productivity Explorer. अपने आप branding हो गया. Yeah, sure, I'm on LinkedIn. Change the way you look at yourself. मतलब, change the way you look at yourself. Slide, any idea, any comment? Engagement. Like. Oh, I saw your post, I liked it. How many of us do that? Scroll like. Yes? But जब हम post डालते हैं, what do we need? We need people to comment on our post. Hey, you did not comment on my post. How is that? Kal comment kar. When it comes to us, like, support, celebrate, and that's the key. LinkedIn और BNI का motto एक ही है. What is the motto of BNI? Givers gain. Start commenting on other people's profile and people will start commenting on your profile. Now comments में भी जब मैं बोलता हूं ना, immediately after the session they will go home and start commenting. But you know what? Congrats. Thank you. Awesome. Does it really make difference? Absolutely no. What we need to do is go into that process, go into the post, read what they have written, add your thought leadership. You are a CEO of a company. Khali congratulations mat karo. Tell them you have done this thing as a wonderful leader. There are so many types of leadership. There are so many different types of branding. Ma'am, if you see any post about food on your competitor's post, go ahead. Amazing post, my dear sir. But you know what? There's also this thing that can be added in your list. What happens? उनके पोस्ट में जितने लोगों ने कमेंट किया है ना, लाइक किया है ना, they will all start reading your content. Smart, isn't it? That's exactly what you should do. Comment, engage, bring them to educate, convert. Simple. Everything, remember, 1, 2, 3. So let's move on for the content.
When I asked a survey to more than 500 people on LinkedIn, the poll said that 93% of the marketeers landed on a new customer due to video. How many of you agree videos are the best selling thing? We all agree, right? Videos are the next big thing. Facebook Reels, Insta Reels. We're missing on LinkedIn. Why? Because normally when we go on LinkedIn, we see amazing videos created with captions and everything. Can I tell you a very simple hack? Instagram Reels सब बनाते हो, उस पे captions आते हैं, subtitles automatic आ जाते हैं. Yes? वही वीडियो उठा के LinkedIn पे डाल दो, that's absolutely fine. Just repurpose the content. On Insta, you might talk about fun, time pass, energy, excitement. Just convert the words and make it more about business, professionalism, leadership. I'm not saying don't use Instagram. Use it. It's a nice platform. It gives you automation. It gives you ability to create videos. It gives you ability to create subtitles. तरीका बदल दो, जगह बदल दो, and business will be yours. What are the different types of content that you can add on LinkedIn? Photograph, image, post, long post, short post, videos. What more? How many of you have a people of more than 10? A team of 10? Right? How do you appreciate them? Face to face, or maybe giving them a little increment, or maybe giving them a little award. You know the best way to compliment them is just go on LinkedIn, write a kudos for them, and post it on LinkedIn and tag that person. That person will be emotionally connected to you and the company for life. Why? Because what you have done, you have given them social recognition. अभी हमने सुना ना, recognition is very important. Give them social recognition. That Kumar, you have been a team player. Kudos on LinkedIn. Automatic kudos देता है LinkedIn. And tag that employee. All you did was 2 minutes of your time, but you got 2 years of commitment from that employee. उनके 2 दिन they will be enjoying till the time they get likes, comments, congratulations, everything, and he will have a very, very high dopamine for the next 2-3 days when he comes to the office. A very, very simple but very effective way. Whenever you are recruiting new people, we welcome them, we give them gifts, or we give them a welcome kit. Why not welcome them on LinkedIn? Call the MD of the company, or if you are the MD, stand with them, take a picture, show best of luck, और ऊपर लिख दो our new marketing manager, our new brand analyst, our new HR, or a new receptionist, and tag them on LinkedIn. For you, it's a very, very small thing, but for the employee, he will remember you for the whole life. Again, coming to the content, coming to the ideas. As I told you, 81,000 views. What next? 41 reshares. What does it mean? It means 41 people reshared my content on their post. Most of the time what we do, we say, wow, mera content 41 times reshare hua. I go on that 41 shares, go into their profile, connect with them, tell them thank you, like on their post, and congratulate them, and write few things there. What happens? Unka sara connection comes to my profile. Connect, educate, convert. Very simple funda. Everything that you do on LinkedIn, everything that you have on LinkedIn, the focus is 3 points. Connect, educate, convert. So anything that you do will never ever go waste if you have this simple formula. Coming to the last point, which is groups. We have a limit of 30,000 connections. After that, LinkedIn does not allow you to connect. उसके लिए भी hack है. Groups allow you to have 4 lakhs, 5 lakhs, 30 lakhs, as much as you want. So what do? So if you are an investor, if you are a digital marketer, if you are a growth hacker, if you are a consultant, go and join the group where there are 100 other consultants. Why?
peer-to-peer networking. What happens? There might be a consultant sitting in Australia, New Zealand, America, using certain strategies which he is posting about. Pick and convert and offer it to your customers here in India. How does one know? No brainer. All you have to do is there is a wheel already invented. Pick it and do it. Now that I learned in IIT Mumbai when I did my program for TRIZ. By the way, I am ISO 9001, PDA 6.1, 6.2, 6.3, 5S, Kaizen, Six Sigma, certified trainer. So I'm using all this in LinkedIn. So that's where I come to the point called Pareto analysis. We all know Pareto. If you don't know, I'll explain you what Pareto is. Pareto says 80% of your problems can be solved by 20% of solutions. Or 80% of the wealth lies with only 20% people in the world. Anything that you can relate to. The same way, in groups, 80-20 principle is very important. 80% of the times, have a discussion, have a conversation, engage. 20% of the time, post your content. Because if you keep posting your content every day, people will start unfollowing you. So 80% of the times, दूसरों के कंटेंट पे कमेंट कर लो और उनका नेटवर्क अपने पास ले लो. 20% of the time, post your content. So now I've reduced your stress of creating content. There is a guy called Rajan Bansal. You can search him on LinkedIn. For 1 year, the gentleman did not post even one post. Any idea what was his followers count? Any random guesses? 29,900. What he was doing, every day he used to go comment on 10 different posts, but when he commented he used to write 4 or 5 good points. People started connecting with him. Not even one post for 1 year. So when he came to me as my client and I was like, sir, अब मैं आपको क्या बताऊं, आपने सारे एल्गोरिदम तोड़ दिए. So be creative. Algorithm is one way, but you can all be creative. Creativity is not stopped by anyone. Be creative in how you approach. Be creative in your comments. Be creative in how you engage and have discussion with people. Last but not the least is recommendation. How many times you have shown to your clients testimonials? Sir, these are the recommendations that I've got for my business, for my diets, for my people that have taken services from me. Are you having the same recommendations on LinkedIn? How many of you would have 10 and more? Brilliant. Anyone more? Anybody 10 and more? Yes. Start adding recommendations to your profile. Very simple way to do it is start giving 5 recommendations every day to someone who has served you. Give us gain. Recommend 5 people every day who have connected with you or served you, or whose services that you have taken. I'm sure you would have 5 people that you can genuinely recommend for next 1 month. How do you use them? This is how I use. Now this is Gautam, one of my friend, one of my client, and now someone who represents me as a speaker. I use his recommendation. Second is a HR manager from a company. Third, he talks about my coaching skills, my optimization skills. Then I have Kunal, who is again an entrepreneur like you, a small-time MSME, SME entrepreneur, who was just having a furniture business. So earlier, he used to have a furniture business. I changed it to transforming workplace solution. I did not change anything. I just said, let's do that. And then I changed the keywords. Currently, he's thriving only on LinkedIn, nothing else. Now, how many of you would strike gold? Knowing everything that I've told you, how many of you would strike gold? Are you confident enough to strike gold? Yes, no. या तो सबके लिए समारा टी मंगाओ. Right? So, last activity that we will do is, because we will not have a mic for everyone to speak one aha moment, I have to take this with me to have a good sleep.
So your gratitude for me would be presented here. Just give me one aha moment by going onto the same Slido, one word that you can type that I can take it with me in my heart today before we end the session. It's the same number, 940252. Someone has helped you with the number in the center, 940252. One takeaway, one aha moment that you are going to take and make your business digitally live on LinkedIn. One takeaway that you have taken from this session. Connect, educate, convert. Absolutely. Be creative. Consistency is the key. Yes. Brilliant. Thank you very much. And these are certain recommendations that people would have given me. You can check them on LinkedIn. But this is how you should use your recommendation. People have even gone ahead and called me Dr. LinkedIn. What happens because of that? When they do search or the search appearances, I also come as Dr. LinkedIn. Now that is something which is very different and gets me maximum views. And it's past president of ICF, Coaching Federation, Chief Financial Officers, Retail Sales Manager, Program Manager, CEOs, Executives, Director of Operations. Everyone is connected. So if you really want to have a discovery call, you can actually connect with me on LinkedIn, or you can take this QR code and connect with me for a discovery call. What is the cost? It's completely free. Connect, educate, बाद में conversion करेंगे. So thank you very much, and I hope you are ready to strike gold on LinkedIn with connect, convert, and educate. No? Connect. Can I hear it loudly? Connect. 3 cheers for you. Thank you very much. Thank you, Dr. LinkedIn. As you rightfully said, it was a very insightful session indeed. 3 words glued to our mind after this session is connect, educate, and convert. And I'm sure after this, there are going to be many more connections and conversions on LinkedIn. Thank you very much. Thank you very much, and it was a pleasure to be here. Gauravji, Atulji, BNI Surat. I am humbled and honored. Thank you very much. I would now like to invite on stage our event co-chairman, Ms. Dhara Shah, to come and felicitate all our barter partners. I would request everyone to please be seated. It is the last item on the day, so I would request हमारे barter partners ने ये event की success में हमें बहुत help की है. I would humbly request everyone to please be seated for the coming 10 minutes. So friends, आप ये जो जानदार शानदार event देख रहे हो, the multiple speakers are coming on the stage, the lights, the music, the creatives जिसको देख के आप यहाँ पे आए हैं, this is all because of our barter partners. So I would now like to invite our event chairman, Mr. Atul Gupta, to please felicitate, along with CA Gaurav V. Singhvi, our executive director, to please come on the stage to felicitate our barter partners. So friends, let's begin this journey. जो different आपने creatives देखे हैं in the WhatsApp group, on the Facebook, Instagram. Let's give us cheers to Mr. Sheval Rathod from Drona chapter, company Aura Design as a graphic partner. तालियां रुकनी नहीं चाहिए because इनकी मेहनत ही हमें काम लिए. If he is not available, I would request someone from Drona chapter to please be there. Yes.
We could see the event live and on various platforms. Let's give thank you to Mr. Anuj Toshniwal from 4 Pillar Media Agency, BNI Elite. Our social media partner, Mr. Anuj Toshniwal. तो हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बारडोली और नवसारी में भी बनी रहे. For that, let's congratulate Mr. Ravi Saparia from BNI Tata for digital promotion. Can we have Mr. Ravi Saparia? आपको कंटिन्यूसली एसएमएस से रिमाइंडर देते हुए मिस्टर वत्सल शाह और एसएमएस पार्टनर. So along with SMS, we had constant reminders on the WhatsApp as well. So let me invite Mr. Avinash Saulani from JMD Infotech, our WhatsApp partner. To create a wonderful website, to create a new presence for Surat Biz Fest, let me invite Mr. Amar Panchal from Technotech India, BNI Elite. Mr. Amar Panchal. Friends, तो BNI की wonderful branding आप देख रहे throughout the entire hall. Let me invite Mr. Mitesh Mehta from Mediologic BNI Alchemist. ये wonderful speakers को जो हमारे different cities से travel कर रहे हैं. Our travel partner, Mr. Hiral Cholera from BNI Icon. So the chairman and the co-chairman, the wonderful blazers what we are wearing, let me invite our fashion partner, Mr. Kunal Dalal from BNI Hallmark. The continuous animation which you see on the screen of different barter partners or different associate partners of different sponsors, let me invite Mr. Abhi Jariwala as our animation partner from BNI Hallmark. Event की जान को शान को शानदार बनाने के लिए our event partner Mr. Ravi Reddy from Tamzam, BNI Champions. हमारी इवेंट हर एक न्यूज में छाई रहे. फॉर दैट वी हैव मिस्टर नितेश देसाई एज पीआर पार्टनर. सुरक्षित रहे. So for that we have our security partner Mr. Manish Pandey from BNI Karma. चाय कॉफी से हमारे दिन ताज़ी रहे. We have Mr. Chintan Shah from BNI Elite as beverage partner. Along with that, Mr. Mithun Machi from BNI Ashoka also as the beverage partner. हमारे कार्स और भी स्मार्ट बने. फॉर दैट द स्मार्ट कार्ड पार्टनर मिस्टर ऋषभ जैन फ्रॉम BNI Icon. The beautiful lanyards which we are wearing on the neck, we have our lanyard partner Mr. Ravindra Tyagi from BNI Elite. Our fire and safety partner Mr. Chinmay Desai from Northern Star Engineering. इवेंट के पहले हमारे वंडरफुल वीडियोस को कैप्चर करने वाले मिस्टर पार्थ खत्री फ्रॉम BNI सरदार. हमारी फोटोग्राफ्स हमेशा स्माइलिंग रहे. वी हैव अवर फोटोग्राफ पार्टनर मिस्टर नयन चौकसी फ्रॉम मैक्स मीडिया.
I would request someone from the, yes. And Nayan ji जब आ रहा है मैं तब बता दूं, so friends, we have the scan code available. उस ऐप को डाउनलोड करके आप स्कैन करोगे तो आपके वंडरफुल फोटोज आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन में मिल जाएंगे. That is the wonderful technology Nayan bhai is providing us. We have Mr. Ganesh Patil with us as facility management partner from Aryan Facility. Mr. Rutvik Desai from BNI Elite, company name Healthy Wealthy, as a gift partner. Along with that, we have Mr. Maulik Agarwal from the HAMP chapter as a gift partner. Mr. Vishal Sheth from Proven Insurance as the insurance partner. Dr. Sonia Chandani as health partner from BNI Alchemist. Mr. Pratik Gariwala from EcoShield Paste Solutions from BNI Champions as the pest control partner. So, thank you everyone for being there. Thank you all the barter partners for making our event successful. Yeah, so we have Mr. Parth Khatri, our videography partner. Mr. Netik Shah as a ticketing partner from the company The Deal Box. There's no stopping us. Thank you everyone for being part of this journey. Let's catch up tomorrow morning for the day 2 and make it more amazing. Thank you everyone. We have Mr. Rachit Khator from SIECC Company as our data management partner. We congratulate and wish them